True. And I'm very scared here for Scars because you look now at Lotus, they haven't really played that map much this year. Yeah, I have to agree. Like, even though I predicted Scars, it just looks to be going the other way. The longer the series goes, they have to absolutely, essentially take map number 1 to even have a chance, I think, of taking the series. Look, you say that, but I'm just going to wait. I'm going to sit back. आज नहीं बोलना कि हम late आए हैं. We are on time. Because, look, I want to believe that Bleed are still the favorites here, but Scars have convinced me that they may just be the best team in this group, and we're looking at the picks coming through. Bleed looks like they've got a slight change up with that Brim coming in, but I think it's the first time they have played here, yeah? At least in Ascension. They played in Orangutan, if I remember correctly. Yeah. Yes, and they did run that Brimstone there alongside the Breach as well. It's just here for Bleed Esports. They haven't had a consistent lineup Carry so my far king. in actually playing Fraction. Carry They tried playing kill. things alongside the Omen. They played something like the Viper. And they just have a lot of variety, but you still can rely on Juicy to get the job done in the front line. On the other hand, those Scars tried and tested, and we've seen how both Bonkers on Orangutan fell to the flurry of Scars in this map. Yeah, it's been a very interesting decision. You know, Scars, I feel like Gem King, when you look at him, he feels so good with the Blade Storm. He feels so good when he pulls out that jet. But then when he moves to Raze, he still has some tricks up his sleeve. And again, Bleed, that's right, we saw them pull that Sova out the other day and thought, what the hell is going on here? But his shock dart usage was just so powerful. It was crazy how much value he was getting out of the shockies every single round. It's EGS, yes, but Crazy Guy has been known to be a Sova for so very long on a map like this. It's just something that he is very comfortable in playing no matter what map, no matter what situation. And I think that's really where we see Bleed Esports try to innovate from this point on. I mean, that's a big thing, right? If you talk about him just briefly now, you got the best player from Vietnam, arguably one of the best from Thailand, coming on this roster. And how do the different ideas on both sides, and by the way, this is probably the only matchup where we have both teams speaking English as comms. How does that come into play in this case? I think Bleed, they certainly have a leg up in this series. I really want to see, you know, a little bit of fun, a little bit of action. But on paper, I still enjoy Scar's composition that bit more. So I'm pretty happy with my prediction. I'm not going to lie. You guys, you haven't sold me. I've wanted you to sell me on it. I wanted you to rizz me up on Bleed, but you haven't really sold me. He's been fighting me the whole time. He's on Scars too. I like disagreeing with you. I'm like the half cell. How do I do it on my own? No, you got to do it on your own. You got to do it for me. You've got time. All right, Dax, I'm going to give you a moment in a second before we jump into the pistol. You can rizz me up. You can rizz everyone up at home. Sell us on the Bleed story. You got to do it here. You got to do it now. Who's going to come out on top? Well, let's find out. Let's find out, boys. I think. Well, we're getting into it. Bleed Esports versus Scars. The story so far. Macwell, you've been wonderful on the hosting side. You've been wonderful here on the desk. But even though Scars has had the record here, has had that consistency alongside everyone else here in Pacific Ascension, Bleed is truly Scars what SCA is all about. That mixed roster, those communications, courtesy of Crazy Guy, all of those styles coming together as one. And of course, a legendary coach in 𝘼𝘽𝑒𝑎 as well. What else does Bleed need to do? They just need to prove it versus Scars. There are no expectations higher of a team than there is for Bleed in this tournament. They are a super team to the highest caliber. Everything going their way is what people expect. So a deviation from that can certainly be seen as a fault. It is win, championship, or bust for this squad. Absolutely. They have spent so much resources all this time just to get this squad going. That loss in LCQ last year, that was the heartbreaker, and they reformed as an SCA super squad. But Scars, on the other hand, the expectations, they've been met, they've been broken, and now they're looking to be dominant. We start, though, on the drop position for Crystal and Jankin. We've seen this from Scars. They like to get a good position to begin their assault. We've seen super teams from Singapore come on out and Bleed, trying to be one of those as well. Shock darts out here, perfect timing from Crazy Guy, one of the best from Vietnam. Any angle, as a Sova would say, and he's brought this Sova out just for Ascension Pacific itself. Crystal don't catch him without in response. The smokes are there too for Scars to try and cover that cross. Juicy though wants to bring the fight towards Scars. The aftershock already used up here by Yoshi. Just fending off Bleed
from an audio cue. आज आलस नहीं किया। मैं इसलिए बोल रहा था ना भाविन भाई कि डिसाइडर में स्टारजी नहीं blown up by Juicy. हाँ. It's Scars trying to go for the timing. वो Crystal Lotus gets है, one Lotus short, नहीं but जीत Bleed सकती। Esports, they do have the numbers. तो A swing from 2-0 Yoshi. ही It's been जीतना होगा found. अगर उनको Alan all जीतना है। alone now. हाँ. Isolates Darion. And मेरे को भी वही 1v1 लगता है। immediately. We expected this game to be close. It will go down to Oh, the bye, It will go down to bye. Neff getting that takedown. Bleed will take pistol. The death from Neff. And silence in उल्टा आई here, थिंक केज Scars. खराब था नहीं On the तो opening केज pistol खराब था, round, हाँ. Bleed, what a उसको retake. डायरेक्ट उल्टा दिखता Starting it off डिफ्यूज करते हुए with Crazy Guy here. Shock Dart connecting any angle, as you said. In the retake from Bleed, overrunning the A main site. I think they so. We are realized looking at a that coming potential through Sands, grand through the final door, here. would have been too difficult. हाँ, Due me to too. that crossfire that they held here coming from Scars. जर्शिया And so they न्यूयॉर्क take में it उतना नहीं from मजा the आया front जितना door. And it's a स्टार्स को taste here, देखने में आ courtesy रहा of था Bleed. Now that you have the Sova, Zertia there's now a bit ऐसा more था कि utility कौन where you कम can mistake कर actually रहा है, get मतलब some हाँ. good damage or even a frag by just staying away. We've seen from Scars Yeah. that they like to go for the overrun. दोनों Find that teams contact बहुत nerves as soon में as बह रही possible. थी, If मेरे को they ऐसा can लग get रहा the था। advantage early on, then it's perfect for them. Not just that, but on the attacking side later on, maybe those shock darts can पर be what मोजर they ने बहुत utilize अच्छा खेला to पहला kind मैच। of burn some of the हाँ, Cypher मोजर अच्छा utility खेला। away. They can get rid मैं of थोड़ा those थोड़ा ही tricky देखा फर्स्ट tripwires, गेम right? पर And अच्छा get खेला that dealt मैं with पहला मैच ही before they ज़्यादा actually देखा, उसके commit to बाद and मैं सो गया। execute. So attacking side the favorite here in Fracture, of course. We all Beta. know it's up to Scars to start to convert. Yeah, and this rope position for Bleed Esports, it's always watching for Oh, drop. They line up for bye. a single burst, and two are down. Crystal and Jemkin. The Imports promotion not gonna be allowed to play this time around. ये होता है ना 3v5. सारे बुलेट कनेक्ट हो गए Scars राइट have to क्लिक back के away immediately. हाँ Yeah, it's 2 for 1, a क्लिप फोड़ single दिए लोगों click. के There, double hit. Scars on the rotation right now. He's trying to ट्विच प्लीज find what ओ they हाँ can, ट्विच but पे इसके Bleed ये राउंड के बाद जाता हूँ more than a अगर step ऐड ahead. आएगा ना They ट्विच पे anticipate तो this B-side hit. Yeah, Juicy's just waiting here right now towards Jenny. The fault line into play. मैं सोचा था स्कार्स from का Neff, मैच though. नेक्स्ट वाला जापानीज A कॉस्ट्यूम big पहन के addition देखेंगे along the years here of Bleed, along between the splits. And as of right now, Bleed is just keeping Yeah, Scars but at bay. We've seen Japanese Scars change the casting pace when sunta. they need to. But in a situation like this, Bleed is just being so responsible with their angles. Yeah, Bleed right now have कौन सा every एक मैच था advantage जिसका in वॉर्ड this game. मैं अपनी टीम Certainly को the दिखा रहा था favorites to बहुत come पहले out perfectly. शायद रेकनिंग को दिखा रहा But था in this execute, I 2000 don't वो 22 have SCS much नहीं hope था for उस समय Scars. हाँ There you उसमें go. जापानीज कास्टिंग He's दिखाया ready, जानबूझ and के the थोड़ा मूव लाइट executioner. करने के लिए A उनका triple for अच्छा him. And Bleed बाप रे come बाप, out with क्या a flawless. casting You था। are sentenced to go into a third round down by 2. Bleed Esports. They were just so prepared for the whole round. The Add beginning नहीं with the दे सकता, guys. Bulldog Add जाने has दो। that range. लगातार Funnel in Scars into a kill box courtesy of Darion. And you know already, they're looking proud of their plans. And how much has Darion improved throughout this Matured. game? Matured is the most important thing. Many doubts cast upon this. The frontline raids. Jemkin though leads the charge, and this is where Scars is strong. Straight for 3. The Oh, man. crazy guy again. The timing is perfect, and just the way that he's able to open that doorway from afar throws a big wrench in the plans of Scars. He's got like 3 arrows to throw just to open it. He can even use the out drone if he gets the timing on it too, just off of the dart. So lots of ways to manipulate the fight here based off of his Sova pick to gain prevalence too. The flank here is what Bleed are putting attention towards, and Scary off the double peek, they get the kill. Yeah, and they can pick up a rifle now. Give it to Darion especially. But he's a crazy guy yet again. All alone now, still trying to hold from Sands. Reinforcements though arriving here. Scars trying at least to cut those sight lines, and No timing way. from Crazy Guy even better. Toraneko was waiting for भाई it. प्लांट Crazy अंदर का Guy भाई किधर answers जा back रहे हो even एलन भाई more Look at so. The shock dart even Crazy Guy! कौन He सा just गत्ता भाई measures कौन these सा गत्ता angles, measures these oppositions, and he finds any kind of opportunity to work with. Crazy guy, absolutely insane. Let's not forget, this is not the first time he's played internationally, Dax, in terms of playing on another team. We saw him on that former NGX roster, and the things he's been able to do on this Sova within 3 rounds, incredible so far. What did we just witness? That's going to the TikTok real quick, no? Yep. You just know now how to play Sova on Fracture 101. Bleed ये has sized 2-0 up the होगा? competition. And well, they have अगर the ये मैच right हार गए तो assessment so far 2-0 through their हाँ threat. ये मैच And हार they गए got that स्कार्स bonus. तो Yeah, Scars are इसके लिए जब आप outmatched, 2-0 honestly, स्कार्स this लेके आना नहीं ये मैप engagement स्कार्स right जीत now. सकता है I know पर I नेक्स्ट दो predicted मैप Scars, but I love rooting for the मुश्किल लग underdog, रहा and I है want to see what मतलब Scars स्टारजी do अगर here right जीतेगा तो now. 2-0 ही It जीतेगी is मतलब more of a lower economic state. लोटस नहीं Shock जीत darts सकती just स्टारजी वो तो peppering मैं them, not even getting into सब हम लोग कुछ some खेलते ही लगाने को नहीं है तैयार ना। हूँ Jemkin's already low HP. He's broken his armor basically, and the fault line gonna be there. और ब्लीड का Scars लोटस still बहुत kept at bay. सिंप्लीफाइड है Bleed
just winning अच्छा। out on the बहुत utility game simplified है, thanks to the मतलब कुछ positioning of complex है ही Crazy नहीं Guy. And you can see now, it's a उसमें। new way, the new तो way for Bleed Bleed का itself. Crazy Guy जो though 5 eventually players हैं overrun वो by the individually members इतने of capable है Scars. ना 4v4 उनको कुछ Scary complex की anticipating the जरूरत ही push नहीं है। from the hole itself, but Sands instead the call from Scars. Oh, भाई, Jemkin on the Jemkin high ground too, भाई। surprising Juicy. It's up to Scary now to try and hold them off. The Nightfall's there, the Prowler gets a spot. Scary though gets one at the very least. 3v2, Scars making a path towards that side. Nef though, aftershock now to stop the plants. It's still Bleed. एक ही जन का खौफ है वो है जेमकिन भाई 2v3 here, retake for Bleed, but Scars have every advantage. They know where he is, and Crystal इस map में looking ये भी अच्छा absolutely खेलता है, clear. Crystal There he अच्छा on खेलता है। 1v2, but the flank here, हाँ, perfect Crystal अच्छा position खेला था for last। Allen to capitalize. And Flank Scars कर getting करके their मारे जा रहा first था वो हाँ। चलो तो thrifty kind of here. I mean, they still stuck around to Yeah. where they wanted to go. And because of the numbers that Bleed didn't expect coming their way, they were checking out places like halls. They were checking out if they can actually get the off ये angle मेरे को लगता है वो towards बॉक्स Sands वाला itself. पोजीशन खराब है First, they आफ्टर just know how to they pile have up sand together, now। and players like हाँ। Allen, उतर players जाना like चाहिए। Crystal, you can rely on them if they're feeling pretty hot. फाइनली 3-1 स्टार्स को scoreline समझ though, में आया looking कि at Scars वो and लोग their utility so far. साइंस Yoshi, कंट्रोल he's लेके only खेल got a रहे हैं single ब्लीड blow, वाले but he has the rolling हमको thunder, साइंस and से that's what घुसना ही Scars have been पड़ेगा मैं doing. वही सोचा ये Getting लोग a bit of पहले that राउंड board से क्यों नहीं control कर to रहे Look at Darion here with an operator. Let's see how they're able to नहीं utilize फर्स्ट that बाय राउंड तो as the डबल anchor. एमेन खेले ना Maybe उधर find ट्रेड हो an गया early पर pick डोर से if क्रेजी गाय ने उड़ा ever दिया they crawl हाँ up पर towards मैं बोल रहा हूँ Arcade's एमेन stand, वाले को because he's लेके gonna फिर have to get साइंस that shot. कंट्रोल लेना He चाहिए doesn't इनको have the पहले disengage tool that maybe someone else like बस Juicy मेरे might हिसाब से possess. फ्रैक्चर And में Scars, ये look at साइड इज how ऑल they अबाउट set up साइंस on कंट्रोल Fracture. They जिसके पास have साइंस this, कंट्रोल है I'd उसके say, पास favoritism एडवांटेज है towards unless you playing have drop like as much as ults possible. हाँ They unless love मतलब using वो that हाँ as an area of सिचुएशनल engagement, हाँ especially हाँ early हाँ on into the game here versus नहीं Bleed. पोस्ट प्लान में अल्ट से या This डबल time, जैसे फ्लैंक वैंक they है तो have ठीक this है पर regroup हाँ नहीं towards तो the यू north नीड side. Yet चांस again, you need a full sans stack control looking to come towards that A site. Well, you can see there the tripwire keeping them at bay towards A main. They destroy it. हमारी आइडियोलॉजी बहुत वैसी है इस मामले में मेरी और उनकी बहुत मैच करती थी फ्रैक्चर कैसे खेला जाना चाहिए तभी देखिए सेकंड राउंड में कॉन्ग सिर्फ मतलब क्रेजी कैसे अकेला पकड़ के रखा था सैंड और बाकी चार वो भी खेले थे और हम ये बिलीव करते हैं कि सैंड नेफ पागल हो गया है भाई Yet again, just knowing exactly where to position. Darian's up, gets the damage done. Juicy is there to finish the job off. A quick retake from Bleed. Wow, from long range as क्रेजी well. का and एक Neff को और स्कैरी को more- अच्छा है looking more सामने like वाले Neff का Curry किल जो अल्ट तोड़ना नहीं है तो कभी भी अपने अल्ट्स यूज करो hitting at that हाँ range, and no problem at all. Bleed off the retake, and you can see because they were able to bypass that rolling thunder from connecting, it just gave Bleed here the proper position to really stop that push from coming. When you are going for a Do you think drop Neff push as out a like pick that, is one of better the than most important, powerful positions Redlatch? is that sands and अच्छा, road Redla. control, because that's what the cutoff is मतलब- for the execute on the A site. कैसे बताऊं मैं Golden रेटला State. They're in इज a Golden मोर State ऑफ right योर now. You नॉर्मल know, प्ले मतलब There you go. Redla Happy is now. your Bleed Esports hit still and miss looking वाला player. very prepared अच्छा, for okay. Scars and their executes. This is the slowest we've actually और seen I would Scars say play Neff is the compared to combination their of, other matchup versus Redla Orangutan and versus Gage. Bonkers. Momentum Gage though is के in जो favor of support Bleed. skills Can हैं, Scars answer हाँ। back? वो है Neff के पास, First, he पर gets Jemkin Redla का already. जो fire Scary power goes है, down. वो That's भी a है big pick उसके here पास। for Scars. Yeah, अच्छा, huge मेरे को pick. जेज He did अच्छा that, लगता especially था with the lesser जेज weapons बहुत here. अच्छा player Jemkin है can give his rifle to somebody else and play off of his showstopper, but they do have the rolling thunder. and जेज Bleed का to बस यही counteract था that. कि Back वो on site, and here we इंडिविजुअली have कीप Scars अप now नहीं कर पा रहा crawling था closer and कुछ closer. टाइम Pick up a bit अच्छा। more firepower. Scars want to fight back तो with the man अब advantage. वही बात है अब But that's what all they want is चार make that noise, go जन back to ऐसे B main, रहें and और then पांचवा regroup ऐसा with रहे Allen. तो If I'm Jenkin right उनको now, नहीं I'd be हजम giving होता that ना Vandal on over. Not that I don't trust him, but just हाँ statistically, पर प्लेयर्स it को is नहीं better हजम to have होता the होगा low शायद rate पर आई player थिंक come on in, maybe कोई showstopper, प्रॉब्लम नहीं something था like that. बिकॉज़ ही वाज डूइंग हिज Nice रोल वाइज theft बहुत अच्छा खेलता था confirmed हाँ रोल वाइज presence here पर actually वही है ना pretty इसीलिए spread दे throughout डिड for नॉट Bleed. गो Yeah, फॉर and those एनीवन two दे वेंट pings, फॉर thus एन far, use it मतलब to double समवन back. हु No, इज they're committing here an for obvious that A upgrade, side. मतलब Showstopper now नहीं can तो be नहीं called. change किया उन्होंने। Jemkin wants to clear stands as soon as possible. ये चीज Others ब्लीड के right बारे में बहुत also अच्छी है from Scars. लाइक They're दे not डोंट getting चेंज प्लेयर्स anything from his unless and ultimates. until Bleed playing they have game an of keep obvious away upgrade. instead. And here मतलब comes Juicy एकदम yet again. obvious है कि Two ये down upgrade है। immediately. Scars is 19 hurting के लिए here. ओ And भाई Juicy looking oh so stellar indeed. आप Bleed is back स्विच पे देख रहे हो क्या onto हाँ। those powerful positions, and Allen cannot fight back versus Bleed whatsoever. 4 for Juicy and force the lead now. कैन It's a ओजी juicy क्वालीफाई world here right now. मतलब बहुत परम्यूटेशन Bleed. आरसीबी फैंस
fans समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूँ मैं. As I said, you have to give that rifle to somebody else because the job here
for Jemkin is to buy them space, not buy them a kill. And that he can't confirm a kill there because he's just too low HP to actually win the fight. And you can feel the optimism right now from Bleed. Every single thing they've planned, every kind of setup that they have here, it is You know, being sent working. T-Bone is From the invited crazy for guy Ascent Silva Thailand. to I the did not know. incredible positioning from the likes of उन Nev. लोग उधर से stream करने वाले Time क्या? out called. You have to believe by क्या बात Scars. है? There's no point of Bleed calling this देखो one. guys, So Scars कभी trying अपन भी to होंगे वहाँ. reassess, लंबा है रास्ता पर. just reconfigure their बहुत ज़्यादा headspace right लंबा now है for मेरे this लिए. game. They're a much more free-flowing मेरे team, लिए as we भी talked बहुत about, ज़्यादा. you know, as we brought up during the panel, after talking to him. And For while that show might match, be great अच्छा. for some of the other teams here, Bleed are one of those teams Yeah, where I you think have makes to be sense. They are two of the absolutely biggest structured to creators the in highest Valorant degree, in just to Pacific be able at to least. give them a game and take them down. Even all the prep work in the world might not make you even ready for Bleed Esports. And in this time Yeah, out, they deserve we're not it. seeing इसका तो honestly definitely. the scars that we Question ही नहीं. expected. We want to see the moments from Crystal. We want to see the moments from Jamkin. And we know that they can actually get in there and clear out those sites. But Bleed, they refuse to play that kind of game. Bleed को They देख के don't समझ want to be में आ रहा है swept away by कि the tide of scars. they're not आज- here to mess around. yeah, हाँ. yeah. Hard to आज be अलग not Bleed swept दिख away रही when है. it's a क्योंकि complete पहला जो tsunami, मैच हुआ right, था where ना, it's just I think they were very no way disappointed in to stop themselves. those waves They from should crashing. have been, Peaks and valleys, but considering with the all team peaks they right now have for made Bleed, at what point does and it the start to domination go they in a showed in downtrend? MYSG. I don't think it's any time too soon. They got the operator back on Dario. But on once in lockdown a for retake. ऐसा once Showstopper एक for दिन होता Juicy, है just Bleed का so भी much ऐसा going their way right off होता day है होता है. होता है Bleed is in वो a जैसे होता उन है. लोग के सामने भी हुआ था ना Powerful position अपन so far. But then again, we've seen from scars. हाँ, जो ना, हारे वो थे तो- उन लोग एक It's सीरीज. Orangutan. हाँ. Sure, they can just go हाँ, for हारे. the rally All they and came then very start close to running losing their away first match with of the playoffs भी. scoreline. X10 के Stars, against 10-4 is से हार again रहे थे decider में. crawling around और फिर now, वहाँ से especially नेफ भाई moving ने into the tunnel. I do wonder if we're going to get more of a I think so two-pronged वहाँ से attack नेफ towards ने the B side this time क्या around. लगातार 6 राउंड Scars मल्टी right किल्स now. निकाले, ऐसा कुछ था. Certainly trying to cut the noise. बहुत ही क्लच खेला था Fade any उसने. information that could be gained by Bleed. Will they even expect this by Juicy? It's a great spot to maybe throw him off. Oh, and here he goes, Oh! Juicy! Just gets kneed there Juicy by की तबीयत खराब Jemkin. है. And eventually Scars go हाँ, for the क्या हो entry. गया Allen इसको? also on the पता board. नहीं, That's जब what वो Scars is walkout looking किया for. तभी An चेहरा advantage देख के now समझ to में आया push था मेरे को towards the Juicy side. का. Torneko with उसके the चेहरे पे plant. लिखा रहता है कि वो Gonna be ठीक है या going नहीं. out the smoke अच्छा. anyway. What a find here by Scars. चेहरे से What पता चल रहा था कि कुछ तो opportunities they've गड़बड़ been है able to उसका. make. Yeah, just कुछ तो surprising. गड़बड़ है They दया. thought they would get the catch. Surprise Scars, but they're the ones who seem perplexed at what just happened. Was Nef in X10? Yes, Nef was in For the X10. meantime, there should be a round going towards Scars, who retaliate with one of their own. Although Bleed, honestly, if they lose every round from now on, it's not going to be too bad. Bleed On वाले the player defensive एशिया side of पैसिफिक में Fracture हाईएस्ट especially, अर्निंग भी है ना you know, ऑन पेपर. Obviously नहीं. want something else coming into it. नहीं नहीं, is over. Damwon Maybe लोग they ज्यादा can find कमाते an हैं. exit, but क्या बोल Scars रहे aren't हो? given Damwon that. वाले, The Japan operator वाले भी save ज्यादा is कमाते हैं. all they can really consolidate. Yeah, मैं that's सुना fine here, at स्केरी least को उन for लोग Bleed. हाफ अ मिल Catch देते it up and go for the Half next a round mil? with it. It just goes to show dollars? those Scars, they can be very impactful, and I love the adjustment coming out साल of the का. time out. They don't actually need to group up each other. They just want to मतलब make sure इसके लिए that स्केरी ने फ्रैंचाइज they ऑफर do have डिक्लाइन Bleed की है. Esports मतलब checking out some more $40,000 spoilers, per but they're month. not as prepared हाँ. as they would like. आपको and भरोसा हो रहा है feel ये the सुन के? impact. नहीं हो रहा Courtesy था Allen पर is actually at the that very is end, including signing allows bonus, Scars to buyout, just navigate terms and quickly towards conditions the सब site. कुछ Yeah, मिला it's के back for कॉन्ट्रैक्ट Josie वैल्यू too, बोल रहा हूँ मैं, connecting, नॉट जस्ट finding the सैलरी. kill there. अच्छा. हाँ Is this a counter timeout by Maybe. Bleed immediately? पर Could क्योंकि be. उनके पास उतना पैसा think है it भी is, देने so. के लिए. Bleed, after losing a single round, just call the timeout and want to stop the bleeding. देखो सीरियस बोल रहा है. 2 bleed players are top 5 I earning in give you the APAC. pass the first time. बाकी Come नहीं. on. I know you were ready for bleed puns today. सिर्फ दो I ही know players. that there's हाँ gonna be वही तो मैं so बोल रहा हूँ. much- एक तो उसमें से स्कैरी है, so many things hemorrhaging दूसरा from I'm that, assuming basically. रहेगा But क्रेजी गाय. as of right now, with this kind of Can timeout, be Darion as I guess well. this is where you get the veteran prowess of someone like Legia in the first place. Next तो He नया has है, been such उसको a उतना नहीं long-time coach. देंगे. I know you know नहीं. a lot more about his career than I do. But then again, it's just how Bleed wants to keep up their position of power. Now they're going to be talking Why about China where they got have to 3 slots readjust, for how they're going to champions. reposition Riot का accordingly game now that उनकी perhaps मर्जी. the utility मैं क्या setups करूँ? aren't going to work as much as they want to. Yeah, what will change here, right? What the adjustment is towards a potential kind of surprise execute पोपा like जी that आपका with भी what इनकम Scars रिवील pulled कर out. लो. Do they go on $500,000 further मैंने back पूरे towards the करियर CT में नहीं spawner, कमाया. towards the defender side spawner? Do they try and do something else where they push forward to be aware of what's to come? We see a lot of times defenses $500,000 opt to इंडिया के go सारे on प्लेयर्स the ने more मिला के active, करियर में नहीं aggressive कमाएंगे side शायद. here on a map like Fracture.
But is that the right call against a team like Scars? सारे I'm player नहीं watching चलो for Bleed and what they're also going to use for 100,000 their मतलब ultimates later कितना on. हो They गया still have the 70 लाख lockdown. They still have the showstopper and the 80 orbital लाख strike. So many ways actually to 4 करोड़ prevent 4-5 Scars करोड़ from having इंडिया an कोई भी easy प्लेयर time ने to make their way 4-5 towards करोड़ the site. तो And even as PC they're गेमिंग putting में down नहीं that कमाएगा spike, it मोबाइल might get गेमिंग even में हाँ tougher. कमाएगा Now, I think मोबाइल I think गेमिंग it's में तो probably the सैलरी test right here. We're just waiting for everyone to get on ready. Still though, Bleed Esports Bleed commanding वालों lead so जीतनी है far, and I think this is where we go back to our panel discussions, right? This is the ज़्यादा form that we expect from Bleed. This is the किसी किसी की reason ज़्यादा why they haven't lost an official matchup ever since February. Yeah, I think we also kind of भाई टेक्निकल टाइम recognize the fact that their first game that did have a shaky map was more of just that first game jitters. To be fair, it's been true for almost Watchparty की every सैलरी team. कितनी है Maybe not almost, but a lot of the teams that we saw come up here. भाई फिलहाल तो B+ 0 चल रही first है day jitters. See other teams as well. 0 show multiplied the by same 12 कर लो symptoms. But we're back into the game उतनी here है मेरी right annual now. salary We फिलहाल talked तो about those ultimates a while ago. They still hold on to him. So Bleed, if they're given an opportunity to utilize that, then I figure they could win this next round. And we changed their positions. You got Crazy Guy now moving towards B. चलो एक फन फैक्ट बताऊं जितनी आप गॉड्स लेन में कमा रहे थे उतनी मैंने अपने पूरे करियर में नहीं कमाई है कभी It's just dangerous as the Killjoy doing so. हाँ Arion, हाँ does he disappoint? Not gonna happen. He's not gonna get that shot, but at least gets away from the Prowler. समझ में भी आता है क्योंकि आपने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंडिया में किया है ना भवन भाई आपकी वैल्यू बाहर ज्यादा होती बहुत But now that they know the op is there, वो तो जैसे ही मतलब हुआ तब मालूम पड़ गई कि बाहर से ज्यादा पैसे मिलेंगे पर लिए नहीं मैंने हाँ नहीं मतलब मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं मतलब जब अभी रिटायरमेंट करने का बात है तब का बात कर रहा हूँ यार ओह मैं पहले का बात कर रहा हूँ कि एज अ पहले हाँ कि आपका जो स्किल सेट है ना उसकी वैल्यू बाहर बहुत ज्यादा है वो जाने तो क्या ही aggressing in any shape and form. So more of a passive defense here from Bleed. They're looking for prime position instead. And Juicy now, let's rip the showstopper. Jemkin will get the takedown. मेरे को लगा Juicy को दिखा या आवाज आ रही है मेरे को भी लगा उसको दिखा वो जिस तरीके से देख रहा था उधर. But it's Neff right there to get that kill. CT looking strong here for Bleed. Yoshi with the answer back 3v3 for now. Neff still throwing out that aftershock. The smoke dissipates and it's scary. Who will he be found instead? 2v2 now. Neff and Darion trying to find the angle. Rifle picked up here by Darion. The lockdown is there too. But look at Scars and their position. They're playing on stands instead, trying to get the catch going. Darion moving on to the site as well. Yoshi's here towards Holloway especially. And with the fault line play, the stall potential can be real here for Scars. Darion will just defuse. Can Neff protect him? Darion falls, and it's Yoshi now, and Alan getting the job done. Scars will at least fight back to go for another round. ये लोग मुंह पे खेल रहे हैं खेलना चालू कर दिए हैं हाँ सैंड पे भी आगे इधर भी आगे नहीं दे रहे अच्छा है वो यही करना चाहिए था इनको पहले से हाँ पर ठीक है अडेप्टेशन पीरियड शायद उनको लगा रहेगा क्योंकि देखो पिस्टल तो हार गए पिस्टल के बाद सेकंड गया फ्री में फर्स्ट बाय राउंड हारे उसके बाद से उन्होंने चालू कर दिया हाँ फर्स्ट बाय राउंड ही मेरे को पसंद नहीं है पिस्टल तो ठीक है मतलब 50-50 रहता है फर्स्ट बाय राउंड मेरे को लगता है एक्चुअली क्रिस्टल के से हारे जब उसको दिख गया पीछे से लोग आ रहे हैं he should not have taken that fight. He could have played for time. Yeah, info utility भी था उसके पास. They're going for those small micro peaks with a bit of that intel as well. And from that point on, पूरा overall positioning ही खराब था. To go for more and more nice play यार. These rounds. Nice Nefto fights play. back. Crystal actually caught out immediately. And without their shot caller, it's going to be difficult here for Scars. The flash on in, but Bleed has already evacuated. Bleed trying to get out of the emergency area for the meantime. Scout once said he was earning 15 to 18 crores in a year when PUBG was there. मैं गलत गेम खेल रहा हूँ. Fight on contact. Bleed still stand tall. जो गेम खेल रहा हूँ उसके लिए गलत देश में पैदा हुआ. Yeah, Angels are there and Juicy pinned it off so far. That is now. Definitely the statement. Scars from getting the plant going. Yoshi wants to go for it. That faster and quicker contact here. He's just waiting for the smokes to dissipate. Plant those go down though. And here we go. Danger close, but Darion reacts even faster. Jemkin will fall, and the advantage here for Bleed. Juicy also finds the isolated duel, and this is what Bleed brings to the table. The firepower and the fight that they have. Isolated angles go Bleed's way. Yeah, Scars here, they were kind of pressured to उस time go पे Scout aggressive was a after fanatic. their own post plant instead of playing that post plant. So कोई लिख रहा है जब Shroud ने ये बोला था तब Scout fanatic के साथ था. I would wager too, Jemkin, if he had a Phantom over a Vandal, he would have won that fight. That's all I'm saying. Very DPS. Just to let through. But you can see here, sitting comfortably once more. Bleed, they could wait, they play better, they sit better with Steel Case, guys.
These chairs are comfortable. Dude, we were there for day number 1. Yep. We stayed the longest time on these seats, and now I'm still feeling cozy They anyway. honestly feel great for my back. Ah, true. I haven't actually seated on a chair like this in forever. It's always a gaming chair, but this is just incredible. Yeah, the ergonomic ones, lovely. Obviously, we got like a VCT embroidered onto it as well. But let's get back into the game. Orbital Strike available for Toroneko. Yeah, Toroneko. What can he do with that? That's the question. Scars now. Yet again, though, they have been playing it a lot more slowly this time around. They stall for a bit of time, find out the positions here of Bleed Esports. And really the struggle for Scars in terms of gathering that intel, they only have that fade for it. So Crystal, he'll clear out some of the closer angles. They have to use utility to go into the site, even if Bleed isn't there, just because of their initial assumptions. And there you go, on an empty site, the Nightfall's used. Yeah, because they're unaware there might just be an op, right? There might just be a trap setup. So it's good to be thorough. Better safe than sorry, of course. Slow is safe, and safe is steady. Steady is fast. And that's where they continue. The catch here, though, off the trap, off the flank. Yeah, Yoshi, he's in trouble, but the orbital strike from Toroneko will force a disengage. Flash comes on in, Bleed, though, still cannot cross. The fire's keeping them at bay. And I'm watching what Crazy Guy can do from that drop position. Still, the standoff towards holes. Yoshi has to disengage. Good find from Alan. Bleed now to the neural tap. This is intel here for Scars. They will know where Bleed is coming from. And look at Yoshi and Alan go. Trying to use that backline pressure. Juicy at least fights back. Even more so. Scary now pops up the doorway. And Scary at least keeping Bleed's so much time bought there by Scars. Yeah, you can see how they just wasted that time off the flank. The tripwire signaling that the flank push was coming. Fault line, aftershock, orbital strike, flashes, cages, everything they could throw to keep them at bay. And Scars, they benefit off of it. So they're starting to rally back here. And they're realizing that Bleed is avoiding that initial contact to begin with. They didn't use as much as utility as you'd expect for them in their usual clears. They still had a bunch of it in reserve, especially to watch out towards hulls. And this is where Scars looks really strong. They get those initial picks, and if they don't, they'll at least have something to keep you away from the site. Well, let's see here. But I feel Bleed will do better on attack. Attacking the site right now. Last time OG के सामने उतना अच्छा नहीं खेले थे अटैक. नहीं, Bleed का defense stronger है fracture में. The tower is what they're fighting for. Yeah, he's gonna blast back past this, and Darion, there's no escape. Yoshi though does get the kill himself. Scars now with the clear. हाँ कॉम देख के भी है पर at least they keep him alive here. Low oh भाई. The volley burns him down. Nice one. Scary denies the plant. The lineups have been incredible. Fracture में Bleed CS को खेलती है. Valorant नहीं खेलती. Scars now sputtering to try and at least get back towards the objective. Rolling Thunder though to be more proactive, but Crazy Guy and Scary, they hold down the line. 2v2 now. पर जो खुद defense पे structure make magic happen. It's all up to Toroneko. He's so low and null. He's dead to rights from the pain shells. Bleed is just coloring up the scoreline in their own shade. It's a back and forth though, Dax, in that round. I still love how Bleed are so composed to get those punishes right on time. And the utility here to deny intent is what's been working so good for Bleed on their defensive side. We saw a while ago early on the shock darts. Now this time around, the Molly to punish there and get the kill off of Jemkin, who was too low to even escape in that case. So Bleed, they take the advantageous half. And the communication too. Crazy Guy was the one who swung it. Basically told Juicy, love the pain shells. He's just dead, stuck there towards screens anyway. Smoke does come out though, and here comes Juicy, or rather Jemkin, to try and take that tower. Look at the buy. They have such a weak fire right now. It's a struggle here for Scars. They'll rely on the rifles of Jemkin and Allen to at least get the job done. Pop. Here we have it now. Showstopper from Juicy. He wants to come in from main. Spike is planted though. Lets it rip. And there's just no escape for Jemkin whatsoever. Rolling Thunder to the call. Bleed now. Looking to cascade on the opposition. Allen has a plan to try and go for his own kind of flag. Yoshi, he needs to buy time. Sprays it down. Neff inside the smoke still. But there it is on the defuse. Gets halfway already. Bleed wiping out the opposition. And what else can Toroneko do? Absolutely nothing. Bleed will end the half with a 4-round gap. Same half है जो OG को दिया था. And Bleed OG just को had 8-4 ही no दिया था problem at all ना. with OG retaining comeback the करके site. जीता था. Every नहीं bit हारा of था it ये they मैं needed, they had
थर्ड मैप था ना फ्रैक्चर हाँ थर्ड मैप था No way to stop it here, even with a 8-8 किया था शायद ओजी ने 8-4 से और वहां से हार गए थे Bleed Esports, they were prepared 13-11 हारे थे ना 13-10 of that first 8-8 half. नहीं 8-9 याद था Always about the tactics here from Bleed. Yes, they have the firepower. Yes, they have the strength in their players themselves. But the way that नहीं they're Bleed able OG to 10 पे play गया था ना out 10-8 up था जो फिर हम लोग बोल रहे थे this was a showcase for उल्टा Bleed jinx हो गया Esports on how to just play keep away from a very aggressive squad. And Scars, they had to will themselves to those kind of victories. They had to go for the fights in such inopportune moments. 10-8 था भी 13-10 हारे हाँ वही optimal here for sure, the way that Bleed have been playing these retaking rounds. And Aziz out-aim the other guys but still lose because of retarded strats. Knock it out of the plate. Sir देखो on purpose. स्ट्रैट्स का मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ पर अजीज से मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ एज ए प्लेयर कंपेयर टू व्हाट वो वीसीएल में खेल रहा था और उसका रीजन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ क्योंकि इसको यहाँ पे लोग सोलो फाइट नहीं देते तो उसके बाद लगाना पड़ता है ज्यादा दिमाग हाँ तो और टीम स्ट्रेटजी हमारे अगेंस्ट भी अजीज 0-10 था भविन भाई in a predicament like this at all. This Ascension उसको सोलो फाइट्स नहीं दो वो आगे मतलब मरता है वो डेस्परेट हो जाता है गाइस ये है ना मेंटल गेम है मैं एज एन आईजीएल इतने बार कर चुका हूँ सेम चीज इंडिया में काफी प्लेयर्स के अगेंस्ट जब हम वीएलटी में डेथ मेकर के सामने खेलते थे हम बोलते थे उसको फाइट ही ना दो सामान यूज करके मारो और हम मारते भी थे उसका स्ट्रेंथ है ना वो अगर तुम सामने वाले प्लेयर का स्ट्रेंथ ले लेते हो तो कैसे खेलते हैं वो देखना है Get ready for a ride. और प्लस वो एक कैटलिस्ट भी है वो बंदा अगर नहीं मारेगा तो पूरी टीम बैठ जाती है जैसे डेथ मेकर ऐसा ही है मतलब डेथ मेकर नहीं मारता था तो पूरी टीम बैठ जाती थी तो हमने तो भवन में क्या किया था मैंने तो इंस्ट्रक्शन दिया था डेथ मेकर के साथ फाइट पे फाइट लो मैं बोलता था फाइट ले रहे हो ना तो सब साथ में लो मतलब 2-3 लोग मुंह पे जाओ और नहीं ले रहे हो ना तो यूटिलिटी डाल के उसको इतना तंग कर लो कि वो खुद डेस्परेट होके पिक कर ले तो हमने क्या किया पहले 4-5 राउंड में उसको इतना पुश बैक करके मार दिया फिर वो पूरे मैप एकदम चुप ही था ऑलमोस्ट The plant will go down unhindered. Yeah, darts there. Speed, if you would have chosen Godel, you would have still stayed under the orb. But you chose other and LFT now. It's going to be difficult. The smoke's now dissipating. This can be a chance. ये आपको बोल रहा है कोई अगर आप गॉडल चूज करते तो अभी भी टीम होती है ऐसा Scary actually using the rope to reinforce towards Crazy Guy and the stall. देखो मेरे को पता है गॉडल क्या बना रही थी मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा बट गॉडल जो बना रही थी उसके टुकड़े कहीं और चले गए No one expected Scary to come out from that angle and it's 3v2 now. Bleed with advantage. Jemkin trying to make their way towards the spike and this is why he repositioned while Bleed will get the kills. There's even the volley to boot. No matter what, it's Bleed's round. Yeah, great post plant here coming from Bleed. आपको पता है भाई ये प्लांट finding 4 या 5 महीने से सीन करते हैं ये लोग get Bleed on वाले the spike trying to tap it. It connects right on देखा time. मैंने इनका ये प्लान And the amount of utility play here that Bleed love to exercise has been a problem for Scars. अभी चले जाओ कोई ना यार अगर वो बुलाएंगे तो मैं कुछ बात कर सकता हूँ मैं मैंने चला के भी उनको आई थिंक सो बोला था जब हमारी बात हुई थी बहुत पहले और मेरे को बोला गया था कि वो बात करेंगे and just allow Scary to be in the right place that he desperate wants हूँ मैं जानता हूँ to पर be in. इतना भी Scars नहीं now taking the fight towards Dish, but to no avail. They're on an eco and Juicy will be happy. आपको पता है भवन भाई कि मैं गॉडल क्यों ज्वाइन करना चाहता था मतलब गॉडल वाला ऑफर मेरे को अच्छा क्यों लग रहा था कि प्लेयर्स ठीक है हंग्री थे मतलब ज्यादा सुनते थे वो तो था ही बट मेरे मम्मी पापा को 2 ही और का नाम पता है एक है गॉड लाइक और दूसरी और दूसरा ग्लोबल Well, अच्छा inhospitable there from Scars. तो उन लोगों को लगा कि ये ज्वाइन करेगा तो अच्छा है ऐसा हाँ or rather 4 versus 1 Crystals उन्होंने गॉड लाइक का वो बूट कैंप का टूर वीडियो नहीं है हाँ वो सब देख के रखा है अच्छा there's a star. Okay, Okay, good job Crystal. That was a बस nice उस चीज shot, के but लिए Bleed मेरे doing को even better with its 10 round बहुत वो scoreline. था At least a bit of fortune help. कि अगर इंडिया में गॉड स्पीड In this हाँ case, it was नहीं crystal कोई clear पूछा that कौन है मेरे साथ that मतलब would गॉड have been around. अगर इंडिया में काम करूंगा तो एटलीस्ट ऐसा करूं कि मम्मी पापा को अच्छा लगे Still though, we have to wonder, Scars, a final rally attempt
to get क्या themselves यार आपको going वहीं in पर this गॉड्स map. रेन का बूट कैंप टूर कराना था This is their chance to make something happen. Well, Scars, they have the ओनर से बात rifles. कराते बूट They कैंप need टूर to fight कराते back right here, right now. गॉड्स रेन का तो बूट Jemkin कैंप has been effectively shut मैंने भी down नहीं in देखा है this वन game. अरे अभी जो Been a दिल्ली वाला leader था of such a अच्छा दिल्ली वाला strong team with many statements. Bleed now. Playing the bonus, they have a few bulldogs to work with at the very least, but I'm watching out for that Bucky. Means that Bleed they really want to get that tower control to begin with. Yeah, and play it. नहीं I respect कमल पाजी जो अभी हैंडल कर रहे हैं ना गॉडेल में Big सब problem for the retake here on Scars. मैं इनको कुछ Let's see how सालों they से deal with जानता it in the हूँ first place. At the very least here for Scars. मेरे को नहीं पता they're गॉडेल एज aware एन of और that का bleed क्या चलता है presence, the heavy कंट्रोवर्सी bleed है वो presence towards मैं the कमल engagements पाजी मेरी that कमल they पाजी से at बात least हुई है confirmed कमल पाजी three. इज अ The गुड flank is well here पर्सन from Jenkin. मेरे को Knows बाकी that का उतना Scary नॉलेज is नहीं है there. बस बाकी तो गॉडेल So you see बीजीएमआई now Scars just और गया मेरे को नहीं anticipating a पता heavy push. They play back, opting to give him a sight and play retake. Yeah, this is Scars here at least क्या limiting ये the गेम options of Bleed. फटाफट They trapped 2-0 them होने towards वाला है arcade. They had the अगर good ये work from the राउंड tunnel ये itself. राउंड लग तो रहा है कि स्कारजी हार This जाएगी time around, the मेरे को X लग making रहा a है bit more standard for Bleed in the first place. The smokes are there, and here comes Juicy. Nepto the first to fall. Juicy holding towards the Jenny. And at least it's something that Bleed can work with. अब Cameron Juicy though एक gets ब्रीच the का spot फ्लैश going. लेके पुश Yoshi, करेगा will he be कोरा prepared पुश for this? करेगा Jemkin to a different plan on the other हाँ side of the smoke. And there you go, the two raises Jemkin touch. तैयार But it's बैठे हैं Jemkin who will still stand at the very end. 4v3 for now. Scars already on the retake as they get back in position. Yeah, turns his back. This is where the Bucky would potentially come on in, but it's dropped right. So मॉली they do फेंक दिया have क्या the स्कैरी tower control here. Fight goes Yoshi's हाँ way. And they have a 4v2. Yeah, the Molly though leaving a lingering effect, and Crazy Guy is They've buying खत्म time. राउंड हार Darian गए as well, same kind of setup. They've all- Bleed here, just looking for the timings, looking for the angles, Huge. and the हार Hunter's गए Fury has been let go. It's all up to Jemkin here to try and find these takedowns. Does Yoshi have he have enough time? timing? It's What? gonna be close, Oh, but Stars bhai. will Oh. still be able to stick it anyway. That got heart racing at the end. If he got the kill on Yoshi, they actually would have won the round because there 100%. wouldn't have been time, even with a half defuse. So, how close it came there. Bleed. Barely lose the round. मैनेजिंग कर रहा हूँ Scars गाइस barely scrape by. Yeah, and that's a bonus, by the way, for Bleed Esports. Still in a good spot. Scars, though, at the very least. You can feel the pressure now for Scars. They were a hair's length from losing that round. At least they have a few rifles to work with. बजाज भाई Still क्यों not the जिंक्स best कर रहे sign, हैं यार though. ब्लेड को Immediately, fault line to try and catch out Jemkin. मेरी किस्मत ही Good ऐसी flashback है usage to बोल get देता help हूँ the hell away. But तुरंत Juicy उल्टा हो now जाता है actually falls Jemkin first. by Darian trade with हो an गए immediate trade. 4v4 as the smokes are out and Bleed tried to cross. Watch Crystal. He's on the Crystal inside. मरेगा Wants to be the poison pill. Picks up a They rifle. know. They heard that. They know he's coming and he has to retreat for now. Yeah, was that the right move? He comes out with a Vandal, but could maybe had some timing there to try and chime in on the fight. The timing off a Scary. Finds a Oh, proper देख लिया, देख angle. Alan, he takes him Toraneko. down. Toraneko. Oh, no. I think Scary knows. He sees the foot, and there he goes, steps on the head of Toraneko. It's 3v2 now. Yoshi trying to get the angle, but Darion is prepared on site. Crystal Bye, now bye. in the 1v3 Bye, slates. bye. He was there to try and provide perhaps even a first contact. Now the last one standing, but Bleed Esports all across any angle they need to play off. They even have that insta-win condition with the orbital strike. This must be a save here. There's no chance. Not in this world, not in this timeline. A Scary. Scary, bro. Absolutely terrifying. Starting में Proposition Scary in the adapt नहीं कर nose. पा रहा था क्या 11 to 5. Scars look इंग्लिश है beaten and इसको battered. He's just starting से frightening when he shows up नहीं in those स्टार्टिंग से moments. स्कैरी अच्छा था बस Scars दिक्कत is क्या है the ना भवन one भाई with those lingering गर्जिया moods here, में my वो friend. स्टार As था Bleed Esports तब just उसके लिए प्लेस dismantling बनाते थे the setup of अच्छा Scars, as a no controller matter what हाँ piece they play, the वो एज अ aggression is कंट्रोलर found होके भी early लोग on. उसके लिए प्लेस Slow बनाते थे play is हाँ at least उसको all सेटअप handled करते by थे Bleed यहाँ पे तो Esports. ऐसा नहीं रहेगा ना यहाँ पे तो Two 5 away now from सुपरस्टार्स taking हैं the मतलब map pick that हाँ Scars has been using all throughout तो Pacific वो Ascension चीज में उसको to थोड़ा great समझने में टाइम success. लगा कि यहाँ पे Well, उसको खुद के लिए खुद का Seems like स्पेस it's बनाना Bleed पड़ेगा here ये ascending वो to another he plane of cannot rely existence. और मतलब Talked about even थोड़ा gods ये भी can था ना bleed कि with अब these उसको जरूरत guys. नहीं है वैसा Looking even higher than that. खेलने Omnipotent. की भी मतलब And हाँ always at the ready to get वो the नंबर्स punish. बार बार प्रोड्यूस Bleed करने की Esports can Darion get the hell away in time. The push comes on in from Yoshi, गया round but का काम। Darion dares fight indeed. Find him, catch him, sure, but Darion avoids the seize आप and देखिए he cannot वो fight back.
कितना टीम प्लेयर बन चुका है। ज़र्जिया में इतना नहीं खेलता था फॉर द टीम, डीले कर रहा है, मॉलीज कर रहा है, वहाँ पे वो सिर्फ एम फाइट्स के लिए जाना जाता था उसमें। They know Crystal is here towards A main. It's gonna be retarded. That goes doubles up as well. Showstopper. Okay, he's just looking to say hit to Crystal. Get the hell out! Kicked away by Juicy there. It's 2v1. Toroneko. He's tempted. He wants to pick up the rifle. Oh, they heard that. They heard that. They're ready. Bleed. So immediately, the alerts are Plus sounding. Bleed is blessed with an IGL. There is just no जिसका time whatsoever बहुत ही for linear Scars mind to है। work with. क्रेजी का है ना? Such हाँ, उसका an linear mind है, imposition उसको by सिर्फ Bleed. जीतना है। Think about it. Scars may have won the battle कैसे भी towards जीतो, बस Darion, जीतो। but उसको Bleed फर्क will win this war in this उसको round. बहुत गुस्सा Looking आता to है win this हारने से। entire bout too. Match point secured. मतलब आप समझिए भवन भाई कि वो आईजीएल नहीं था, 12 to 5. वो आईजीएल बना यहाँ पे आके, Impending doom. और ऐसा आईजीएल बना कि इतना कमांडिंग आईजीएल आई थिंक सो हमारे इंडिया में लोग 10-10 साल से भी आईजीएल कर रहे हैं, बहुत जन 5-10 साल से वो कमांड नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। मतलब वो 10 बार सोचते हैं किसी को कुछ बोलने के पहले। नहीं ऐसा कौन करेगा, फिर तो खेल ही नहीं सकते। बहुत जन है खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो होता है। मतलब वो ऐसा बंदा है कि टीम कुछ बोल भी रही है, टीम ये सब कर रही है, वो सबको चुप करा देता था। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब क्या बोलूं मैं, आई फील वेरी प्राउड टू हैव सीन हिज जर्नी। आईजीएल नहीं था वहां से वो आईजीएल जो बना, और इतने फास्ट पेस पे, और हमारे यहाँ जो बंदा था ना टिक्स बोल के, हाँ हाँ वो भी उसी पाथ पे था। पर जो भी हुआ, क्या हुआ बजाज भाई, बताओ पब्लिक को। मतलब आप टीम नहीं रही ना, तो अब वो पाथ टूट गया। क्या बजाज भाई आपसे मसाला नहीं निकल रहा। What else can stop Bleed Esports? Cars, they need to find the channel quickly. I mean, what is an incredible force against an immovable object right now? मैं टूट चुका हूँ, मैं यहाँ पे 3 महीने वापस काम करके बाहर काम कर रहा था, कुछ बेटर था। हम तो इतने सालों से यहीं पे हैं। यहाँ पे 2-2.5-3 महीने में तोड़ दिया लोगों ने मेरे। Well, they're ready to send it towards B main and Bleed. They are wary of any kind of aggression. ये सब सेटअप ये देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग सीएसगो खेलते हैं। Jemkin though leads the charge. A great peek from Darion to get the intel. Well, now they know. And Bleed, they know what's coming. How many though the targets? That's the question. Crazy guy tries to let it rip. इसको बहुत पसंद है ओडिन। हाँ वो ठीक है, पर ये एंगल से infer from that information that it should be A. That will be open. ए भाई डेरियन Scars needed early. Yeah, Scars have been looking for rounds. कभी कभी सा नशा, हाँ थोड़ा सा ओवर हो गया। Allen though backing on away from the site after the smokes. Nef gonna go for the plant, and it's Scars here regrouping towards defender spawn. Yeah, they got the Nightfall for the retake though. Lots of ultimates for Scars to throw. They've done good so far early in the round. You can see here, importance being placed towards drop. Showstopper out. Yeah, Nef is buying tie though. Showstopper now, and चलो Jemkin 1-on-1 trade भी अच्छा है Scars के there लिए। in the end. Scary playing so far on the way. He still has the Molly Lucas and the ult है orbital और strike, Molly and है। he's now gonna let the heavens crack towards Scars here. Also the lineup in position. Juicy buying time as well. The flames are there, and Scars cannot handle them whatsoever. Bleed Esports, this is a standard being set, and they will still take the round. बंद करो खिड़की, बंद करो भाई, इतनी Scars look like gods here, but you know what they always say. चालू हो गई। Gods हाँ, will bleed. बहुत जोर से आ रही है बारिश। One away for Bleed to let the नहीं हो रही थी, अभी भी यहाँ पे जोर से हो रही है। हाँ। पूरा फर्श गीला हो गया, मुझे तब तक नहीं रियलाइज हुआ जब तक मेरे ऊपर छींटे नहीं आए पानी के। मैं तो इसलिए अपना रूम की खिड़की सब कुछ बंद करके मैं भी बंद करता हूँ, पर कल क्या हो गया, अरे 3 दिन से बंद ही थी, बारिश हो जा रही। कल ऐसा हो गया ना, थोड़ा घुटन सा होने लगा कि बंद 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 बंद। अभी खोल देता हूँ, बारिश नहीं थी सुबह तो, अभी देख रहे हो तो फर्श गीला। चलो गाइस, एक टीम डेथ मैच खेलते हैं गाइस जब तक नेक्स्ट मैप चालू होता है। GG 3-5, हाँ यार मतलब इंडिविजुअली स्किल है और ऊपर से अल्ट्स भी थे।
only getting traded so early on. Jumpkin भाई मारेंगे, इतना नहीं मारे जितना बाकी लोग के होना है। मतलब ब्लीड ने स्कार्स के सामने ऐसा खेला कि स्कार्स उतना खास लग ही नहीं रहा था अभी। हाँ, क्योंकि ये मैप में रोटेशन ये सब स्कार्स के उतने अच्छे नहीं है जितने ब्लीड के, मतलब बेसिक्स बोला जाए तो ब्लीड के बेटर है। इस मैप को समझने को लेके ब्लीड ने बेटर समझा इस मैप को बेसिकली। अगर आ जाओ एक टीम डेथ मैच खेलते हैं। भवन भाई गेम चालू नहीं कर सकता मैं। अच्छा, मैंने वैनगार्ड ऑफ भूल से क्विट मार दिया। ओह ओके, तो अभी ये चालू करने के लिए आपको स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी फिर। हाँ, ये भी ठीक है, पर बहुत अच्छा लगा मेरे को टीडीएम। हाँ मजा आता है, बहुत मजा आता है। चिल्ले गेम के बीच के गैप में भी हो जाता है, नेक्स्ट मैप चालू हो जाता है, मजा नहीं लाइफ। बहुत सही। डिस्ट्रिक्ट बोलते, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट अच्छा लगा मेरे को मैप। हाँ, डिस्ट्रिक्ट अच्छा लगा। Yes, I am pumped. नवीन, लगता है इंडियन डॉग ने एक्सपोर्ट भी मंगवाए थे, उनसे कुछ सीखने के लिए ही नहीं, बेकार थे सारे एक्सपोर्ट्स। देखो भाई ऐसा नहीं है, पर मैंने एक चीज बोली थी ओजी के पॉडकास्ट पे, मैं भी वापस बोलूंगा। जो प्लेयर अपना देश और सब कुछ छोड़ के इंडिया में टियर 2 वैलोरेंट खेलने आ रहा है, तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो प्लेयर टॉप लेवल का होगा या उसको सब आता होगा। पर फिर भी थोड़े बहुत प्लेयर्स ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे और जो आए थे। बाकी फॉर एग्जांपल टिक्स ऑटम, आई थिंक, बाकी जितना मैंने उनको देखा है नहीं, और उन्होंने कोशिश बहुत की थी सिखाने की भी, ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने सीखा भी बहुत है। ऐसा उन्होंने मेरे को बोला है। अब हो सकता है मेरा दिल रखने के लिए बोला हो, बट टेसरैक्ट और डोमा, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ डोमा टेसरैक्ट या 21 भी नहीं है, पर एज आई सेड इट्स ऑल्सो कि उन लोग अगर इतने अच्छे होते तो वो अपने रीजन में ही खेलते होते। हाँ, टेसरैक्ट ने अभी बहुत प्रूव किया है अपने आप को, इतना मैं बोलूंगा। डोमा और 21 2 महीने के लिए आए थे, तो मैं 2 महीने में किसी को नहीं बोल सकता कि इनका रिडेम्पशन आर्क चालू हो गया। अभी टेसरैक्ट को आई थिंक प्रोबेबली लाइक अ सीक्रेट भी शायद ऑफर कर सकती है इफ दे लुक फॉर अ प्लेयर, मे बी। आई थिंक टेसरैक्ट के भाई को, टेसरैक्ट का भाई मतलब आगे, अच्छा हाँ वही जिसको भी आई थिंक वो तो मोस्ट प्रॉब्ली जा रहा है, देखते हैं। अरे क्या मेहनत करवाते हैं यार, इसमें भी टीम डेथ में लोग ट्राई हार्ड करते हैं। हाँ, अरे मैं देखता था एक लेफ्ट वाला और डिस्ट्रिक्ट में लेफ्ट वाला एंगल पकड़ के बैठा है सर। और हमारे वाले भी जो आए थे ना भवन भाई, वो भी लॉन्ग टर्म सोच के ही आए थे मेरी तरह। नाइस थंबनेल, थैंक यू भाई। ये सुबह से ऐसा रात को एसी में सोना, सुबह माउस पर इतना डैम्प हो जाता है कि माउस ही नहीं हिलता। मॉइस्चर के वजह से मैंने तो अच्छा उपाय ढूंढा है। क्या पाउडर? सीपीयू नीचे है ऊपर? ऊपर है, तब भी मॉइस्चर आ रहा है। पता नहीं, मेरा सीपीयू जब तक नीचे था तब तक मॉइस्चर आता था, पर सीपीयू जब तक ऊपर रखा है ना, वो मॉइस्चर आ नहीं सकता। सीपीयू का हीट जो रहता है वो थोड़ा डिस्पर्स कर देता है। सीरियसली एक सोल्यूशन बताया भवन भाई, बोल रहा है माउस पैड को उल्टा करके रख दो रात को सोने के पहले। हाँ वो भी है।
भाई 6 किल मारे थोड़ा बाजू में खोल दे नहीं Satchel out. New stage in time. Reloading. I'm on ready. Here comes this way. Stage 3. अरे यार इसको और डाल रहा है अपने बेस के बाहर बेशर्म आदमी Grenade. अरे Flash out. Ultimate story. अरे भाई 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 जेट भाई अपना नियॉन तो सामने आलो के लेके My ult's ready. Here we go. Get out of my way. New stage in 10. Kill. Satchel out. Final stage. Raise dead. Waiting to पूरा kill. लेफ्ट से राइट आया है बैंड कर दे Waiting to kill. Flash. Grenade. Flashbang. Satchel out. Weak. Reloading. क्या वॉल किया है मारता भी नहीं है वॉल भी अकड़म भी Satchel out. अरे हमारा नियॉन कितना होता है Satchel out. Charge your ults. Gotta go. 15 kills to go. Cutting their vision. The hunt begins. Right way. Wait for me. Grenade. 10 kills to go. Satchel out. सही है बाबा Five kills remaining. Joke's over. You're dead. Satchel out. हाइप करना है था हाँ Not ready चड्डी yet. थोड़ी है उसकी Bomb buddy. चड्डी है क्या तुम बताओ क्या बात है कौन था अपना नियॉन इतना गंदा प्लेयर चलो ठीक है कोई बात नहीं Just in case they got the stream on mute. You want to show the new agent? एक How do सेकंड you आएगा build the वॉशरूम new के agent? I don't know what her hand signals are just yet. Like a trap. Just do this. Go Oh, like, like like the barrier. yeah, the barrier. You be the barrier. We are Yeah. the barrier Beautiful. now. That was that was lovely cosplay. I love the live cosplay on the desk. That's exactly why we hired you guys, right? You know. Thank you. Yeah. We're in a very colorful shirt, so we That's might as true. well bring the color to the panel. You're bringing the color. Yeah. Well, we're all bringing different colors. I today. mean, I It's got, like, dude, your name is black and blue. I got Come two on. colors. Yeah. True. Is black even a color? It's a shade, isn't it? I think it's a I'm throwing color. shade at you. Yo, 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 yo. Quickly, before we go back on topic, because I Yeah. love being off topic, I just need, as close of a close-up as we can get on black and blue. What are, so point at the things that I thought were whiskers. What do you mean? There's like fish with whiskers. He said they were Uh, turtles, yeah. but I don't think they're turtles. This is a turtle. Yeah. This is like
A bird? Yes, but go back to the fish whiskers. This Show is like everyone. a fish with whiskers. I need confirmation on what the hell they are. At least Mac's guess was close. I first looked at it, I was like, is that a tiger? Maybe under the sea. Maybe. They got I some was so off, बैठा हुआ honestly. हूँ Yep, I can tell you were definitely off on तूने बोला that. तेरा काम है locally sourced, by the way. हाँ मैं तो कर रहा हूँ स्ट्रीम नहीं कर रहा ना पूरा काम कर रहा हूँ Yeah. कल करूँगा Is certainly, you know, Oh. sea life or Yeah. around the ocean, right? Like, Yep. yes, there's a bird there, but, you know, seagulls exist. Uh-huh. In general. Water tigers don't exist, as far as I'm aware. मैं Maybe ऐसे they last are, round maybe they देखा swim. how's the I'm going game to go check that on Plus Google map. real quick. But ladies and Easy. gentlemen, we are going to go to a short break before we jump on into the second match. very easy Bye. 35 at this point just let them qualify already खिलाओ भी मत bleed को Wait, tomorrow Bleed plays DK, right? पता नहीं है मेरे को. Yep, D plus. D plus. Now Spoon, Bleed, D plus. Orangutan Bonkers. देखो गाइस एम टैक्टिक्स सब साइड में रखो मेंटालिटी डिफरेंस भी है you need to believe you can beat them only then you will beat them So I googled it, and we found out that it was a moustache fish. I've never seen one before. What's a mustache fish? Crosshair moustache code fish. It's a कैसे देते हैं starfish मैंने with कभी a दिया नहीं है moustache. It's You've like never- you. Anyway, apparently they exist. Do this, Mac, real quick for us. This is Yeah. star. Yeah. Yeah, that's as close as we're going to get. Now, either way, look, the game is not too far away. We are going to be going into Pearl. Yeah. And this is what you guys were talking about in the pre-match, right? As soon as that was locked in, we get to see this 𝘼𝐼𝐼𝐼𝐼, which remember back to the first time we saw Scars playing here at Ascent Pacific. It was dangerous as all hell. And we also get to see Phoenix, probably going to be ran on the other side. So that is where things get interesting, right? Out of these two agent comps, which do you like better? I mean, you have to kind of wonder which run it down kind of duelist is going to be more prevalent here, or at least more effective. And I have to go with the 𝘼𝐼𝐼 coming in from Bleed, not just because it's a 𝘼𝐼𝐼, but also because of the User way that they play disconnected off from of your it, the way channel. that they're able to enable him to buy space. A lot of times you don't want that 𝘼𝐼𝐼 to be the first guy in, you want him to be the second. Yeah, it's interesting that we might get a double duelist versus double duelist. You have on the side of Scars, they can play Crystal, back on the User duelist was role, moved Bye-bye to को your बुलाते channel. हैं actually run even while he's shot calling. And on the other hand, Bleed, their whole stratagem हमारे भाई does defend नहीं involve लगते हाँ पोक juicy, किया going मैं ही ड्रैग against करके more लाया उस committed angles, and then just the thrust, he can get that kill, dismiss on out, and then reposition and 𝘼𝐼𝐼 का drag everyone aim along the 𝘼𝐼𝐼 way. का That's why game we see also from Bleed, they run something like that Brimstone because these fast hits can be commanding the way they play. Yeah, that's 100% correct. Look, personally, I think I like Phoenix just a little bit better. The way that we've seen Phoenix Audio execute ठीक है well guys so far. कास्टर is just वॉल्यूम great मेरा coordination वॉल्यूम off the back ठीक है of ना those अभी curveballs. You just
peek on both sides together. I'm thinking, you know, over towards B site. Once you get that spike planted nice and open, hit the double main setup, and then you can just go straight in off the flash together, two-man swing, and usually you're locking it down. And that's exactly what we love from Bleed. Yeah, I mean, it's a Singaporean super pick, though, to go for that Reina. We kind of... How important is mentality? I'll give our own example, guys. हम लोग GXR पे जब खेल रहे थे, तो पेपर एक्स के हमने खेल रहे थे, स्टार्टिंग हम लोग आया, they are the best team in Pacific शायद, and हम लोग ने इतना प्रैक्टिस भी नहीं किया है तो, पर जब हम लोग गेम में खेलना चालू किए, LAN पे, ऑनलाइन नहीं बोलूँगा, LAN पे जब हम लोग खेलना चालू किए, कुछ राउंड के, बहुत क्लोज राउंड जा रहे हम लोग को अंदर से एक विश्वास आ गया कि नहीं अभी जीत सकते हैं, एक्चुअली इतना फर्क नहीं है। फिर जब हम लोग बूम और ब्लीड के सामने खेले, हम लोग वो सेम मेंटालिटी लेके खेले, and we can win this, we got this, and we did win. फर्स्ट गेम में हमारा मेंटालिटी नहीं था कि हम जीत सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फर्क था। अगर होता तो शायद we could have won it. I'm not saying we would have, I'm saying शायद हो सकता था। We're going to see where this one goes. You know, Reina obviously a very interesting choice of duelist, but we've seen it work very well on Pearl before. The most interesting part about this, for Scars especially, is the change of focal point coming into these strategies. Crystal is the one to watch out for. Finally, we'll see Gem can kind of take a bit of a backseat. He might be able to make that kind of space, but we've seen from Crystal, especially in that matchup versus J.Dat, 6 first kills. He knows how to use those curveballs. He knows how to play that N3, and perhaps that's the punch that Scars needs, given the fact that Bleed cannot rely on a utility setup anymore when they're playing Jet Reina also. Yeah. When there's less pressure there on Jemkin, I don't doubt that he could be performing a lot better than what we saw there coming on Fracture. But you want to see this kind of be like the way that SCA plays, the way that APAC Pacific in general. देखो हम लोग के सामने बूम जब खेल रहे थे वो तो ऐसा लगा था ऑलरेडी डर के ही खेल रहे हैं उन लोग लैन पे, नॉट जस्ट हम लोग के सामने, इन जनरल बूम लैन पे तभी का जो लाइनअप था ऐसा लग रहा था कि एकदम डर के खेल रहे हैं उन लोग। That is where he gives us all those little surprises, and maybe that raise was a problem for him. Who knows? I guess we can find out later on today. Once the game's all said and done. But for the moment, it's still here, it's still kicking, and it is Scar's chance to make a reverse sweep happen. They get the selection of side, of course. They are going to be starting on that defense where they believe they want to start. Now, how do you see that operating with the agent comp that they've brought, especially, you know, playing for the retake? It's just about catching Juicy. This has to be both Crystal and Jemkin barreling down on Juicy, preventing him from getting that kill, and then preventing him also from regrouping with Darion. The double duelist, it is undeniable that this is the linchpin of both these plans. And if they actually shut down Juicy itself, or himself rather, it is just such a big problem for the side of Bleed, because they have so many committed utilities that they can't really regenerate. If you don't play with you can win mentality, no. Well, see, we played like we can win. How this one goes down, but it is going to be believing it as the and thinking map of the series. फर्क है एक चीज का, या obviously हम लोग खेलेंगे तो जीतने के लिए ही खेलेंगे. But when you are in that moment, right, in that first map, can they do saying it and actually feeling it are two different things. आज मैं मैग्नस कार्सन के सामने चेस खेलूंगा मैं भी जीत सकता हूँ. बोलने में क्या, जीतने के लिए खेलूंगा, पर क्या मैं जीत और बिलीव करना कि नहीं है मैं तो जीत ही जाऊंगा. दो चीज में फर्क है. Hello Unleashed. Well, it's Atlantis where we shall see under the sea. I think आज OG 2-1 जीतेगा guys. Cleanly. Scars, I feel it. Opening defensive round for them, taking a bit more of a passive approach, but they are putting emphasis on stacking towards the B site. Yeah, but playing on Pearl as Scars, this is the hardest route to get to the playoffs early. And if they are able to do this, if they're able to beat one of the biggest streaks, one of the most prestigious streaks of Bleed Esports on a map that they call home effectively, then you know they're truly a contender. They do play though here for Bleed towards the art area. They want to go for that A site. Smokes out as well, and Scars, they're going to have to just hang back and let this one go. Yeah, one would assume with a comp like this that the हमेशा A rush करते हैं, फिर भी लोग में especially on the defensive side. They took that gamble towards the B side, gave up connector completely. It's the A side now. They're going to try and hit off that retake. You can see how Bleed here on their post plan, really taking that art control. It is planted for him. Yeah, that's the fallback point here for Juicy, and there you go. This miss right now on the other side. He wants to set up a crossfire here, but there is not peeking. And just all Juicy on the side. Eventually, Bleed will decide to just come out of the woodworks, and Scars is already left hurting.
We talked about it a while ago. The Reyna is pretty much the plan, and Bleed will get things done. A strong pistol to begin with. Yeah, repositioning there off of the pick. They got the Lear. If he had another dismiss, if he didn't buy the Lear up, then he could have even gotten away with that second kill for free. हर पिस्टल में bleed आ जाता है, उसके बाद सब round भी जाते. ये split literally. Stellar opening already. You have to get confident and you have to get those kills early to get yourself going as a Reyna. Even at the youngest age, Juicy has been confidence personified. The way that Bleed is able to play a map like this, the way that they're able to play the angles that they work with is because of how Juicy is there in position. Can get helped out in a pinch by his team. But in that round, honestly, he got the job done early on. Yeah, and now we get to see Darion back on his signature jet, which we've kind of come accustomed to throughout the years. Back then, he's always been that duelist per Bleed. They switch things up now. Lear on the execute, on the entry, and Torneko trying to front it. He does get a kill off of it. Yeah, Scars, no fear to go for contact. At least they get 2 for their troubles, especially that takedown onto Darion. But in the end, there's still that. अगर उल्टा क्रिस्टल रहता तो फ्लैश करता तो Crystal all मजा alone now in a 1v3 slate. He wants to go for all of those orbs here, Black and Blue, but the problem is Bleed is executing so quickly that Scars cannot farm up. Yeah, difficult position for Crystal, of course. 1v3. Potentially trying to play. I think जो दो बंदे फाइट ले रहे थे ना, उसके अलावा बाकी दो बंदों को इनकॉग्निटो रहना चाहिए था. हाँ. I think he's just gonna try and go for an exit here. They're gonna hunt out for him. We would assume that they will clear him out of this corner when they do push, but now Bleed taking the safer option. They know they've already lost all that they want to in this case. Give it on up and Killed my bot. second round coming in for Bleed. No, it's the smartest call. Because if Crystal dies to Bleed's hand, that's 1 orb for him. If he dies with a spike, oh well, okay, never mind. Definitely gets that takedown. In the end, Crystal does force the hand of Bleed. They do want to build up that lockdown too as soon as possible. But this is where it changes. Scars now, they can actually play aggressive if they choose to. Well, how's that going to work out is a question. You look at both composition, and it's all about playing that aggressive style. And will Scars here on the defense really pull that out against the bonus? Will they maybe fight for mid control or be long? Are those plans in set here for Scars, or are they going to play back as we've seen them? Seems like they do want to aggress here towards be long. I mean, on paper, Scars has the close quarter advantage. They have that Phoenix, they have that Sky. Yeah. Flashes can be so effective on a map like Pearl. But they do go for the push towards B. Jemkin tucking it away, actually, on the corner of that little cubby there by the pillar. And Bleed instead hanging back for now, just trying to see that initial rotation for Scars. You can see Nefir kind of just waiting towards mid. इसको उड़ाने वाले ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? When the hit does come, swing though, Torneko connecting and finding Crazy Guy early. Yeah, good start here for Scars. If Bleed is kept at a slower pace, then they can take advantage of the utility that they have here. Star setups there. Darion, though, pushing forward with the dash. Juicy also just barreling on down, but Torneko will kick him to the curb. Smoke dissipates, and Torneko doing everything he can. A 3K till he runs out of bullets. Crystal's there for the reception too. And Scars, they get their rifle round going. Yeah, good anti-bonus here. Coming in from Crystal. I don't know how the team is shipping up Genom, so I can't really say, but I think they have a pretty decent chance. Yeah, just every consonant supported by a vowel right after. That's true. It's consonant, vowel, consonant, vowel. Yeah, incredible. All the way to the end. Incredible. Astounding. Indubitably. You wanna read the thesaurus more, good friend? Sure, go ahead. Open that up. You have all day while we're watching this replay. Well, the bonus here certainly not works out for Bleed, but I'm sure that's a give-me that they're willing to give on up. Aggressive push here towards that A main. More of what we're expecting from a composition like what Scars has got. Yeah, Bleed here, though, vying for mid themselves. They want to go cross through links, and it's Allen who is pressured here. Smoke, though, to cover that cross. Banana Swarm, though, trying at least to go for the stall. The alarm bot's there, too, so at least Bleed here, keeping Scars at bay. They want to go for that B site, but they know the timing has to be perfect. Yeah. Can they get the pinch, though, onto Jemkin? That's the question. Yep. The flash is there, too. There's an alarm bot, though. Keep him at bay. If in case he doesn't want to chime into this fight here, Allen, the defense is adjusted. They've rotated. They know it's coming. Allen, big pick. Jemkin a double. That's Allen's.
It's all Alan Oh now. भाई, Yoshi's nice there pincer too. है. And this is the problem for Bleed पकड़ लिया, Esports. पकड़ लिया. If they get stalled, that smoke will eventually be so अब gone. And Scars call will आने be वाला है. happy to take those sidelines. Crazy guy though, भाई. fighting on Time back. out का? It's him versus the world. Time out आई नहीं है. अब crazy guy का call आने वाला है. Neko on the flank. There's the Guys, curveball 2 from Crystal. there's Now no they point know going here and Yoshi there. falls. You know what Crazy guy works. with the Oh भाई. 3. हाँ, But की बीरश behind him, करते. Neko बस. will keep things going for Scars instead. Yeah, Neko just finding the timing there. इतना दर्द आवाज में है यार, दर्द है ही, दर्द ही बचा है भाई. Scars early, looking pretty tasty. They kind of, I guess, expected that an angle would have been cleared. Alan still just waiting. वो भी क्या जमाना था वो Biding भाई. his time to strike. When he did, प्योर गाने थे. how effective it was. Yeah, Bleed cannot hesitate. That's the problem right now. If अभी they मैं run इंडी out of बहुत smokes, सुनता हूँ. इंडी they're गाने अभी gonna भी be प्योर caught लगते हैं. out by मैं Scars and अभी those भी sidelines. मेरे को अभी There भी is वो still that बंदे गाना partnership याद potential है. from Juicy as well as Darian. याद है आपको बंदे बोल के Hero गाना? right हाँ, now हाँ. as well here for Juicy. Yes, तो sir. रुक Let's see जा what he रे can do with that. See, बंदे. he does have the Empress. He can lead the charge. मैं here. ये सब He सुनता can हूँ. लोकल certainly ट्रेन भी know that सुनता हूँ. No holds barred. This man can जो भी अभी इंडी गाने हैं ना मस्त. overrun and मेरे को Spotify पे आप roll फॉलो through करेंगे the तो आपको defense मजा if आएगा. he's given the मैं सिर्फ यही opportunity. सुनता हूँ. Alan's हाँ, got हाँ. out and मेरा definitely पूरा has प्लेलिस्ट the ये lineup सबसे as well भरती to है deny the पुराने plan. गानों से. Just trying to find जैसे that piece. बैंड ऑफ बॉयज का गोरी. अच्छा. वो वाला गाना याद है? सही हो The running Drooga, back on the Drooga, outside. Drooga, Juicy though Drooga. with the takedown can still use याद that more than हो, the bar just anyway. But the double up from Yoshi and the rest of Scars दीवाना are there. बन There you गया. go. ओ भाई That's डेरियन. all he needs. The blades though, trying at least to get more impact. Crazy guy Delay, playing देख, towards फिर pillar. आ गया The Scary का cosmic molly. divide will shut things down here for Bleed. The fires still are there. Scary with the takedown. Scary gets the orbital strike, and here we go again. Scary, oh scary, the stall is magnificent. The Marshal looking for the shot. Can Crystal get it done? doesn't have the He's in angle. cover, and he will get the Arre. defuse too. Scary though still fighting back near the tail end of the round. And whoa, the shot! अरे He आधा had him. सेकंड और He रहता had तो him मार ही there. देता. A split हाँ. second more. Left flick would have connected, but look at how much मैं बोला ना, Scars अभी आने have वाले to हैं ये लोग. commit हाँ. against an eco. The cosmic divide, the run it back off the Phoenix here. अभी लोग बात कर रहे होंगे कि कोना में प्लान मत दो, That बीच is में प्लान दो, brother जो from नया वाला Crystal. प्लान है. That's big ultimates committed here on a round that I think if you look at the way that Bleed were playing, they're fine to give up, they're fine to lose. They did burn the orbital though on the counter. What a roller coaster around. Yeah. You think, okay, Bleed no chance. Suddenly, oh, Bleed has a chance. But look at this though, B long once again. चलो बी रश. But there you go वापस. again. Bleed. They've done this assault before. अरे भाई भाई broken है, They have the 77% rifles win now rate to है. utilize. इन लोग का Guards भी there रश पे. too, इन just लोग to का get नहीं, within that overall. area. In general ना, Of हाँ. course, आप सोचिए clearing overall it all the way to 77%. begin with. And not only that, an aggressive lockdown here from them. They're trying to bait out Scars, but Champion gets one and Darian an immediate trade. Alan though backing on away. It's Bleed now going aggressive. Alan's shutdown though is huge. Juicy goes down. Darian with the catch. Alan again and again. It's just all about contact here, Black and Blue, because Bleed just keeps wanting to push. 3v2 now. Lockdown's there. मॉली से Oh, टूट big जाएगा knockdown here, actually. gonna be difficult, but they have the Hunter's Fury to destroy that from being utilized here. He gets all three to connect. Scary! That's terrifying timing! He ये gets देखिए, the इसलिए one, इनको he भी gets तो the काम second! आता है. And now it's a 2v1! A nightmare indeed here for Scars and Scary, the hometown Scary hero बोलते हैं. himself will do it अगर all Scary ने वहाँ पे for हल्की सी भी Bleed हरकत at की the होती, end. What तो a ये round नहीं stall निकलता. from Crazy हाँ. Guy, but क्योंकि what an कौन angle taken by Scary. कवर में And नहीं, look how मतलब he's कौन able to टाइम पे buy नहीं आ his सकता था उसको time. कवर They're देने. waiting हाँ, behind वो तो है. Crystal and how clear the image looked. Hometown hero, this is his neighborhood. And Scars defeated. तारजी ने क्या बैंक किया कि अगर वो अल्ट मारा तो कोई उसको कवर दे रहा होगा. हाँ. तो सेकंड बंदा वहीं होगा. Every single player उसी on बात पे this खेल के team, Scary. a superstar in their own right. This is what Bleed does on a map like this. They force the hand of the opposition. Incredible work by Incognito की Scars to ताकत fight बहुत back कम in जन that समझते regard. हैं. The fact that they were able to get the catch. मैं तो on सबसे both ज़्यादा Juicy and समझता हूँ. Darian gave them मेरे a ऐसे fighting cheap player chance. देखे हैं आपने? We always talk about the India में. reliable backline here for Bleed Esports. And now they go for that B site yet again. This is their standard hit, and they go for more. Champion though different सबसे मस्त plan. बात क्या है ना I मोहन like भाई, the try, I like the attempt. आप but एक you बार just इनको can't ऐसे get मार the दोगे angle ना, from the speed of हाँ. Bleed's clear. दिमाग में डाउट आ जाएगा. Burns the हाँ, updraft खड्डा and बैठ the जाता है. tailwind खत्म. for that fight.
Let's see how they go, though. Juicy, good on the one. Shut down on the back haul. They got the 2v2 trade. Yeah, that's a gun being picked up here by Yoshi, but he's so low already. Can he give it to ToroNeko instead? Star being popped. He's gonna go for the defuse immediately. Gets halfway. A chance here for Scar. Someone needs to spray. And ToroNeko! Oh, bhai. He was just barely there. He got so close, but Bleed will deny him still. A stone throws away a sliver of the tick. That could have been it. गाइस तुम लोग लाइक सब्सक्राइब ठोक रहे हो कि नहीं? नहीं तो मैं स्ट्रीम रोक दूंगा, बता रहा हूँ. Big kill there to find Alan Molly. ये बोलेंगे अचानक से क्या हो गया भाविन भाई? Time maybe considering how low he was already, but it would have been super close. Luckily for Bleed, they get. It's really. चलो अभी बी पे फाइटिंग देखने मिलेगी. So it's the stars versus the scars. So far, it's Bleed. We take the advantage. All I have to say is, why do these rounds need to go this close all the freaking time? Because these teams are great. These teams are incredible, and ये क्या किया भाई? क्रेजी guy ने. Making his position. नहीं वो क्रेजी guy हमेशा jump spot करता है. कहाँ पर ये jump ही नहीं किया? हाँ. But Juicy, that's a big pick on the Yoshi. No flashes for cover instead, unless Crystal can get in position. Jamkin here. Oh, he's in the blaze wall. He's trying to bail his teammate out, but he was. कभी-कभी हो जाता है उससे. It's better than nothing, and he got out anyway. That's what they needed. He burnt his cloud bursts. No more. वो सोचता रहेगा कुछ और चल दिया रहेगा आगे. Yeah, they use both just to allow कितना that बार to तो happen. open में drone करता हुआ पकड़ा गया. 4 scars, and they end up on the 1-for-1 trade instead. Bleed though, they cannot use intel anymore. They're gonna have to just go for a full send moving forward. I mean, isn't that what this comp is all about? We saw them be able to win that A site hit. कहीं सोवा मीन्स की आदत नहीं होती. दौड़ के आके jump करके drone करते हैं. हाँ. और आगे ही जाते हैं आधा टाइम तो. वो आदत थी. वो open में drone करने लगता था. क्या बात? Towards one here on Art, that could really help out. Yeah, this is Bleed. सामने अगर ऑपर होगा तो बोलेगा, oh, thank you. हुआ मैं माता tournament में हुआ. Banana swarms. They do get now the Empress 2. The execute from Bleed commences from Scary's smokes. The plant goes down and now swarms don't get much. There's the gravity well, but Bleed still keeping on उल्टे में एलन ने ज़्यादा मार खाई. It's up to Jamkin to just put a dent in this setup. Waiting for the smoke now to dissipate. Here comes Nev भाई तो. Jamkin. Now they know. वो छोड़ो Nev भाई को तो मतलब. 4 scars and Juicy also shut down immediately. This Empress not making any noise. The orbital strike though is the call, and here comes Scary. Burns down Crystal. But they're waiting now, and Scars will still get the round. Big round here from Scars. They're keeping it so Nev भाई आराम से आते तो राउंड निकाल सकते थे. ये तो ऐसा भाग के गए. उसको लगा होगा कि रोटेशन चला गया होगा. कहाँ चला गया होगा? मतलब सीटी की तरफ. Every time that they play it. But this Scars team is just something else to behold. इन्होंने पक्का इनका ward या कुछ देखा होगा. हाँ पर फिर भी यार घाई थोड़ी है. वही नहीं जाना चाहिए. Just plant ऐसा भी नहीं ना कि time का constraint है. हाँ. They're not gonna back down. They're gonna fight Bleed as much as possible. Oh, in the fact, I thought it was where's the bacon? True, I asked for him too. I asked him where it was, but this is just proof in the pudding basically. Yep. Scars, they have the utility to try and stall out Bleed, and they're also themselves putting themselves at risk just to fight Bleed, just to keep them in those initial corners and kind of waste as much as they can that Bleed still has. Constantly here though. Scars have been giving up this connector control. They know that as long as they hold the water, the underpass there, the sewer way, then they don't necessarily need to fight for this connector, especially since they don't have the utility to do so. Yes, they have the Astra Stars, but we've seen Bleed be able to overcome that in the past. चलो rush करो. Push करो. A while ago in the last one, and here comes the Leer as well. Bleed though, clearing towards main, and Neff will find ToroNeko. That's huge here because the gravity well has stalled Bleed so many times already. Alan though with the wall backs, and Juicy's the one who gets it eventually. Bleed, can they get that plant going? The Seekers are there, and Crystal in nice position. cover. It's a trade yet again, 3v3 now. Yoshi trying to go for the push, but the Cloudburst keeps him at bay. Alan eventually, still the spray from downtown. Here comes Crazy Guy, the tap stellar. Alan though with a 3k of his own, and it's 1v2 now. All up the Neff to shut this down. There's the first. Can he get the second? The turret forces Alan's hand, and the 4k for Bleed to clutch it too.
ice cold. अब ये राउंड ए जाएगी वापस और लेंगे नेफ अल्ट करेगा चलो You can see here that भागो Bleed नहीं अब ये लोग वापस बी जाना चालू करेंगे especially their Nef recognizing that if he hides his position मेरे हिसाब से ये राउंड ए जाएंगे फिर उसके बाद लास्ट 2 राउंड बी जाएंगे हो सकता है पर मैं जितना ब्लीड को जानता हूँ वो अब बी जाएंगे वो कंपल्शन नहीं होता भवन भाई कि हमको पता है क्या बेटर है कि बी ही बेटर है तो बी जाना पसंद करेंगे चलो It's a clutch at the end, the 4K from Nef that prevails. Yeah, and the dugout position too, but here we go now. Full aggress, and Bleed is ready for it. Come to the slaughter. They say the Scars. And just like a grinder, Scars is just gone immediately. 1v4. That's it? That's it. Alan. Oh no, the turret alarms too, so yeah, they know. You know he's on the flank. भाई गॉड स्पीड के बाद अनड्यू एडवांटेज है ये केस में गाइस तो गॉड स्पीड के रीड बेटर रहेंगे हां मतलब ऑब्वियसली बात है मैं हंस रहे मेरे लॉन्डे चैट में पर नहीं हंसने की बात नहीं है लॉजिकल तो वही है जाना यार क्योंकि अल्ट आएगा ना नेफ को They have struggled against the utility. But Bleed has no logic, only magic. नहीं हमारा थिंकिंग अलग है हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ मैं ब्लीड का हाँ नहीं ब्लीड का थिंकिंग ही अलग है मैं बहुत अग्री करता हूँ अप्रोच से कॉल्ड पे ब्लीड के बस चले तो मैं 12 राउंड बी जाऊँ हाँ और मैं ऐसा हूँ भवन भाई कि मेरा कोचिंग से ऐसा है मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि अगर मेरी टीम रीडेबल है बस अगर हम रेप्स अच्छे से कर रहे हैं ना अगर उनके 5 बंदे भी रहेंगे तो हम जीत जाएंगे अगर हम हमारा प्लान ढंग से एग्जीक्यूट करें Silence immediately. Bleed. Do they just go for the commit anyway? और उस मामले में मैंने ये लेगिया से जीता है a stellar angle to still get आपको the बताऊंगा takedown. मैं Plan आपके comes बाद on in from Juicy as well. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या सीखी लेगिया I'm waiting for this one. Does Juicy hold and rely on the dismiss instead? Never mind. He cannot fight back. Counter lockdown here from Nef, but Crystal wants to push it anyway. Here comes the flash, and there's the clear that they need. Nef holding onto the pillar. Scary though has been consistent so far. No, not like that, Nef. You never want to go for the knife out in that regard. Scars, they get back on site and they fight and just force Bleed away. Nice push from Scars. You can see there the flash, a curveball really coming in big when they needed to, denying the lockdown, and they just had the proper timing to make it happen. If they stalled even for a bit, then who knows, Bleed might have been more ready for that push. Obviously as well there, the Cosmic Divide just cutting the noise. You can see Bleed unsure if the tap came on in, where the spike is necessarily in terms of utility and what is on it and what they have on it on the opposing side. So Scars keeping this game close on the defense is all they needed to do. Yeah, कौन है साथ में Godspeed है अभी sorry राशि का फोन आया stay था away from the sight lines of Juicy until they double up on him. That's how they caught out Darion first and foremost. Juicy couldn't find a trade, couldn't go for an orb to work with because he couldn't get that kill. And Scars, they've shut down that imposing Reina that we expect to top frag in a map like this. Toro Neko though, initial contact, Bleed on the chase immediately. There's the Leer and the dash in as well. Darion wants Star to डालने the नहीं charge, दिया expecting any kind of intel, any kind of utility here from Scars. They just hang back for now. You can see they're expecting maybe an updraft angle or a recon to come in. But Alan, huge pick. He's been crucial in this hold towards the dugout. They have to clear out Darion though. Yeah, he's just been sticking around since dugout. He's ready for this angle yet again. The blades are out. Jemkin flies high. Crystal also with the run it back. And now you have to rely on the lineup of Scary. He has the overstrike strike and the molly. He's gonna lob it first and foremost. Nice. And Scars cannot get any kind of progress. Someone needs to push here from Scars. Yoshi looking to lead the charge. And Nef2 with a different plan. Now the orbital strike is there. But Nef will be found on out. Time. Well, Scars, they get the clear, they go for the push, and there's just no fear from the defense. Yeah, Nef needed to get that भाई एक तो kill. समझ नहीं आ रहा था टाइम है कि नहीं है भाई ये इतना बड़बड़ कर रहे हैं और इन-गेम आवाज कम है Less than a second remained that separated the equalizer. हेलो Such a मैं कब से condition बात on कर रहा हूँ Scars.
and it देखा went माइक down म्यूट to है the wire. So many of these rounds in the first half half time have gone down to a matter of seconds. मैं बोल रहा हूँ And कब it से is कोशिश कर incredible रहा that हूँ Scars समझने have का been able to make it टाइम a है नहीं है 6-6 डिफ्यूज करने के scoreline. लिए Now we पर go for इतना the side swap, and this मतलब is where it gets interesting. इतना Does Bleed have कास्टर्स का enough to ऑडियो था stop और टिक the का ऑडियो Phoenix था ही and the नहीं Jet कि together? कितने Yeah, like what utility do they हाँ, got to really game keep time him बहुत at कम आ bay? रहा They है, have a मतलब recon, they have the molly. बहुत ज़्यादा The overpower smoke, कर a रहा big one है for कास्टर that. साउंड Lear हाँ just to, you know, pull attention, pull aggro when the execute comes. कल नहीं था कल They ठीक था don't आज have a ही gravity well. They don't have a guiding light, anything of the sort. ओह That, at the very least here, Scars do have a bit more to bank on. So you can see Bleed, not the same amount दूसरी of को MSI पड़ रही है in ये कौन just सा नशा है all-encompassing confidence that we saw from them during map number 1. Yoshi there. The I only think Pinoy स्टार्स के लिए on, अच्छा Scars, एक्चुअली keeping the flag up. बहुत अच्छा है 6 ऑल On a Japanese हाँ squad ब्लीड like ने this कभी after 6 all राउंड these दिए years. नहीं है वैसे अटैक And पे while Scars has वही always been very लीड different, का and एवरेज again, you look आई at their थिंक roster. 63% Two मतलब from 8 राउंड Russia basically लेते ही have लेते your हैं heavily हाँ have a Japanese player. They have 2 7-8 राउंड Japanese तो players also there, लेते ही and लेते हैं कभी कभी और they ज्यादा also call them in English. A Yep. Japanese हाँ rep वही एवरेज communicating है in 8 English. राउंड It's pretty wild on the मतलब other side. I mean, Same with Bleed, you know, 7.6 something they have राउंड्स such a लीड का big mixed, roster yeah. of SEA talent. Scars 63% win rate है शायद picking up, you know, talent from other regions. Let's not forget Modski used to be वो भी here. Josh पकड़ो S ना कि also used ब्लीड to ने be on पिस्टल Scars भी for a जीता bit. था तो So हाँ both of these तो उसके बाद भी organizations 6 ऑल really आई थिंक तो ब्लीड ने वहां पे गलती कर दी ना वो बी लिंक वाले प्लेस है ना वो वहीं पे थोड़ा Yeah, वो हो it's जाता not है where you come from, it's how you get Hello. there. And now क्या हाल है Scars साहब and भाई Bleed at a stage that they Room. can सिमर show भाई that आपको they अभी भी are चाहिए the टीवी best शो of the best रिकमेंडेशन of their group. यार Darian अभी तो Doe देख रहा है, denying वो Crystal of कोरिया any साउथ kind of Oh, setup. oh, oh, Same oh. thing to Jamkin too. This was the क्या Darian देख रहे that हो? was feared Mania from East. last year. The South signature Korea. jet getting the 2 duelists already. Darion, huge picks here. The Dragon Rider foaming at the teeth. Angry off those comebacks from Scars, and the answer back here to भाई तो open ब्लीड up ने with a पहले मैं pistol बहुत round तेज 2 मारा है इन्हें picks. बहुत हाँ तेज दूसरा मैप पर बहुत क्लोज चल रहा है साहब भाई आज Pivot to try and go towards his B side, losing both their duelists. नशीला ड्राफ्ट How है do they ना make their way ब्लीड in? They वाला got some भी smokes रेना at least. है Yeah, they're moving So, towards club into the site itself. Crazy guy though. Gets the intel already. ये तो Bleed अपना 5 have मैन the वाला ड्राफ्ट advantage. है They can हाँ। cede control of the site if they want to. The crazy guy, a different plan. नहीं यार, He's looking to इतना go नहीं for है ना, ये holes. कुछ का routing Goes मेरे over यहाँ onto से। the corner. Darion's there though to help on out. A beautiful dart. YouTube And here आप we यहाँ से go अब दिल्ली yet वापस आ again. गए? Crazy guy हाँ। sets things up. And Bleed Esports ready शाही भाई to की knock दाल नहीं things गिर रही down. दिल्ली में Thoroneko in the shadows, playing inside the दाल smokes. जल रही But है। he's caught by Bleed. फिर The मुंबई में lead आई stays मीन with him. Bleed keep the lead. कब तक रेडी होगा साहब भाई Crucial pistol एक round. हफ्ता। They needed to अच्छा start swinging some momentum back their क्या way. रेडी That होगा was रूम the swing मतलब घर that they were Yes. hoping for. क्या बात है Isolated in these Shift fights, हो जा could रहे हो not connect मुंबई? their shots to Obviously. Sheriffs. Much better than they हाँ। स्ट्रीम पे हाँ anticipated at जस्ट that बता range. दो हाँ पहले As you said, स्क्रीन पे beautiful आगे कुछ scan. बोले उसके All पहले three पता है मुझे। confirmed where their positions were. साहब भाई हम अच्छे लोग हैं हम डिस्क्लेमर दे देते हैं अरे मुझे Yeah, पता है that's तू why स्ट्रीम you कर रहा है want to put चूतिए crazy है guy on obviously that मुझे पता तू कर रहा Sova. है A single scan, I he already knows know. exactly where to get तूने the कल किया maximum काली value. के इससे And in a Yep. state like Uh-huh. this, looks like we're in a bit of a timeout. Scars, they have to rethink a few of their plans moving on to the attacking side. It was just so different on the defense. They knew that Bleed was going to barrel down on them. But now in this half, it's more of the backline that they're worried about. सिमर भाई की For भी the बहुत scan. यादें जुड़ी है ब्लीड And के you're साथ right about that backline because ए Juicy भाई actually hasn't had Yeah. himself a सिमर good की game. क्या आदत He's हो on रही है 6 ब्लेड के frags साथ right now. Bottom frag in भाई his team. बहुत It's all about the kills, obviously, बहुत but when फन है you're वो Arena, गेवन वाला तो मैं जिंदगी में it याद उनकी poses वजह a से मैंने bit नया लाइनअप more, बनाया था रे I guess, है problems on देखो your पता क्या squad हुआ if you can't क्या get that Arena हम going करते because थे half इनसे of your हाँ utility, और अच्छा खाता जाता majority था of your ऐसा नहीं utility है and पिटते थे abilities अच्छा can खाता only be जाता था used after 14 getting a kill ऐसा anyway. और So हाँ जीते भी हैं how do बहुत they बार enable that हाँ more? अब Maybe now on this side of हेवन the खेल रहे field, on the defense, प्रैक्टिस चल रही है they can get ये भोसड़ी Juicy का in the बी पे positions बंदा इनका where कौन वो a क्रेजी का होता था ना retake देख or anything of the sort, he वो can chime into a भोसड़ी का fight, मैं dip ए back पे out of लाइनअप the दे रहा हूँ smoke, मेरे को but मैं they can पूछ play काले से काले a क्या retake चाहिए with देखो advantage, something ऑटम like से that. Yeah, but the ऑटम post कह रहा है plan मुझे still शॉट from चाहिए Bleed. या तो There's एलोंग always चाहिए that second तो plan. ऊपर They चढ़ have के the पत्थरे से incredible करते हैं stall ना from Scary. He's top fragging right वहाँ now, से and it's दो a दो big लाइनअप आते हैं reason मुझे
why ठीक है? he's getting हाँ। these सब orbital वैसे ही strikes करते हैं at the पत्थर के ऊपर most चढ़ के वो जो पत्थर के ऊपर opportunistic चढ़ moments. के We can't forget that मैं first half. बहन चोद Got that बात kill, उसको went रिकॉन for दे the रहा हूँ laser beam, मैं and it स्पैम में was मर जा quite रहा a हूँ show स्पैम में मर from जा रहा him. हूँ At the very भाई least, इतना recovery भोसला still हुआ है possible इतना here भोसला हुआ है for वो पीछे Scars. परफेक्ट स्पैम They are, मारता of था course, on the 4 बुलेट eco. का And Bleed सीधा हेडशॉट Esports खा रहा हूँ सीधा trying to -90 yet again -100 put a 2-1-2 split and
नॉट टिल्ट हुआ है, मैंने डब्बे के वहां से 2 रिकॉन और बना दिए। मैंने कहा अब मार तू मैच, इतना टाइम मारना है। अच्छा है ना उसने तेरे को फोर्स किया नए रिकॉन सीखने पे। भाई पूरा स्क्रिम छूट गया भाई उसके, इतना टिल्ट हुआ ना मैं वो चुपचाप करे थे। और वो पता कैसा करता था, मतलब समझ रहा है वो टाइमिंग उसकी इतनी नसीब अच्छा है और मेरा नसीब इतना गांडू है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेट राउंड में रिकॉन दे रहा हूं ना, जाके लेट राउंड बिल्कुल लेट Neff there for हाँ। cover, but 30 सेकंड के बाद Juicy's been waiting, and eventually he'll get the takedown. Wants to isolate these fights, but Allen, that's a big shot here. 3v2. It's bleed now with the lesser numbers. Yeah, they're all low. Luckily, उसके वजह से सिमर भाई को shock dart confirmed. Martyred him. हाँ 1v1. ओ भाई ये राउंड कैसे हार गए प्लीज। खेलेंगे ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे, ठीक है? Here from Scars, they just rotate towards the connector, move over to that A side, and they just didn't push the envelope until it was the right time. They saw the smoke start, मैंने they're की तरफ ऐसा ना waiting, शक्ल but देखी और फिर something was पीछे मुड़ के amiss anyway. मैंने कहा And they व्हाट found दिस इज Juicy. स्ट्रक्चर That's नॉट the स्पीड। biggest problem there for Bleed Esports. Still need to get those kills just to try and chain things up. But a find by Scars in the end. डब्ल्यू तो आते थे। One thing I haven't really seen Juicy, not that I know any तो better, भाई but we just पर I haven't वही really बंदा seen him दबाता था use उसको a खुली kill खुली as a छूट थी। buffer. हाँ What I mean उसको as a खुली range छूट is है, that वो समझ sometimes आ you जाता have था to मुझे dismiss क्या immediately. जैसे हमारे यहाँ काले भाई को थी। And you can use that as a buffer to see what your safe zone is for a few seconds. काले कौन है ऑटम। And that's just something we haven't really seen him individually pull off here. शॉर्ट स्पीड में नाम The Scars have हाँ just तो केल था finding every मतलब way काले to भाई punish him. बेस्ट। He's the one now hurting on the economy. At least have the Marshal यार here मेरे को टिक्स for का नाम Darion अब to go समझ for में the आया save, सिमर भाई। actually. And उसका नाम Scars टिकिया रखना चाहिए go था। for mid yet again. हम They छूट want गया to है, go. मैंने छूट Plan रखा for करा। Crystal and Jemkin when the spikes all the way on टिकिया। Yoshi's hands. Quick little regroup as they move towards Link, and looks like मैं B-side तुम्हारे being सामने the उसको call उसको here. नाम मैंने उसको दे रखा था, मैंने कहा दिस इज अ परमानेंट नेम फ्रॉम नाउ ऑन। शॉट भाई। Great shot. Off of ये Darion. देखो See ये if he can स्मोक देखा। provide more. Yeah, Bleed can work with whatever they ये have. but स्मोक इसके Toro सीटी जाने के Neko लिए। अरे गॉड शूट तुम हमसे आगे चल रहे हो, तुम gets ना that स्पॉइलर takedown मत दो। onto the side here now भाई for मैं Scars, and तू they पीछे चल रहा है even सिमर, get मैं तो Snap गॉडस्पिड से भी too. आगे चल रहा Keeping हूँ। tabs हाँ, on the तेरी high stream देख रहा हूँ ground. साथ-साथ में। Struggling to make their way towards इसीलिए। Spike. Juicy though, that's big to kill Yoshi. Only मैं तो problem भाविन की स्ट्रीम देख is रहा हूँ, the भाविन को bar. एक व्यूअर और दे It's रहा हूँ, वॉच been टाइम दे रहा हूँ। stopped. थैंक यू शाह It भाई। has been a struggle for आप Snap नहीं to होते get तो back इस in a good दुनिया में position. अच्छाई कहाँ जाती। वही तो पॉइंट है, अच्छाई कर करके मैंने अपनी मुड़ मरवा ली ना लोगों से। काश नहीं करी होती अच्छाई, बुरा ही करना चाहिए। Amen That doesn't सिमर smoke भाई। off heaven, but the idea there जिस is to जिसका अच्छा force किया वही गांड मार Juicy के into गया। the corner where they can anticipate the peak. Yeah, Scars is just way गांड too तो सब lead मारते to हैं, run जिसको into भी तो, them. जिसका अच्छा करो They या have बुरा करो। such strong तो setup चार so चीजें far, बोलते हैं such a यार। good position. It's also one way. Yeah, Toro Neko's ready for ये बात तो anyone who सही comes है। from the high अच्छा ground. बोलो या Even बुरा बोलो spotted out सिमर by भाई, Jemkin तो doesn't होना ही था। allow the leer to मतलब be unleashed. 3 for Toro गांड तो Neko, गांड है। and the lead वो तो goes to Scars now. जाती है। Scars retaliate. I have made peace तुम with it। कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कुछ वॉक वॉक उधर कुछ एक्सरसाइज कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा तुम्हारा? हाँ चल रहा है इधर। लौड़ा चल रहा है तुम्हारा, तू क्या कर रहा है? मैं तो गॉडस्पिड भाई का सोना चल रहा है बस। मैं पता है मुझे कुछ नहीं चल रहा है। ऑन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम पता है ना मुझे, ना वॉक ना कुछ, हेल्दी खाना भी नहीं खा रहे होगे तुम। नहीं नहीं खाना है घर का ही खा रहा हूँ सब घर का। अच्छा मतलब वो एग्री कर लिया कि कुछ चल नहीं रहा वॉक वॉक में, पर खाना हमें घर का खा रहा हूँ। अब थोड़े टाइम में वो भी चेंज करेंगे, सिमर भाई से। थोड़े टाइम में वो भी चेंज। बेशरम हो, तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था तुम जाके वहाँ पे करोगे ना। मैं करूँगा बिल्कुल। कब करोगे? एक 1 महीना हो गया छूते हुए हमें। सिमर भाई मैं सही हेड स्पेस में नहीं था। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना कोई भी सही हेड स्पेस में नहीं है अभी, समझ रहे हो तुम? भाई जूसी पागल हो गया है क्या, पूरा मॉली में जल के मर रहा है। हाँ हाँ उसको नहीं फर्क पड़ता, वो बोल रहा है मेरे पास एक ही स्ट्रीम बचेगी, मैं मार के ही ले लूंगा। Done for this round. Crossing the divide though, gonna be the call here. Scars trying to separate Bleed away from themselves. And here बात तो comes सही है Crystal सिमर भाई। Allen too. They find out that it's बेशरम हो भाई, 3v3. तुम Crystal promises भी पूरे नहीं laying करते। right beside this wall. There's the shot dart. There's the knife too. Darion. ओ भाई He got वो ब्लीड slashed मॉली से in. मर गया, वो 5 जूसी HP मॉली से now मर for गया। Crystal. हाँ भाई। To regenerate तो just a हिला little अच्छा bit हुआ था, with the आई blaze सकता wall itself. But Bleed, they want to get in there. Crystal still has no fear. 3 for Crystal. Darion's up. Gets that shot. But can he go for more? Not ये मैप gonna गया हाथ happen. से। Scars again denying Bleed. And they hold on. अब Crystal, स्टार की huge ब्लीड की round तरह for खेलेंगे। him.
What a gem they've been able to pick up and keep this player coming in. मेरा सवाल ये है, क्या मैं ये गेम के बाद टीम डेथ मैच खेलूंगा कि एक रैंक गेम खेलूंगा? रैंक गेम मतलब 2 नहीं होने वाला है। Even before Scars, हाँ for them to stick around and stick together. Look at what it's provided. आ गया मेरा भी है। अबे क्या चूतिया पे ये पर बेंचो, ये एसेंडेंट 1 पे क्यों डाल के छोड़ दिया इन्होंने यार? They thought they had some time to set things up and time their swings अरे भोसले के कल ही तो तू पहुंचा था when you're facing up against Scars. वही तो बोला, ऐसे मेरे को लगा तू बोल रहा एसेंडेंट 3 मैं भी आ गया हूँ। नहीं मेरा उनका रैंक अप है, फिर तो रैंक डाउन करवाते हैं। उसके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है यूजुअली वर्ल्ड में। हाँ साई भाई का रैंक खुद ही डाउन होता है। मैंने सिमर भाई का नसीब बहुत क्लोज से देख लिया है रैंक में। Tagged up already by the drone. Darion's blades are looking sharp. The crystal. देख लिया ना तुमने गॉडफील्ड में, तो झूठ नहीं बोलता था, देख लिया ना तुमने कैसे आते हैं लोग रैंक में। मैं इज्जतदारी में खेलूं, सब करूं, क्या होता है। To make that 3 for them immediately. Rifles being popped up as well, but Jemkin's there towards the corner. Gets a double kill before he's felt. 1v2, it's all up to Toroneko. Facing him off against Scary. Juicy though getting halfway done. There's the molly though in the play. Scary, there's the swing too from Juicy. And Bleed Esports do bite back. यार एक तो साउंड ही नहीं आ रहा स्पाइक का। हाँ भाई समझ नहीं आ रहा। ये गाना नहीं सिमर का, ये गाना गाओ। It's magic, it's magic. इतना मैजिक हो चुका लाइफ में। What's up boys? What's up bye? आया सेल्फिश। Selfish? मैम जैसा सेल्फलेस प्लेयर मैंने देखा तो सेल्फिश रंग बदलू आदमी है भाई। And it's also supported or crafted through by मैं फोन कर करके बुलाता हूँ, ये बड़वा 5 में स्टार्ट कर देता है बिना फोन करे, तो याद हो। कहाँ क्या किया तूने, कब तूने आज तक कभी फोन नहीं किया ब्रो खेलने के लिए स्पेशली? अच्छा तूने अलग-अलग चीजों के लिए फोन किया बट खेलने के लिए कभी नहीं किया आज तक। नेवर वंस इन योर लाइफ। अच्छा कब आज सुबह क्या 5 मैन खेल रहे थे तुम लोग? कल रात की बात कर रहे, अभी मैंने कल रात की इसकी इंस्टा स्टोरी देखी। ये गुरुद्वारे गए तो मैं अज्यूम करूंगा ना भाई इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। पूछेगा ना, तू पूछेगा ना कि ये कब आ रहा है, कुछ एक होता है ना दोस्ती यारी भाई। ऊपर से तू तेरा डैड आए थे इतने टाइम बाद, भाई साहिब भाई गाड़ी फोन लेके तो गया हुआ है, मैं क्यों अज्यूम करूं? मेरे को लगा आज रात तुम लोग जाओगे डिनर समथिंग तो मैंने बोला वो तो देख गया और आ भी गया मैं, यही तो पॉइंट है। तो तू आया भाईचारा, जब तो तू भाई को बुलाया अगर तू पूछेगा नहीं तो। साहिब भाई तूने कभी मेरे को फोन किया है 5 मैन खेलने के लिए? आ जाओ क्या भाई। मादर चोद नहीं किया देखो, मैंने मादर चोद। तू तो भाविन बोलियो मत बिल्कुल भी। अरे इतनी बार किया ना देखो, तो मैंने और एक चीज ये है ब्रो, जैसे तू आया हम लोग ऑलरेडी 5 मैन थे लेकिन स्लॉट बनाया कि नहीं? देखा स्लॉट बनाया नहीं, भोसले वालों खुद चला गया। कौन चला गया खुद? वो काइजन। तेरे को पता है क्या काइजन खेल रहा था ब्रो 5 मैन, वो अपना 5 मैन 2 मैन सोलो, हमारे मैच के बाद वो सोलो खेला है, उसको मैंने मैसेज किया प्लीज नाइस रेड एरियन शॉट। वही चीज है ना, कदर प्यार करता हूं। कदर नहीं है भाई, यही है। ये बात सही है, कदर नहीं है, कदर नहीं करते। अरे तुम्हारी तो बहुत कदर करी है गॉडफ्रीड, जितनी तुमने करी थी। तो मेरा लाइव देखा है, लाइव। ओ मैंने हमेशा कदर की है। तुमने करी है, वही तो बोल रहा हूँ, तुमने हमेशा करी है। तुमने जिसकी करी है उसने बहुत कुछ करी है। गोपी नीचे क्यों बैठा हुआ है? गोपी को बुलाओ भाई। वॉच पार्टी में थोड़ा स्पार्क तो डाले। सिमर भाई बोल रहा है वॉच का तो मेरे को नहीं पता, पार्टी तो है, पार्टी मैं कर दूंगा। पार्टी तो है यार, पार्टी हो रही है। चलो इसके बाद एक 5 मैन ही खेल लेते हैं ओजी के गेम के पहले। ओके या ब्रो यार आज तो नहीं, आ जाओ लॉबी बना के तैयार रहते हैं ताकि जैसे ही गेम खत्म हो वो कर दो। कौन जीतेगा गाइस? ओजी जीतेगी, ओजी। हु आज मेरे को लग रहा है ओजी जीत जाएगी 2-1। तुम लोग बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। सिमर भाई आज आपके मुंह से सुनना है कौन जीतेगा। ओजी का डामन। ओजी जीतेगी?
नहीं आज मैं दिल से बोल रहा हूँ, OG 2-1 जीतेगी, देखो पक्का। OG 2-0 जीतेगी। नहीं ये सुन लो, मत कर यार, मत कर ये साए यार। तू क्या कर रहा है भाई? यार हमारी देश के लोग हैं। हो चुका है भाई पर मैं समझ गया हूँ मेरे से ज्यादा मनोज कौन है। भाई मैंने जो गाइस 500 लाइक तो पूरे कर लो, शर्म आ रही है। हाँ बोलो। मुझे मैं बताता हूँ ये क्या किया गॉडस्पीड ने, इतनी मनुष्यत लाइफ में नहीं देखी। हम सारे बैठ के ठीक है, हम टीआर का मैच देख रहे हैं। टीआर वाले लोटस जीत रहे 7-0 आरएनजी के सामने। अभी तक याद है मुझे 7-0। निक बैठा है, मैं बैठा हूँ, वो सब बैठ के मैच देख रहे हैं और हम शालू भाई चिल्ला रहे हैं। 7-0 पे गॉडस्पीड बोलता है ये तो मैच खत्म है। अभी आराम से क्या बोला था तुमने, क्या बात करती थी, ये क्या होगा 10-2 ऐसा कुछ बोला था तुमने। 7-0 में जैसे ही बोला ना भाविन, हाँ सामने वाले आरएनटी वाले फुली को क्लासिक 7-1 होता है, 7-2 होता है, 7-3, 7-4, 7-5। भाई मैंने शक्तियाँ देखी है भाई। कोलकाता की शक्तियाँ। देखो भाई, ये बात भी बोलो, मैंने विन भाई और टीआर को बहुत कड़ा सपोर्ट किया था उस समय जब भाई सबने किया था, पर तुमने जो 7-0 पे लगाया था ना वो, पर जीते ना। मैं याद मैप कौन जीता भाई? हम ही जीते। मेरी शक्तियाँ राउंड स्पेसिफिक है, आपकी शक्तियाँ वर्ल्ड वाइड है। साहब भाई मेरे टीम में लिख रहे कर दिया सिमर ने कर्स हो गया अभी। अरे जीतेंगे भाई, मेरा कर्स बस कुछ नहीं है, मेरा कर्स खत्म हो चुका है बहुत पहले ही। ये तो मैं मान ही नहीं सकता। क्या किया मैंने, बता रहा बताओ। मैं कुछ नहीं बोलना, मैंने कुछ नहीं बोलना। वो थोड़ा याद आ रहा है तुम्हें, कुछ हुआ था क्या? गाइस मेरे पैर में चोट लगी है, मैं फिजियो के पास जाऊंगा, तो मैं सुबह नहीं आऊंगा, मैं रात को आऊंगा। मैं रेकनिंग वाला मैच मिस करूंगा। हाँ रेकनिंग में तो हम डाल देंगे, उसकी चिंता नहीं है। आगे बोलो गॉडस्पीड, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बड़ा घड़ा भरा हुआ है पेट। मैं उतरा फ्लाइट से, चल रहा हूँ, टूटा पैर लेके बहुत हालत खराब, फिर भी चल रहा हूँ। अचानक से निक का फोन आता है, Did you see the match? We lost. मैं पूछता हूँ one map? ओ भाई हेलो, उसमें मैं नहीं बजा था, तुम्हें भी पता है कौन बजा था? मेरे पे मत डालो। नहीं पर आपने ये बोला था ना मेरे को। मैंने ये बोला था तो अपने हाँ पैर का ध्यान रखो। मैंने ये लाइन मारी थी। रेकनिंग को तो डाल देंगे। ये मैंने लाइन मारी थी, पर बाकियों ने क्या मारी थी? बाकियों ने तो इससे 20 गुना ज्यादा बोला था। ओ मैच चालू हो रहा है, मैं फोन पे हूँ, स्पीकर पे। हम लोग बात कर रहे हैं मैप के बारे में, पीछे से आवाज आ रही है, अभी going to storm them, we're going to storm them. ये वो He's the one anchoring down this B side already. वो तो बहुत बढ़िया था। What by the farmer? Not only that, the cost divide is the मन्नू कहता है, इंटरव्यू में बुलाता हूँ। At the opposition, the lockdown already used here by Nef though in anticipation. Oh look at this, right back. क्या बात है यार, लेकिन काले भाई। काला बहुत बढ़िया। They do have the cosmic divide set up, but the lockdown gets two. Yeah, now this is the signal where Crystal has to fight back. Toroneko the same kind of thing. कर दिया उसने अब। 2v2 now. मुझे तो बोल रहा था। Still don't get the कर ही नहीं है उसने। कल रात तक तो नहीं की थी उसने। उसने नहीं करी है अभी तक। उसका यही है कि उसको थोड़ा टाइम रखना है। Juicy can prioritize an initial target here. Turret though gets the spot. Juicy देखो रुकेगा तो उसके लिए बेटर है। Goes for the Lear. Finds Chepkin, that's huge. The dismiss now to get in position. Re-peeks. The turret gets a spot yet again. Doesn't know Alan's there in position. क्या कर रहे हैं? ओ भाई जूसी भाई बेचारे का वैंडल होती तो एलन का बॉडी शॉट काफी होता भाई बुलडॉग। And we're just living in it. The reign of the Empress coming in big when it matters the most. And he has certainly established his kingdom on towards that B-long lockdown, killing the momentum of the attacking Scars, and a single round away from match point Bleed R. एक जन लिख रहा है साई भाई ब्रेन वॉश करके वापस ले। हेलो बम कैसा है? But yet again, Bleed remembering this is their turf. This is भाई मेडल esports मैनेजर। क्या भाई बम्बई लाइनअप भी रिवील कर दो मेडल स्पोर्ट्स की जल्दी जल्दी। मेडल स्पोर्ट्स
That lockdown there from Net. हाँ. So much वो value. VLT The way that VLT Crazy के था Guy अभी वो. swung that Cosmic Divide was huge to go for just that timing. कर दिया ना. Bleed here. अच्छा हाँ. They are playing pretty tactically sound, but साहिब आपको पता है क्या मेडल की लाइनअप क्या है? नहीं. how they play. क्या बोल रहे हो सिमर भाई? हम लोगों को कैसे ही पता रहती है, न्यूज़ तो आती नहीं है. यहाँ पे शालू है जिसको सारी न्यूज़ आती है मार्केट की. अच्छा अच्छा. भाई मैं समझ तो गया हूँ भाविन मेरे पे कुछ किसी का चढ़ा हुआ है. मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ कांड. तेरे को बताया भाविन नहीं बताया. तुमने ऑटो से खारकर जा रहा था किसी के साथ बैठ के, ठीक है. वो भी कहता है कैब में जाना है ऑटो में जाना है. मैंने ऑटो में जाते हवा खाते हुए नहा खाते हुए या ऑटो में क्यों जाना है. नहा धो के how does he even get that kill? And here comes Crazy Guy. It's not enough though. The double swing there from Scars. Now it leads to a 1v3, and all eyes are on Neff instead. He's waiting for Scars to retreat back his way. Flicks on over to get that takedown. Loranek was solo already. Here we go yet again. Can't bleed. Get the 1v2 done. Neff though with another sword. Good stall from Allen in response. Scars getting into safer position. They know they can use the ability to try to this wall. But now the sword's broken. Loranek goes wins, but he's dead. 38 left. Neff, he's trying to survive the turret. There's the swing right now, but Allen knows a single bullet to get a round going for Scars again. A wild spray connects in the end, keeps Scars alive. पूरा away from मैं बैग सब गीला. I was so close to the peak there coming from Tornado. हंसी जा रहा है बैंचो में टिल्ट हो जा रहा हूँ. भी कह रहे हैं तेरा कालू नसीब कैसे किसी का हो सकता है. वो ऑटो वाले भैया भी हंस रहे क्या हो भाई. तू नसीब देख मतलब कि कैसे हो सकता है भाई. तुझे हवा खानी थी तो पानी भी मिल गया, नहा भी लिया तू. बस हवा पानी दोनों का बंदोबस्त हो गया. सिमर भाई आपको बोला गया ना कि आप पूजा करवाओ. मैं बोल रहा हूँ भाई मैं कितनी करवाऊँ. और एक काम करो कलकत्ता आओ यहाँ पे अच्छा वाला पूजा. नहीं कलकत्ता तो बिल्कुल नहीं जाना. अच्छी वाली. हाँ पूजा के नाम पे क्या करा देंगे पता नहीं. नहीं काला जादू वाला तो कुछ नहीं होगा. समझ में भी नहीं आएगा. एक तो बोल क्या रहे. अरे मेरे बिल्डिंग में हुआ था पता है आपको. तेरे को तेरा डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ बोलो, डेट ऑफ प्लेस और टाइम याद है? I don't think so. Oh, they're not ready for it whatsoever. Jemkin not looking the right way. They see the barrel low, and Juicy jumping the gun. Here comes the blade as well. Juicy now stepping on the way. They're gonna provide the cover, and here we go again. Front line looking strong for bleed. Crystal though catches out Neff in response. An opening perhaps, but the Hunter's Fury from so far away, a different postal code. But it's still bleed sending it. Out of nowhere, that connects to a Crazy Guy. He has timing of this as well. Alan, he has to get this big. He's not even ready on the भाई Alan भाई ने उड़ा दिया. Apparently he was, and he even ready for more so of the action. 2 for Alan as Bleed tried to recover. Lockdown though broken by the orbital strike. Here they come from the high ground. Scary, at the very least, trying to assess the situation. Alan though back into the hallway. Crucial round. This is big. He has to work with at the very least. मैं जब बॉम्बे आऊंगा मेरे को लेके चल. समझा ना मैं किधर कह रहा हूँ. मुझे कहला कह रहा था. हाँ बेस्ट हम बोल रहे हैं. खत्म हो गया? नहीं आओ कर रहा था कास्टर तो मैं भी बोला हम भी करते. 12-10 भाई. गोपी भाई आए क्या लॉबी में? यहाँ पर 3 ही है. गॉड स्पीड भाई तो चालू ही नहीं कर पा रहे गेम. नहीं होगा रे गॉड स्पीड. नहीं वैनगार्ड बंद कर दिया मैंने भूल से. Scars, even with the heroics of दाल Alan, just could चावल. not make it दाल happen. चावल. यार आंटी मुर्गा. के हाथ की चावल और वो सोयाबीन वाली सब्जी भाई ज्यादा क्या है. खाना बनाती थी क्या आंटी यार. सोयाबीन की सब्जी थी यार. For the past few rounds, छोले and a भटूरे timeout क्या actually बनाती थी called छोले the आंटी. lead in this भाई. regard. They are barely winning कौन these आया? rounds. गोपी They भाई are आए क्या? slipping by because of the heroics of चट्टी Scars खोलो here. HellrangeR. आजा गणेश जल्दी एक गेम खेले. एक गेम खेले आजा जल्दी 5 मैन. अरे अभी तो Just different स्ट्रीम ideals बंद कर क्या है भाई इसके लिए and स्पेशली different play हाँ तो styles. नया चालू नहीं किया है ना अब तक. कर दिया नया अभी क्यों चालू कर दिया? वॉचपार्टी करने के लिए. हाँ तो 40 मिनट बातें कर अकेले में. हम लोग तो एक गेम खेल लेते.
गेम खेल सकता हूँ। हाँ एक खेल सकता है ना, गेम चालू होने के पहले तो खेल सकता है, जब पर रुक जब ब्लीड वाला गेम होने के बाद। एक सेकंड मतलब भाई ये बहुत नशा करता है। मैं समझाता हूँ, सुनो, जब डाउन टाइम है ना मैच का तब खेल सकते हो, जब मैच चालू है ना तब वो स्ट्रीम पे गेम नहीं खेल सकते। आप कौन सा वाला फूकते हो थोड़ा सबको बता दो। भाई गणेश, तू ब्लीड वर्सेस स्कार्स के गेम को स्ट्रीम कर रहा था और गेम खेल रहा था। हाँ पर इसमें 40 मिनट है, 40 मिनट है अभी, इसके लिए एक गेम खेल रहे हैं, आजा जल्दी। ठीक है ठीक है। Guiding light now, trying to go for a bit of intel Shalu. towards Art, but Jamkin here, Blades immediately lose. It's make or break Broman if they can actually make their way towards that A site. But look at the utility setup Shalu. by Bleed already. It's perfect to catch out that WhatsApp cross. देख। भाइन भाई जी का मैच कब है? आई थिंक 17th को है ना गणेश? 17th को है गाइस, गणेश को नहीं मालूम, मेरे को मालूम है। हाँ भाई मेरे को मालूम नहीं है। Yeah, stellar trade and Allen 2 on the board opens up avenues here for Scars to go to that B site. Yeah, that's what they needed here. Crazy guy being taken on down by Allen. That's huge. They now should तो have मैच that B लगा site के रख control. लगाया ये मैच? क्या हो गया? भाई ये तो ओटी जाएगा पोपा। नहीं This could be a नहीं different story. Yeah, timing here, but Scars with the clear. Well done to be noticed by Yoshi. And this will be a safe 13-11 जा रहा है base. ये They game। want to keep the operator for the next round. मैंने Yeah, अपनी they मम्मी need से an operator. पूछा Look ये at सब their डिटेल जो economy, शालू got the मांग best रहा one था। up, coming into the मैंने final लिखा one थैंक्स, regulation. So मम्मी आगे से लिखती है माय प्लेजर। Bleed. They're gonna let this one pour. 10 उनको लग रहा होगा बेटा शादी वादी के लिए कुंडली बनवा रहा है। Scars. मम्मी को बता दे, मम्मी लड़कियां बहुत है, चूज करने में टाइम लगेगा। Overtime once more a possibility. Yeah, I'm just looking at some of the score lines so far. The closest we've ever seen between Bleed and another team was against सिमर भाई Extend. क्या पता Going शादी to से आपका overtime, वो हट but जाए दोष। Juicy being hunted. Scars knows they want to get rid of his Crystal operator will get ASAP. Scary though with the takedown. आओ This is कलकत्ता some आओ, good damage रिश्ते- done here by Bleed on the exits. Crystal though on the board. Scary with 3. भाई बेचारा स्कैरी भाई, भाई एक शॉट नहीं मारा है जूसी भाई ने। To catch out Crystal there in the end. ये They राउंड lose अगर the स्कारजी operator, जीत गई तो and हार Scars, जाएगी। they went hunting truly. Feels more like a game of Monopoly right now. ये राउंड अगर स्कारजी जीत जाएगी तो हार जाएंगे। कौन सा गत्ता? कहाँ अगर कहाँ जीत गई का? तो हार जाएगी। Look at their buy, a bulldog. बी गई तो हार जाएगी। मैं सुन रहा हूँ ये राउंड स्कारजी जीत गई तो हार जाएगी, मतलब क्या हो Look at गया? the replay. Scars have just been putting utter importance into making sure that Bleed are as unequipped as possible coming जीत into the बोले final. जीत This is बोले। scrappy here from इस Bleed. साला They कप नाम need दे। to go for it, the fight as soon कोई as साला possible. कप हमने नहीं Juicy होने though, वाला। backing on away immediately बात तो as सही। Scars get that मेरे को game लगता है control आरसीबी को going. कप भी They खरीदना have to be पड़ेगा। very careful. भाई They जब still मैं have the खेलूंगा ना cost to आरसीबी buy तभी though to जीतेगा utilize भाई। if ever. मेरे को तो लग रहा है, मेरे को ऑफिशियल True rifle सब on कुछ Bleed तो is लेना on है, मेरे Juicy, को so आरसीबी all का eyes पार्ट on बनना है him, कुछ how भी he'll करके तभी वो perform लोग in जीतेंगे। this round. Can he get गाइस something going 10 ईयर से when सपोर्ट they कर need रहा him the हूँ। most? Small As lineup that तो है। Reina dips in and out अभी of देख the गणेश fight, तो those एलसी type क्यों of जीत things जा, are फिर crucial. आरसीबी वाले को बोलता हूँ मैं Fall लेने back को up भाई तेरे मैं को। तो ट्राई करूंगा भाई। Initial एनीबॉडी हैव लीड्स contact. टू आरसीबी प्लीज। As he said, the Hook me up. conflict divide here. How do मैं you जानता हूँ utilize एक it? जन को जिसके पास है लीड Smokes are there सच though में? to try and हाँ। dissuade this initial push. The Molly's तो there. तो ऐसा मेरे को बोला गया है। Jamkin मेरे को and मैंने Crystal कभी देखा नहीं है पर ऐसा मेरे मेरे को को और बोला स्किल्स को डैनी सेट के बाजू में रख दो बस। Still होगा। trying to hold towards the dugout here. know? Disengage. सिमर भाई को Do they पता know? होगा। Do they सिमर find भाई him? And the double up is हाँ, enough. पता Then है, for पता Crazy है। Guy though. सिमर भाई Fighting को on दिल्ली back. डेविल्स Getting का an effective एक rate. The घंटा नहीं lockdown पता है, 2 मैं here क्रिकेट नहीं from देखता Bleed था। अरे Esports. उस दिन And तो Neff with इसके another सामने one. था। This is huge from Neff. VIP Finding बॉक्स the में मैं targets. टीवी में देखा। The lockdown about to pop soon. The Blaze is there though. Keeping now. Building upper. The graphics as well. Stop the confusing time. 2v2. बात ऐसा Here we go, बोलो trying to कि hold उनको things खुद को down. हजम नहीं मुझे है। खुद Shot आता Crystal with a third. Neff getting halfway. He's so low on the HP already. And it's going to be मैं तो too सच बोल रहा हूँ। difficult ओ भाई, to ओ stand ची। versus Scars. We go to ओ overtime. किधर है भाई? निखिल जीत गई ना। And one of the most anticipated हुआ नहीं matches है of the group stages. ओटी ओटी नहीं होगा भाई। Here for the second ओटी हो तो map गया of the 12-12 हो series. गया भाई, कौन सा नशा कर रहे हो? You can tell हाँ, Sirius यहाँ 12-11 Blaze को is चल now रहा on है भाई Blade. स्ट्रीम पे। No अरे भाविन one भाई was का यार ये on बार बार on लाइव से पीछे चला जाता है यार Fracture, पैंचो। Scars इसको giving किक them a करो fight. गाइस, Yeah, इसके it's साथ been वॉच पार्टी नहीं clinical कर। for Bleed in that first map, but here तब on भाई आप भी वॉच second, पार्टी कर रहे हो? even नहीं यार, Bleed Esports is ऐसा taken कैसे aback होगा? मैंने by permission how नहीं well ली। Scars is fighting back भाई भाई against आपको them, and permission it's just चाहिए that क्यों? mentality from Scars. Never lose that kind of confidence. You always
always see Crystal trying to make that space and get in there. लोग And हमसे then even the permission लेना backline, चाहिए. Allen has just been absolutely clutch. Toro, Neko as well. These are the नशा है नशा है Jemkin, and ये they're सब now पोपा जी की at the गलती है मैं forefront तो बहुत instead. इनोसेंट था इसके साथ रह रहे हाँ कैसा होगा भाई तुझे पता नहीं है रोसी अनलीश द बीस्ट हो चुका है पोपा जी का तुझे हाँ पता मैं नहीं वही है तो बोल रहा ये हूँ क्या क्या कर रहा है आजकल तुझे आइडिया नहीं है भाई हाँ क्या पोपा कौन सा वाला सप्रेस पे सप्रेस कर रहा है लोगों को भाई बहुत सप्रेस कर रहा है लोगों को अभी हो गया ना अभी गेम निकाल दिया ना वन टैप को बेचारे को सप्रेस कर दिया कल मैंने किया नहीं किया We've नहीं seen किया them try तूने this out before. उसके though. गेम प्ले ने Going उसको for the सप्रेस spam. किया बोविन भाई का सच्चाई आ रहा भाई गॉड स्पीड ये पागल हो चुका है ये रुकता नहीं है अब ये इसने अच्छा है लाइन ना? मारी थी और ये एनिमीज लिविंग अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस इसने को लाइन मारी थी इस बार जिस दिन मैं छोड़ूंगा इसको तू देख नो फिल्टर हो जाऊंगा भाई सब भी ऐसा नो फिल्टर हुआ है अच्छा है ना? अच्छा है भाई सुनो क्या क्या बोलता है ये लोगों को पेपर सुनो बताओ भाई मेरे को तो मजा आएगा सुन के। भाई सच्चाई बोलता हूँ मैं ओह शॉट भाई डेरिया वो क्रिस्टल बोला इससे कांटेक्ट पे फ्लैश पिक करूंगा उसकी भी गांड फट गई बोला नहीं करने का Again, the Lear to try and clear out these closer angles, but Crystal now with the flash, and Crystal looking clear here for Scars that they're fighting back. Juicy though on his own rampage. हमने डेरियन को सिखाया था 2v1. शाहरुख The खान कौन Odin है। is the only one still standing. Spots out Nef though, lets it rip. Juicy अरे now भाई, trying to आउट find अरे things. उसका कुछ देख ही नहीं रहा प्लान Out करने in के the लिए वो open. एलन He wants to catch Allen. अरे ओ भाई Too एलन many ने निकाल bullets. दिया And too much क्या clutch कर रहा here है for भाई Allen. 13 to 12, it's Scars on map points. दो तीन खोल रहा है वन टू वन चलो देवा क्या हाल है? साई भाई का एम साई भाई का गेम साई भाई का फेम दिल्ली कैपिटल्स ओनर बोलते भाई हम लोग का 5 मैन रेडी है प्लीज स्टार्स ये राउंड हार जाओ प्लीज काट ये राउंड हार दो। the fuck overtime let's go baby give me that overtime baby ये मॉनिटर के अंदर को देगा Juicy didn't expect that kind of movement there with the Odin. I didn't expect फिर him इसके to बाद get नहीं तो crouch, 3 डेथ मैच actually, खेलना but then पड़ेगा again, 5 मैन बना के the हमको पहले control there from जब तक Allen. स्कारजी बी नहीं Scars जाएगी now वो जीत अरे जाएगी। टीडीएम खेलते ना position रैंक से अच्छा to बहुत actually बेटर just get Ranked on the boring है records, to एकदम। get on that history book. 5 मैन में that बोरिंग they नहीं can है complete here. 5 मैन में बख्शोदी होती है हमारी भाई बरम बराई बख्शोदी उसका बकचोदी मैं तो मर के देखूंगा तभी कंटेंट एडी पीक बोलते तू वैसे भी मरने के लिए खेलता है या तो मारता है या तो मरता है रैंक में और क्या क्या ही करना फिनिक्स खेलता है गांडो भाई फिनिक्स के लिए सब टॉप रखता है पोपा मैंने सुना possible. Recon now gets the intel and Neff is the first पोपा to वैलो fall. से रिटायरमेंट इसलिए लिया There's the Dark क्योंकि too. पोपा सीएसगो खेल रहा है Crystal प्रोफेशनल still keeping the front Comeback line here of for big- Scars. They big haven't really cabbage backed brain. down in any Not shape or happening. form until they're rotating. मैं तो ऐसे ही बोल रहा था प्ले ऑल करना पोपा नॉट हैपनिंग चलो ये राउंड या तो जूसी सबको मारेगा या तो मरेगा इतना क्लोज मॉनिटर में बैठा है तो मारेगा एक को मारा डिसमिस क्यों नहीं किया मेरा जैसा है These picks are going in favor of Scars पोपा immediately. इनिशिएटर A dash का in here ब्रेन from ही ऐसा है Jemkin. ड्यूलिश का ब्रेन ऐसा नहीं Clearing होता out the समझ रहे site. You can see that Scary playing from Secret, wants to go for the spray immediately. The molly a bit off the mark as Scars have adjusted accordingly. There we go again, looking for intel. Run it back here from Crystal too. And while Crazy Guy will get rid of that second life, it's all up to Scary now. 1v3 in front of the Let's home go crowd. third map, baby. Scars though playing back yet again towards main. The clear is so important, but the stack is there from Scars मैंने instead. बोला था ना अभी Smoke नहीं out जाएगी, onto the नहीं spike as well. अरे And it's TS पे ही just हूँ मैं। Scars waiting for that sound cue. चलो भाई There's खेले the tap. चलो Scary भाई trying to मैं back on away. The blaze is there though. Team And deathmatch Scars find leaves करो a अभी। lasting अरे नहीं mark भाई, match on find the कर। bleed. अरे पागल है क्या Finally, क्यों? Bleed will lose अरे भाई one 1 ऑल this हुआ है year, भाई and we थर्ड don't गेम know दिखाना 10 मिनट में पड़ेगा अगला मैप चालू होगा। उसके बाद फाइंड करेंगे अभी खेलेगा चालू तू चलो वो हम और आप ही खेलते हैं टीम डेथमैच खेलते User हैं left your channel. मैं और आप टीम डेथ मैच खेलेंगे User was moved out of your पोपा channel. आपके साथ हम सब कुछ खेलेंगे पोपा आप आ जाओ अरे हमारे दो नशेड़ी लोग क्यों कर Just such a mentality to a competition kind of ideal here from Scars. The fact that they're willing still to पोपा stand आपके लिए हम toe-to-toe सिंगापुर through जाएंगे that Jet Reina setup, Singapore. despite having a lot more options coming into the post plan. They made that work by being as active as can be.
गाइस जो भी नए आए हैं हल्का सा लाइक और सब्सक्राइब दबा दो। 100k पे बैटल पास गिव अवे होगा। 100k होएगा ही नहीं ऐसा उम्मीद हो, ऐसा लग रहा है मेरे को अभी। 47 50k नहीं हो रहा है, 100k किधर होगा? क्या फायदा जब स्ट्रीम करना था तभी नहीं किया। क्या गणेश यार 150k हो गए तेरे, थोड़ा मदद कर इधर भाई को भेज थोड़ा 4-5 हजार। मेरा पता नहीं, मेरा होता है पता नहीं कैसे। मैं तो ऐसा करता रहता हूँ स्ट्रीम। आप तो सिर्फ वॉच पार्टी करते हो उसके बाद भाग जाते हो। किधर से सबसे क्या सही बोला ना चैट? ऐसे भी करता हूँ मैं स्ट्रीम, वॉच पार्टी करके इधर भाई मैं तो नहीं देखा करता हूँ भाई। मैं तो गाइस कोई बताओ ओपा जी को देखा है वॉच पार्टी की डिफरेंट दिन? हाथ उठाओ ऊपर। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। स्क्रीन को दिखा ब्रो, आजा ब्रो। टाइम लगेगा ब्रो, हाँ ब्रो पता है ब्रो, बट हो जाएगा। चलो आप कह रहे हो प्ले मेकर तो बस प्ले मेकर जिस मेकर का भाई प्ले मेकर। चलो बाबा तो क्या खेल रहे हो? रेस ब्रो। वेरी स्किल्स कम हियर ब्रो, आई विल शो यू। स्किल्स और गोलो रैंक खेल रहे शायद। हां रैंक खेल रहा एक और के साथ 3 लोग हैं। मेरा लाइव चैट से चैट ही गायब है, भाविन भाई को दिखता ही नहीं। अभी दिखा तो बोल रहा हूं भाई क्या हो भाई फेक वाचिंग रखा है वालों ने। पता नहीं ब्रो, I am forbidden to say anything on that. Grenade! Satchel out. Reloading. Bomb buddy out. भाई मैं जिंदा कैसे हूँ? को पूछो भाई। भाई तू देखा नहीं मेरे स्क्रीन में क्या हुआ? मैं 4 एचपी में खड़ा हूँ। ओपोनेंट जितना गंदा है क्या? हाँ हो सकता है। I'm so bad, but they're better. Better. They're worse. Oh, कौन है भाई? भी हैकर है क्या हमारा? Raiders on a rampage. Satchel out. 10 seconds until stage change. Chiamate Kudasai. Grounded. Stage 2. Grenade! Careful now. Reloading. Headshot. Bomb buddy out. Yeah, Phoenix band का। What is the language, bro? Killed my copy. Satchel out. Ara. Hare Rama, Hare Krishna. Satchel out. What the fuck? 안녕하세요? Here comes the party. 씨발. Dominating. Satchel out. Grenade! See ya! Stage 3. That's done. Reload. अरे इधर कैसे आ गया? Enemy killed. My ult's ready. Satchel out. Use ulti buddy. Build TDM. Not ready yet.
भाई रेज मर ही नहीं रहा है पे का लोड़ा फैंटम दे दो भाई Ultimate is ready. My ult's ready. What the fuck? Let's go baby. अरे यार नॉन स्टॉप मारने नहीं दे रहा भाई Here comes this. नशा है प्लस किल्स करो मैं 100% करूँगा अभी नहीं होगा Get out of here. Parasite. Adios. Satchel out. Grenade! Ultimate orb spawning. आ लौड़ी इधर कैंप क्यों कर रहे हो भाई अरे वो इसका आवाज आया भाग के आने का इधर आवाज Get out of my way. Not ready yet. अरे 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 मार दिया देखा वो बस सब ले Satchel out. Grenade! Block inside. लाइन अरे कस्बा क्या यार ब्लीड 2-0 नहीं जीत सकता था क्यों भाई देख रहे हो गाइस इसको खेलने का मन नहीं है खेलने का मन नहीं है देखो गाइस इसको खेलने का मन नहीं है अरे मेरे को ओजी का गेम देखने का है नहीं नहीं गाइस The last time they played it was in the grand finals with देख such रहे हो, commanding समझ रहे हो। fashion against X10, and you've seen from Bleed if they can find that रुक contact, एक they're मिनट just happy to मत just गो go for the कर overrun गेम चालू हो anyway. जाएगा 2 Well, I मिनट में guess we'll see if they मैं have तो decided to खेलूंगा prepare some हाँ kind तो of लीव counter कर strategy. 'Cause मतलब it's exactly मेरे को what you निकाल दे have to expect, हाँ right? निकाल दो There's something सेकंड up आएगा इस Scar's वॉशरूम sleeve. के They बी राइट wouldn't let बैक this through unless they meant business. Yeah, I mean, they let Pearl pass, and we saw the effects of it. They are ब्रो आपका absolutely कजिन prepared ब्रो for का Bleed. नाम आरुष है Every क्या single नहीं one of these maps, they matter because it's crafted in the way that you might think, okay, this is all Bleeds from especially that second map moving forward. Scars has a plan. They've already shown it in that second map itself. I'm curious if they're going to stick with the same plan that we have seen from them when they played against Fennel. That Harbor that they brought out, I don't think it worked out too well for them. This might actually be a comp change coming into this tournament. Okay, so what comp are you thinking it's going to be? I think they could, you know, kind of swap on over to the Astra because we saw Toroneko play super well on the Astra. It's one of his more comfortable picks, and the way that they play in general does benefit off of that. They play the Raze as well on Lotus, which has a combo possibility. I wonder if they're going to be running something like the Sky as well. You can have someone like Yoshi on it. They want to go for that flash value. There's just so many possibilities here from Scars, and maybe one thing that they can run even. Neon, we can go for a Phoenix also. There's just so many possibilities here for Scars, but truth be told, it's something that they're just going to be bringing up out of their sleeves out of nowhere. Yeah, I'm looking at that. I see exactly what you two are saying as well. Like once you bring that the Harbor in as the solo controller, I feel like we never see that. Harbor is usually sort of that secondary controller paired with the likes of a Viper, so you can play those double walls. So I feel like there has to be, as you mentioned, some kind of agent swap coming through here. I'm not expecting more of the same for what we've seen from Scars, unlike like what happened on Pearl, where it made sense for them to stick on that Phoenix, to stick on that Astra plus Sky. क्या लगता है दोस्तों थर्ड मैप कौन जीतेगा? Global Global Esports. More so than the way that we've seen
क्या Global Esports LCQ जीतेगा? Global Esports. Global Esports. Speaking of Bleed, what have they run very much consistently? Global on Esports. They play the Sage. They still get the value out of the Global They Esports. love to be a bit Global creative with the Esports. barrier orbs themselves, and just having those more opportunistic angles, it अरे gives क्या a कर रहा है भाई chance really for चोमू? Bleed to surprise their opponents. Yeah, I'm feeling like, I'm feeling good for Scars. You know that when they're coming in with a surprise, like they've already surprised us so many times this tournament. We certainly underrated them coming in, and then they destroyed Open में क्या and यार? smashed Orangutan. And Start हो now गया? it's their chance to maybe take out the favorites 10 मिनट का of पहले the खत्म tournament, करेंगे, as guys. scouted by many अभी हो जाएगा talent out चालू there. 2 So मिनट में I think. let's see where this one ends up heading. Lotus, we didn't get it before today, and now we've got it twice. I mean, you asked for it once. What the fuck, you might Stinger just कैसे get more इसका? than you've asked for. And That's the one. in this case, I think the real impressive part is that Scars were able to do that on Pearl, on the map we once again doubt them on. Maybe they might prove us wrong again. Yeah, they're just saying that records don't matter. Scars is here to make new waves, make new chapters really into the APAC scene. And immediately you keep an eye out on that roster. Crystal will go back to that initiator role. Champion's going to be on the raise here. They actually swap out, as we were talking about, but not to the maybe roles we thought. They swapped our Neko down to that Omen for a bit more aggression. They have more kind of initiating power with that Paranoia now, plus the Fade. I'm liking the Fade swap up. Look, personally, I still like Sky a little bit more. Bleed bringing in the Sage. Certainly a little bit off meta compared to what we see around the world. But yeah, Scars, you can see that they've definitely looked back at what went wrong last time they played this up against Fennel. And they're going for that double control. When is G playing again? 17 KJ as well, just so June. critical on a map like Lotus. July. Those lockdowns, as we said earlier in the first series of the game. Eagle Gaming. It just provides so much space on such small spike size. And just looking at Bleed Esports too, crazy guy on that side. It's been tried and tested, but the way that he's able to play the wall sometimes, put up these kind of barrier orbs towards the hallway, find that second floor kind of angle, look for the stop also to have some great lineups with the slow orbs. It's just ways for Bleed Esports to pick up the pace that they want in the first place, and it allows players like Juicy, allows players like Darion to rotate where they need to be. Are you expecting Scary to come out with something crazy here? Like, have you seen him play too much Lotus before? Not as much, honestly. It's mostly we see from Scary a big paranoia, and then he plays off what kind of aggression Juicy can make there. Okay, well, we'll see how that all works out. Now, in terms of the initiators, we didn't get a Sky on either side. We're just rolling with that breach, so we're looking at some Rolling Thunders. Of course, an ult that takes a few points to work up, but can have incredible impact. And how we expect the lockdowns to operate. You know, you've of course got a little bit of damaging util from both sides, but probably not enough to deal with it. So it's just going to have to be either floods or retakes. Well, the control here can really be wrestled out, I think. When you look at Bleed, they have that Sage, which can, at a moment's notice, stop the execute here at any moment on the Scars' side, and that could really be a big thing. The lockdown, of course, they don't really have the tools necessarily to deal with it, to destroy it, aside from maybe a paint shell, but that's all about it. So I'm really looking this to be a big clash in ideals and play styles. This is where you have to respect how much space you can make in the first place. You mentioned it, with the lockdown, you can't just actually break that with utility. Someone needs to get in there and someone needs to get in position. Yeah, someone certainly does, but one of these teams is going up to the top of the group. Let's see who it's going to be. Only one here can be undefeated. Only one here can continue live हो गया, live in Pacific Ascension. We're back though with map number 3, Bleed versus Scars. And while the records haven't been kind to Scars on a map like this, Lotus, well, they bring out something very much more different. They bring out Crystal on something that he's comfy at. It's that Fade. He can get value out of it so many times. He's played in other maps as well. And on the other hand, Bleed Esports, that Sage still from Crazy Guy is what I'm looking forward to. Well, first fight here. Contact should be made as we get into the decider of this map towards 𝐼𝐽𝐿𝐻 and Bleed. The team built together to be the new kings of SEA of the Pacific. A super team to end all teams versus the Scar squad. A ragtag bunch put together to make a statement. Who will come out and prevail? Playing towards mid. Crazy Guy though, hurt immediately. Only heal. Not gonna be enough actually. Only 30 HP you can get back from your own healing orb. It's Crystal now. Watching out for anyone on top of the wall itself. Barrier orb though for the blockade. And Scars a chance to flood into B side here. Well, they're keeping them at bay, doing an ample job of that. That's what we talked about, you know, that Sage could be a big thing where it does just stop Scars in their tracks.
Pistol round this. Crystal to be playing so they can gain mount control easy. Shot bhai. He's got the Opa, shot and he bhi finds a quick shot pick. bhai. He hears it coming and Shot Juicy bhai, with Paranoia gonna be मैं in the पता play, मैं and this बोलने is वाला terrible था here for Scars. They're Oh caught bhai, late, khatam. and they're even caught in the explosion as well. Neff with 2 there at the very end. क्या बोलने वाले थे? मैं आपको बोलने वाला था कि अभी जब ब्रेक था ना हाँ लाइव होने के पहले जूसी का चेहरा देखा था जूसी ठीक हो गया है हाँ चलो ये भी ठीक है उसकी आंख जो पफी हो जाती है ना जब वो बीमार रहता है हाँ वो ठीक हो गया था तो हो सकता है वीकनेस की वजह से या उस समय जस्ट उठा होगा उस वजह से अभी जो भी खा के आया है मार रहा है हाँ मतलब अब फ्रेश लग रहा था वो जब बैठा हुआ था उस समय आंख बहुत पफी थी जब वो पहले आया था Every single lane that walk lead out anticipates you, you know a paranoia is coming your way. You have to anticipate that. The pressure of having paranoia up और थोड़ा इंडियन है इस मामले में उसको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम अच्छा safely knowing that paranoia could come at any moment when it's thrown तो out. GXR का खाना कैसे खाया उसने इसका पता नहीं From an inescapable ability. Nano swarms keep him at bay. अरे This GXR is में तो shredding them apart. The Spectre spam. Oh, Already here comes the aftershock. पता नहीं बोल सकता हूँ कि GXR का खाना नहीं था ना वो तो वहाँ पे अरीना में जाके खाना पड़ रहा था ना वो अरीना में वही जो है भी ना था GXR का खाना हाँ वो तो ये लोग नहीं खाए थे अच्छा इन लोग बाहर से खाए थे क्या हाँ अगर होटल से खाए रहेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा हाँ होटल से खाए भाई हमारा खाना क्या पॉइजन है क्या हेलो अरे हमारा खाना पॉइजन नहीं है ऐसा क्यों बात कर रहे हैं इस गाइस इंडियन हेटर्स भाई होटल में भी इंडियन ही खाना मिलता है इंडियन फूड बेस्ट है GXR का जो खाना था अच्छा ही था मैं तो दबा के खाया Shown here by some of the players like Crazy Guy. नहीं कंपेयर टू और मतलब Wait for the smoke to dissipate. और इंडियन फूड एक्चुअली कैन भी वो उतना अच्छा नहीं था फॉर फॉरेनर्स हाँ Come on. और खासकर फॉरेनर्स के लिए तो Aid them बिल्कुल in the pursuit for the हाँ retake. हो सकता है But now Scars have होटल good weapons. इतना They गजब secure है that वो one. होटल इतना मस्त होटल है A bit more on their buy. And you can see for Scary. तब मैं पर्सनली जब भी काम से जाता था हैदराबाद मैं वहीं पे रुकता था बस वो एयरपोर्ट के बगल में सारी मीटिंग्स वहीं पे होती हैं With the dark cover especially from that point on, it's bleed now. हम भी बहुत मीटिंग्स They आते थे paranoia early, trying to anticipate Scars in a quick push. But Instead, meeting में कोई it's नहीं slower था play बस from Scars, they move towards Mound instead. You can see here though that they're keeping them on this. They're keeping. मैं तो जब ओपा मैं क्या का बोल रहा हूँ To बोलो assume तुम बोलो ही there मत might कुछ be a lot more presence here than there actually is. So Alan, हैदराबाद going down the बिरयानी line. गाइस तुम लोग They get बैंगलोर flashing दोनों through. बिरयानी खाओ But he's ready. Oh, bhai, Still nice. ऐसे Shot. गायब हो TCL. जाओगे Yeah, ठीक है Juicy with the takedown and a big chance for bleed. खत्म है ये मैप खत्म है बैंगलोर बिरयानी में वो खड़े मसाले रहते हैं क्या बहुत ज्यादा खड़े मसाला क्या होता है हाँ, हाँ, खड़ा रहते रहता है हैं, मसाला क्लव ये वो रहते काला रहते वाला रहते सब। रहते हैं Re-engage towards that B site where a wall is waiting. भाई बेस्ट है लेकिन दुनिया दम बिरयानी They तब also तक go की for the राम hunt आलू at the वाली very least to बिरयानी। get that intel. You have Best. Neff waiting inside the smoke. Neko actually teleporting on in, but Neff now crosses on through to get that takedown. 3v4. Scars looking for a chance here, क्या हो गया trying to भाई? fake things out. They go for the tap. Here comes Oh, Yoshi. भाई। And the rest of Scars follow suit. By example here, the takedowns happen in सिमर भाई की favor बात of पे the थोड़ा attack. विश्वास करने लगा Crazy हूँ guy can't get the catch whatsoever. 70 kg हो गया काश मैं भी Of 70 this kg हो specific पाता round here. Rifle retreat. शायद Crazy मैं guy पनौती taking लगा hold, रहा still हूँ low. मैंने जैसे ही बोला मैप खत्म है Changes the color of his skin. उल्टा हो गया For the meantime, this should be around 4 stars. बस कोटे बिरयानी The firing squad at कोटी the लग ready. दती कर Jemkin with a third, and Scars get their first. चलो Everyone भाई was ऐसे watching जीत for जाओ him, जल्दी but that कर was भेजो such a swing courtesy of Scars. Every single one of them winning out their more isolated duels, immediate frags in ओपा, मैं क्या succession बोल there रहा from हूँ? Scars. तो And that's मत the thing of बोल beauty about this team. बस Suddenly, आपका they वेट can just भाई get कुछ these तो immediate 58 कुछ takedowns. तो रहेगा And as soon as they get on with the site, they were just like, okay, 59, we got 60 this. ऐसा Let's कुछ just तो finish up रहेगा the round. And as soon as they do इधर so, आके तो और you can see गिर गया Scars शायद just पता नहीं know that they've gotten the full इधर आने confidence के they बाद need गिर गया शायद to run towards that C site, overrun बस anybody हम in गुड their हो गए way. ओजी का Just मैच the ये insistence of गेम के pouring बाद out of that B main too, catching हु bleed off guard. ओजी करेंगे Juicy ठीक here है goes मैच towards Rubble and immediately bleed. कल तो हरा दिया पापा जी ने Be a उनको more aggressive in terms of map control in this round. Mount set up here for Scars. गाइस There you पोपा go. होता तो कल जीत Already जाता वो reinforced by गेम Crazy Guy. मेरे को तो They're looking for the विश्वास है timing with a slow पोपा orb. They hear the आपके showstopper though. माय And हाइट आई थिंक Jemkin, 511 he's stuck now onto the site, looking to let it rip towards the halls.
And Neff just backs on away. A wise disengage here from Bleed. Yeah, they pull away. Rolling Thunder. 5'11" or 60 kgs. On Bleed, and they're now trying to hit the site. They know where Jemkin is. Darion finds his own. Lanky. बहुत ही lanky हो गया. Lanky मतलब? And they take it and overrun. हिंदी में बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को. तड़का. हड्डी. Just waiting हड्डी हाँ वही तो बोला. The ultimates there from Scars, and as soon as Scars was already committed onto the 10 side, kg और डालना है मेरे that's को. when Bleed struck. Neff though setting things up so very well all throughout this series. Even the master of utility. देख तो 73 74 पहुंच जाएगा. It was enough for बढ़िया such an effective wipeout. चलो पहुंचा दो पोपा जी मेरे को please. Seize there by the Popa opportunity ji. to recognize that, hey, if you play inside, you're gonna fall prey. तू बैठा है कोरिया में. And what a day it was. हम बैठे इंडिया में. भाई इधर योर इधर योर उधर बोल ना योर आईजीएल को बोल खाना खिलाना है अच्छे से. अरे पोपा जी सच बता सबसे नहीं बहुत अच्छा मेरे को आई थिंक क्या बेस्ट. नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑब्वियसली तूने मेरे को बताया वो तेरा हमेशा ख्याल रखा पर मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से वहाँ मैं नहीं खिला सकता. If OG lost, they will be out of playoff. Yes, bro. पर जब मैं जिम जाता था मेरे जिम ट्रेनर ने मेरे को बताया था कि अगर किसी को वेट गेन करना है ना हाँ तो पीनट बटर और बनाना. अरे मैं डेली पीता हूँ पीनट शेक तो. एक नहीं पीनट बटर में डिप किया हुआ बनाना खाओ. And they have quite a few ultimates at the horizon here of being online. पीनट बटर शेक के अंदर बनाना डाल दिया तो. वो भी चलेगा. हाँ. अच्छा और भी कैलोरीज है उल्टा. दूध की. प्रोटीन शेक भी एक काम कर. आइसक्रीम वाले शेक्स आते हैं. आइसक्रीम शेक भी. पीनट बटर शेक में आइसक्रीम ही डालते हैं. हाँ एक स्कूप वनीला आइसक्रीम पीनट बटर 2-3 चम्मच एक बनाना और थोड़ा वे प्रोटीन. थोड़ा वे प्रोटीन. क्यों हंस क्यों रहे हैं. हाँ हम ये सब पी नहीं सकते ना मैं और गॉडस्पीड भाई. भाई मेरा मेटाबॉलिज्म कुछ तो प्रॉब्लम है. मैं डॉक्टर के पास हो सकता है ना पोपा. हाँ मेरा मेटाबॉलिज्म मेरे भी दोस्त है बहुत इतना कुछ भी खा लेंगे अनशन पर वजन नहीं बढ़ता और इधर मैं थोड़ा भी खा लूंगा तो बढ़ जाता है. थोड़ा भी नहीं खाऊंगा तो कम हो जाता है. पहले इसलिए डॉक्टर के पास जाके. भाई मेरा दोस्त 6'3" है पूरा एकदम सुखड़ी हड्डी 6 रोटी सुबह नाश्ते में खाता है वो. 6 रोटी मां कसम मैं 2 रोटी में मर जाता हूं भाई. मैं 2 रोटी खाता हूँ. मैं उसके घर के देखा 6 रोटी खा रहा हूँ. क्या चीज़ है चाय के साथ. क्या हाँ. गुजराती है मारवाड़ी गुजराती नहीं उत्तर प्रदेश. बिल्ड डिफरेंट बोलते. हाँ बिल्ड. अरे वो सही में बिल्ड डिफरेंट ही है. उसको देख के मतलब वो बस में झुक के खड़ा रहता है. उनकी पूरी फैमिली में सबसे कम हाइट उसी की है 6'3". सबसे कम उसकी है. हाँ. If Scars don't actually make something of it, if the Scars start to, maybe get great positioning off of it or start to get some kills due to their lurks here towards. तो भगवान का शुक्र है मेरे को थोड़ी बहुत हाइट दी है नहीं तो मैं तो बहुत भट्टा दिखता. आपकी हाइट कितनी है? 5'11" and a half. मतलब 6 ही बोल दो आप. बोलने का मन बहुत करता है. पर पहले बहुत वैसा हुआ करता था ना मतलब लैंकी नहीं पर नॉर्मल मतलब एकदम. और मैं बास्केटबॉल खेलता था तो मेरी हाइट वहाँ से आ गई. एक जमाने में आप बास्केटबॉल खेलते थे और एक अभी हो मैच देखते देखते सोते हो. अरे मत पूछिए भवन भाई क्या मस्त लगता था मेरे को बास्केटबॉल खेलना. ओ भाई जेमकिन भाई उड़ा दिया. Those are what exactly Scars have been looking for. They find the picks and they get the space. This round effectively done unless Bleed can make this off angle work. The shot strings though. भाई वॉल बना दे भाई क्रेजी गाय. Very aware of where Bleed's position. Yeah, crazy guy. अगले राउंड जूसी लगता है सी पे पिक की तरफ जाएगा. तभी ऑफ सेव कर रहा है. पोपा मैं क्या बोल रहा हूँ. मत बोल. Yeah, the retake not even going to be attempted here by Bleed. Conceded, they've got some rounds to give, especially on the defense. बोल भाई बोल. नशे में ही नहीं रहते बात बदनाम ना कर. They have it from the shadows and
We see on a map here like Lotus, a lot of teams love to use that Omen ult to take either the drop control towards the A site, or maybe even the defenders spawn entrance control there on the C site. So timeout very tactical creative ways to use this to gain them information and space early. Well, timeout now being called. I do believe it's भाई for कॉफी Global पीने का मन Esports. कर And रहा the है biggest चैट problem we've seen from this defense for Global, when they get immediately picked apart, when then suddenly the frags go in favor of Scars out of nowhere. भाई It ओजी just का मैच तो completely फैसले का होने वाला था ना dismantles हाँ the भाई Bleed मैं defense. We saw it when they went लफड़ा for मत that करो sudden लफड़ा triple क्या होता है threat पोपा moving झगड़ा towards that हाँ। side. We saw it right now in the last round. चलो guys And लफड़ा those करते हैं immediate लफड़ा wins अच्छा from लगा भाई मेरे Scars को झगड़ा are से what have अच्छा brought them to this level of success already. या मैं तेरे को दस साई Well, the Scars here. लफड़ा इज झगड़ा एक अलग हो गया, थोड़ा सा माइनर I guess circumvent what रॉसी भाई स्प्रिंट टच हाँ क्या रिजल्ट बता रहे हो गाइस अपडेट देते रहो रेस का क्या हो रहा है ठीक है अभी स्प्रिंट नहीं है 7 बजे से स्प्रिंट है अरे मैं तो देखो मैं थोड़ा लाइफ में आगे हूँ तो मैं 9 बजे में हूँ गाइस तुम लोग मेरे पीछे हो ठीक है समझ रहे हो टाइम में थैंक यू नमोर थैंक यू ब्रो विमल का वेट गेन हो Scars not telegraphed to me. Yeah, Scars in an instant, in a dime. It's पोपा मैं क्या बोल रहा हूँ faster kills and हाँ, faster बोलना। L3. Now, मेरे can को Scars लगता है actually अगर bridge that आप gap ड्यूलिस्ट and खेला look होता to तो try हम and at किधर least और make it रहते at आज one round? ये दिन हम वॉच पार्टी Watch नहीं it करते थे scary बैठ though. के मेरे को Just ऐसा one लगता है आपको looking क्या towards लगता है that mound, throws out the smoke towards lobby actually. पोपा Bleed. They have a feeling already the Scars wants to hit for A. There's पोपा a wall also. हाँ एक सेकंड ना Look at हाँ the door control हाँ they're भाई taking. क्या They're करें ready अब for a pinch on the mound. अरे Yeah, but they have a wrong सुनो read on the यार situation here. मैं क्या Especially बोल रहा हूँ Yoshi सुना कि trying to नहीं make some noise सुना towards वॉच his पार्टी A नहीं to करते leave होते that A सुना side even more ripe अभी for the बोलूं taking. क्या The है only defender मैं there बोल is रहा हूँ अगर Darion, so आप he's got a lot to रेस do, ड्यूलिस्ट ये especially सब with the खेलते late होते information तो that Brady शायद gathered. हम Yeah, Bleed आज is ऐसा वॉच trying to पार्टी करके नहीं reel बैठते Scars in मेरे को towards ऐसा लगता है mound, but आपको क्या लगता है Scars a different plan and a different position. क्या They पता moved out from हाँ, bubble अरे towards the आप site. बोलो All भाई eyes instead on ऐसा स्ट्रीम Darion करके ऐसा and his मॉनिटर देख setup. के बैठ गए तो Waiting लोग for the को door बोर to नहीं make some होगा noise क्या? immediately. अरे नहीं Guys, मैं Just कुछ with मैसेज that कर रहा few हूँ किसी को bleed एक मिनट rotating towards A. Yeah, they now know हमें it's भी gonna be A बताओ side भाई hit क्या here. मैसेज कर From रहा the हूँ स्ट्रीम shadows देखने इसलिए तो reposition. आया अरे His दोस्तों teammate के साथ Darion डिनर पे knocking जा down. रहा हूँ रात को Not अरे तो giving बोले हम भी किधर दोस्त जाना है है भाई Same हमारे साथ position. भी Yeah, डिनर that's why they were सब्सक्राइबर willing to लाइक commit हमसे in the चाहिए first डिनर place. किसी और से Quick चाहिए गाइस ये reinforcement देखो from Scary. Prowler सही है though भाई doesn't scan हमको out ठीक है Darion. भाई A chance here भाई with a bit of false अभी intel. भवन भाई बोलेंगे कोरिया का Torneko टिकट though, दे looking for the plant as Alan sets up the pit. Crystal already been भाई taken down. भाई Two here बोइन on the भाई side of हमें Scars. टिकट And it's करना difficult for चाहिए Bleed समझ रहे हो just because they have the operator. बोइन भाई So खतरनाक है hard to एकदम find the आपको angle पता for नहीं the retake. Darion also just into the Rossi corner. drunk No क्या real bro? escape. Does he get pushed by Scars here? मैं Crystal though, a chance. तो सिर्फ but लोगों को Darion was drunk afraid to होते get हुए that देखता हूँ takedown. 3v2. Rossi Jemkin with a spot. Rossi सब Rossi मैं बोल here दिया for Juicy as रोता हूँ Scars बस। takes control of the site. Has to Rossi is be. drunk on Almost assuredly, and that it is. life Scars finally Rossi stringing कोरिया में around वाइफ मिली कि नहीं another वैसे round in a row here. That's वाइफ two now. पोपा इधर मेरा Bleed just- लाइफस्टाइल ही खराब हो They गया भाई have good ideas in मतलब how they play क्या the हो गया? defensive setup. अरे just कुछ नहीं है they इधर haven't been कैसे getting the बताओ right ऐसा timing where the hit will come. भाई जैसा नहीं They है also भाई haven't been gaining गंदा है ऐसा information सिर्फ to ऐसा find आओ that out खेलो because जाओ they lack आओ खेलो जाओ information आओ खेलो gathering जाओ actively. फ्रस्ट्रेशन है The भाई only way they can gather information is the old-fashioned way. ऐसा They कुछ either कर check it, कुछ peek करने it, के लिए लोग भी नहीं है और ज्यादा leave a पता भी turret नहीं है passively, yes, but they have no पीले चल Sova, के आओ चल के no Sky, no जाओ Fade, nothing to find out what Scars are up to. It's only the breach, right? And yes, वहाँ it's जिम strong नहीं for जा रहे being guys मैं ऐसा oppressive, but anxious how हो do जाता हूँ you guys even मतलब know where Scars is gonna go comfortable when नहीं they हो cut ऐसा that बहुत kind of लोग noise? के Some great सामने ऐसा discipline also from Scars. They put their Killjoy, they put Yoshi there to at least make some noise, catch up a bit of attention. But from that point on, it was just a clear बना लो भाई कोरियन escapade फ्रेंड्स onto the A side. Blades though out, वो तो यार Juicy. He wants to find at least a bit of blood here. Well, Juicy, he's been having himself फ्री टाइम में स्ट्रीम not की the जगह most कोरिया एक्सप्लोर करो ecstatic नहीं game भाई here. करना पसंद No है performance in this series. Map number 1 certainly different, but ऑप किसको दिया जूसी ने डेरियन wasn't anything to write home about just yet. Bleed on the defensive side. Operator here on Darion, back in his hands. Let's see how Scars deal with it. Yeah, Doc screen setup is there at the very least. So Scars
They can separate the करना site, बहुत especially मुश्किल towards लगता the है top side. मेरे को। Showstopper, no! And Jenkin trips up over the box. Crazy guy with a takedown. Opa. Neff waiting for क्या the बोल रहा है? timing. ऑफ करना? Hearing the ऑफ cross करना already. लोटस में बहुत मुश्किल है Super भाई। chance, हाँ। an opportunity Useless ही here. लगता है मेरे को Toroneko though with the plant, and here comes the C's onto the area. और वाइपर है सामने तो There यूटिल has तो no fear. Nice shot. ऐसा आ रहा है Crystal तो will ठीक just है, catch useful him in the corner anyway. An overrun here, courtesy of Scars. Neff though, a different chance and a different play. Fault line now, moving towards Toroneko. He's watching towards top, but it's Juicy already, reinforcing Neff. Nice Juicy, plays to get that takedown. All left to Crystal in a 1v2. Trying to play 3. Looks for the Prowler also, but Juicy already shutting things down. Bleed, they want to go for the defuse, and Juicy will protect his mate there. It's now Bleed, at least getting it back. Well, a retake here coming in from Bleed, and especially they're coming from Naf. Hello, AK, कैसा है? Off the trade towards Yoshi, who's मैं playing तो on that आपके से broken door. तू Swings AK around, कांड। stunned for the backside. He can see आपके लिए Toroneko AK is भी बन जाओगा, just trying BK to भी be बन जाऊंगा भाई। aware or BK तो मैं हूँ anticipate already। a push from that BK heaven क्या है? position. भाविन Dario कोटवानी। also getting a kill here before going down with that operator. Big round here for इसके Bleed साथ to बात कर रहा swing हूँ। momentum back their way. Juicy, I talked about him not really getting activated and seems to have heard me. Yeah, he's just getting ready now. 7-2 standing especially. He's always been a survivor here for Bleed. Now Scars. They want to go for B-side, but this time around the इसको timing एक works shot out for देख them. भाई, वो They jet को catch observe Crazy कर, guy उसको in एक the shot act. नहीं मिलेगा A पूरा big game, pick ऐसा now खेलेंगे। to move on forward. Neff though, he भाई will सब fall जगह as डबल well, पिक and you करके will उड़ाए be जा रहे हैं भाई, careful मजा आ रहा है। versus भाई। Scars if you are Bleed, because the pick पापा, आप भी potential कहाँ is से ऐसा just खेल लेता? unbelievable. हम आज Watchparty Immediately नहीं the करते। takedowns go in the favor of the Japanese बात तो squad. सही है। Double peaks, a double for मेरे को Allen, लगा पोपा भी गाली who's देगा। just playing off of गाली क्यों नहीं दिया the भाई? confusion that Bleed are in. क्या after फायदा? those first kills. अभी गाली देख When के their क्या है? attention is drawn away, जब देता था तब नहीं trying सुनते to थे, तो अभी wonder कौन what से ही happened to सुनेंगे? my बात teammates. तो सही, बात तो This सही will है। not be the same. What a find and what a catch here for Scars. Yeah, my A pick flawless way to win. ऑफ And करना yet बहुत again, पाप है भाई। when छोड़ो यार, suddenly ऑफ मत करो। in the गोल्डी भाई को silence, दिखा Scars रहे gets हैं some राइट kind of वाले, picks. गोल्डी भाई It's उधर है Bleed क्या? who just falls apart. गोल्डी भाई को दिखा रहे हैं Because किधर? अच्छा as वो I ये talked था ना about, बेर। The टेडी pace बेर। अच्छा। modulation this team has, where they suddenly shift into another gear. It's not from first gear to second to third and then on so forth incrementally. ये मत है। But if anything, it's more like from first gear directly into क्या the fifth, खेलते हैं then भाई? straight into the काश मेरा sixth. वाइपर भी ऐसा That's खेल the way लेता। that these guys play. You just don't expect the पापा वाइपर खेलते थे ना momentum नहीं? shift that these guys नहीं। can throw around like a rag गोलू खेलता था doll. वाइपर। And now they Shit, have the 30 lockdown kills. though, Bleed, for this round. I mean, Bleed is trying to do the best they can to stop that momentum. We haven't really seen Scars rack up the rounds that we did versus Bonkers भाई versus जल्दी आ रहे हो। And this time now, sure, it's a one-round gap. And Bleed also on an 100 को eco target state. नहीं Difficult hold मैं here for the पुराने defense. teammates के साथ Gary's the बात one कर रहा हूँ। watching out for B side instead. And a different endeavor here. Wow. A crazy सिर्फ guy हमारे in the लोग rest. के साथ Alarm मस्ती though with करते the हैं, spot, guys। and Scars knows it's coming. Yeah. They क्या बोलते हैं पापा? recognize, hey, this might be quite a lot coming our way. Barrier destroyed immediately, at least confirms that there's quite a few Kills को Scars target, players, and हाँ। now the defense can बोल सकते। adjust accordingly. We can see our Bleed are anticipating Skills that target भी B बहुत side बड़ा है ना? position, हाँ, potentially. easy है। Take that B link. Scars, where do they commit? Yeah, Bleed's backing off towards the side. बहुत बड़ा They है। do want to find at least a cheeky kill or two, especially if they can catch anyone overextending. The screen though is set up yet again. It's been getting so much value to allow these crosses to happen. And not No only that, filter, implied Papa. presence. True Bolte. Scars rotating towards B here. The lockdown though into play. Darion's lockdown broken on down by Scars this bhai. time around. And with the plant going, Allen's dead, lurking towards the opposition. तो बस खेल रहा है भाई Finds वाइपर Juicy इनका। already. A nice यार backstab ये भी बहुत possibility here close for जा रहा है Scars. And भावन look at भाई। who falls to लग his रहा है hand. स्कार्स बोलो भाई मैं चट नहीं, नहीं। Crazy पर guy अटैक there trying to at least go ये for मैप the मेरे को whole अटैक rotation. ज्यादा अच्छा लगता है Looking हमेशा। sublime here for पर Scars. पोपा Bleed मेरे का को आप defense बहुत better अच्छा है। लगते हो। Okay, crazy guy. ब्लीड nice का pick. डिफेंस बेटर है ये मैप पे। पोपा हाँ। But हाँ मेरे को not आप exactly बहुत अच्छे लगते हो। advisable to burn it in this round, अच्छी बात है specifically फिर। save it for थोड़ा opportunity. $1000 Stall महीने का ties up ट्रांसफर the भी कर दिया game कर। for Scars. IGL Round 10 tax. it is. हाँ IGL Top टैक्स। 11, tax, they got the IGL. Nightfall now on their attacking side. हम ऐसा going बहुत टैक्स Thunder पे for Neff. करके हो गया। And I talked about that res a while ago. Thing is, Stop. though, with Bleed pushing so far up forward on some of these defensive rounds, will they even be in a position to use that res later on? Yeah, we haven't actually seen that kind of value, right? You गणेश तू इन expect लोग में से that किसी का at the स्ट्रीम very किया है least, क्या? Bleed Scars will go या for that initial trade, for the aggressive Scars play, नहीं किया, and Bleed then they किया just है। get the advantage Scars या through the तो नहीं resurrection. नहीं So किया struggle शायद। here for Bleed.
I think so अभी सब कोई Jadeite से ही करते थे ना स्क्रिम जापान में। हाँ न्यू टीम में हुई एंजॉय मोर कम से गोलो अरे Jadeite कौन है? Jadeite were the favorites इस बार जापान में। Oh, they lost to Scars. उनका एक 8 बोल के प्लेयर है भवन भाई। पता नहीं भाई उनको तो पकड़ पकड़ के मारते हैं। हाँ उनका स्क्रिम का उतना वो नहीं था बट टूर्नामेंट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो पता जापान तो जापान में जैसे ही क्रेजी रकून हारी सब यही बोलते थे Jadeite जीतेगी। गॉड स्पीड के खबरी सब जगह है। गॉड क्या? खबरी सब जगह है। बस खबरी है। और क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन इज पावर। उसको कैसा यूज करते हैं वो भी बहुत अच्छा चीज है। और मैं लीक नहीं करता बाकी लोगों की तरह। सब लोग लीक ही करते हैं। ये किसके ऊपर था? टॉन्ट पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लोग ट्विटर पे ये सब बस लीक करते रहते हैं। ये पता चला वो पता चला। ये बात किसी को मत बताना बोल के 10 लोग को पता है। मेरे को कब एक्सपीरियंस हुआ पता है? पहली बार मैं एक टीम ज्वाइन करने वाला था ठीक है? तो मैं बोला पोपा जी को भी फोन आया। मैं बोला पोपा जी ऐसा है सीन। पोपा पूछा कौन सा टीम किस के साथ खेल रहे थे? मैं बोला पोपा जी वो बोला है कि किसी को मत बताना है ऐसा ऐसा। तो पोपा बोल रहा है कि तू यही टीम जा रहा है मेरे को पता है। मैं बोला है? तभी समझ गया। नहीं तभी नहीं पहले ऐसा नहीं हुआ तो गणेश मेरे को बोला नहीं बता सकता ठीक है तो फोन कट किया मैंने 2 मिनट बाद मैंने उसको वापस कॉल किया मैं गांडू मेरे को पता है तू कौन सी टीम जा रहा है ऐसा है फिर बात करो अभी वापस आई थिंक वही था तो मैं वैलोरेंट आने से पहले ही समझ गया कि इधर कुछ सीक्रेट नहीं है guys। अरे मेरे को एक फोन घुमाना पड़ा रे बस गणेश। अरे नहीं मैं आप किसी का बात नहीं इधर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ट्रस्ट मैं बोल रहा हूँ मैं इज्जत से ऐसा पोपा को बोला नहीं बता सकता। हाँ पर देख मैं तेरे को फर्क समझाता हूँ अभी सीक्रेट है ये बात किसी को नहीं पता। अभी देख इसमें कैसा है ना मैं अभी कुछ लोगों से बात करता हूँ ठीक है सब मेरे को क्यों बता दे क्योंकि उनको मालूम है मैं नहीं बताता किसी को। एग्जैक्टली ठीक है अब ऐसे भी लोग हैं ना जिनको क्या बोलूं मैं अभी तू बताएगा तो वो सब जगह फैल जाती है बातें। नहीं पर वही बात है मेरे को भी लोग इसीलिए बताते हैं इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं फैलाऊंगा नहीं वो क्योंकि फैला के मेरे को क्या मिलेगा। हाँ पैसे मिले तो बात अलग है। Juicy. क्या मैं तेरे को दसाए? कैसे अरे प्रभात मैं ठीक हूँ आप कैसे हो सर मत बोलो यार। सर भाविन सर मेरे को आपके जैसा बनना है। इतना बुढ़ा कर देते हैं ना लोग एक बार। अरे नहीं प्रभात तो मेरा मेंटोर है वो मेरे को सर बोल रहा है। मेंटोर नहीं भाई मेंटोर तू मेंटोस बोलता है ना कि मेंटोस बोलता है तू मेंटोर बोल कभी फर्स्ट नेम ऐसे ही कुछ प्रभाकर ना as they transfer from A to B, making noise now as they clear out the box as doorway broken yet again. रॉसी पकड़ा गया रॉसी सुबह उठते ही गत्ता लेता है हाथों में। गत्ता क्या होता है भाई? गत्ता लेता हूँ हाथ में। मैं सुना हुआ बस ऐसा गत्ता फूकता है गत्ता फूक के बैठा है ऐसा बोलते हैं पोपा बट उसका मीनिंग पता नहीं। गूगल इट बोलो ना करना भाई आप ही मेरा गूगल हो। रॉसी told he will make Casper happy on stream है? नहीं भाई क्या बोल रहा है रॉसी? भाई to allow Juicy in. Cloudburst for cover, they're coming in from the link. Yoshi with a spray, but there, Yon Answer see him back. Crystal, Jemkin, what can they do? Jemkin's all alone now, but there's too many to deal with. And Bleed to tie it up. 6-6 at the end of the half here. Of course it's got to end 6-6 in the first. पर पता भवन भाई अगर कोई स्टैट्स पुल करेगा ना हाँ तो ब्लीड जब भी 6 ऑल रही है ना हाँ आई थिंक सो उनका कन्वर्जन रेट नाम था गाइस अरे 3% या 35% होगा। वेरी डबल माइंडेड तो मतलब का 1/3 टाइम से जीतते हैं। हाँ दे लाइक प्लेइंग फ्रॉम अ लीड फर्स्ट हाफ में लीड उनको बहुत Who doesn't? Not speed.
आप देखोगे पहले ब्लीड पता सिर्फ अटैक पे चालू करती थी। हाँ मालूम है वो तो। मेरे को हम लोग का पूरा वो सेट था कि अटैक पे ही चालू गॉड्स रेंज में भी हम सिर्फ अटैक चालू करना चाहते थे। has lost the pearl this year, but also a map that they haven't been accustomed to, a map that we haven't really seen from them on the VCT circuit in Lotus. It seems like they're so well prepared for it. So many times we've seen them clear out these kind of sites. They get in there, find the angles to isolate these kind of duels, and just the one-on-one gameplay that we've seen from Stars is back to that mentality. Individuals come together. मेरा फ्यूचर में क्या होगा 10 साल के बाद वही बता दो. We wondered कॉलेज में गया. You have to assume that maybe script Okay, been doing good on so far on the attacking side, at least. That's all. जिस तरीके से वो गाली देता है ना उस गाने में, it's not great. It has तो मेरे दिल को छू गया. Guys, volume सब ठीक है ना? Just star here for the Scars. 15 kills on him, 8 on an assist, but that doesn't matter. As we're going to the final half of this series, one that has absolutely impressed. We've seen from Jemkin that he can just force out the issue. But now moving on to the attacking side, this is where Bleed is a lot more comfortable in. If you look at the NYSG stats, around 72% of the round wins come from the attack. And not only that, Juicy, you know he has a plan there. Moving towards the doorway, Crazy Guy also happy to lead the charge. क्या कर रहा है भाई? Might spot यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ भाई, मैं क्या किया? Language सीख रहे भाई, hello. And you can see why Bleed wants to run that stage, allows the cross now towards the site. हम नया language सीख रहे हैं. हाँ language सीख, language को sexualize क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बोला कैसे जाता है? कौन ऐसा है भाई? अभी वो है चीज़ तो. ये throwback है anime में. 4v3 for now. Crystal committed here towards drop. No Scary has his mark. At least the haunt now to try and get the intel. अरे blue lock का मंगा पड़ा क्या किसी? मंगा नहीं. Bleed here waiting. मेरा Trying to be language ready. मंगा He's मतलब क्या not पता so है? for Jemkin. 2 down courtesy of Jemkin. Darian backing on the way thanks to the paint shells. And this is Scars imposing back onto the side. Jemkin will just jive and find those takedowns. बहुत दिक्कत वाली चीज हो गई. मेरे को एक चीज नहीं पसंद आया नेफ का, वो उसने फर्स्ट पिल बच्चा के रखा डिफ्यूज के लिए, समझ में आ रहा है, पर उसको आवाज आ रहा है लोग चार्ज करके आ रहे हैं ट्री के तरफ, तो यूज कर लेना ब्रो. हर बार बाय द बुक थोड़ी खेलेगा. क्या कर रहे हो? किसी आवाज निकाल रहे हो? What the fuck नहीं और सबसे बड़ी बात है ब्लीड बाय द बुक वाली टीम है भी नहीं. हाँ ये बस प्रेशर गेम्स है, मतलब बंदे प्रेशर में आके कट्टे टाइट हो रहे हैं. कट्टे टाइट, कट्टे शॉट. Those kills, and this is what we've been talking about all throughout this series. Jemkin is just that MVP here for Scars. He's just been incredible ever since he has stepped up here 18 मारा है भाई. पोपा आप तो सही बोल रहे as of right now. The proof is there on the statistics. One of the highest ACS. क्या Jemkin दे रहा है ना? This tournament so far. One of the biggest reasons Scars is in this position. दे तो रहा है. He's been such an incredible player. तू ले रहा है कि नहीं गणेश? Information. हम भी देने वाले हैं लोग. See that here for the second. Pain shells out. That's gonna kill Crazy Guy. Yeah, Crazy Guy, no escape. Toraneko's there too immediately. No chance for Bleed to even ascend that staircase, and Darian at least fighting back. But it's too late. Two of his own. Toraneko racking up the kills. धीरज भाई एक और को ले जाते हैं ना तो from the start of the side take, they were prepared. Sorry from my version, no bro. Chikmagalur, Scars, better weaponry, Chikmagalur, more firepower. गॉडस्पीड की जर्नी बताओ तो बात चालू हुई कल रात को. गॉडस्पीड गए बिस्तर पे सोए, आज उठे, आज उनके मन में डिटर्मिनेशन थी कि वॉच पार्टी के पहले तो कैसे भी उठना है. मैं भाविन भाई को 3 दिन से बोल रहा हूँ, मैं भी करने वाला हूँ, पर हो नहीं रहा मुझसे. हो गया पापा आपका बच्चों. Different ideas they can combine. पापा मैं क्या बोल रहा हूँ? This is such a big moment for Scars now. They're on their guys cancel Rossi guys, cancel Rossi. If they win this series, they're going to be going into the playoffs. They still have to play for seeding, that's for sure. But once they get those 3 wins, then they're in the never best limit spot yourself ever for one thing. To
move on to the next बहुत stage. कुछ कर सकते हैं लाइफ में, समझ रहे हो? undefeated so far. Exactly. वैसे नहीं इन स्पोर्ट्स मुझे पता है ब्रो, मैं मजाक कर रहा हाँ वो था। मजाक। क्या हुआ क्या हुआ? किसी को लगा वो holding on to the side by his lonesome. The prowler's there, but the नहीं, जिसने blood सवाल from पूछा वही Bleed. बेचारे को लगा Good मैं for him, सीरियसली। disengage towards top. End रसी करो, bait करो, आ He's gonna जाओ। wait things आ out. जाओ। So the timing might work here for Scars. Bristol dropping on down. Crazy guy with a wall. फ्रेंच फ्राइज प्लेयर है तो क्या फ्रेंच फ्राइज प्लेयर को एंड नहीं कर सकते क्या हम? Of the front and mid sight, so हम मैं पोटैटो श्री को वेजेस भी ले आएंगे। फ्रेंच फ्राइज प्लेयर तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो गणेश गंगाधर। मेरे को लगा प्यारा सा हमारा बच्चा है, समझ नहीं, गांडू है गांडू। प्यारा सा बच्चा जब आया था तब था, अभी गांडू। Have the advantage already. It's all up to Allen immediately. आप कितने सही अभी बच्चा बड़ा हो गया ना, क्या करे? For Scars to cross safely. समझ लेंगे। They just simply create the funnel here. है तो अपना ही बच्चा, कुछ कर नहीं सकते। नालायक हो कैसा भी हो। इतना बात सुनता था, उधर 4 लोग हैं, मैं उधर मरूंगा पता तो फिर भी मैं जाता था पोपा बोला डैश मार, तो 4 लोग के सामने डैश मारता था। ऐसा बोल देगा, ऐसा बंदे। जैसे हमने तो आपको सेटअप ही नहीं किया है किल के लिए कभी। हाँ ऐसा सिमर के सामने 4 लोग थे गाइस। वो तो भाई हाँ वो हमको मालूम, मेरे को मालूम नहीं था ना ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा भी करता है। सेज, किलजॉय, केओ, रेस और बी कौन खेल रहा है? अकेला ओमन। ऐसा सेटअप कभी नहीं बोलूंगा मैं, वो सिर्फ इंडिया में होगा। भाई हम लोग ने सच्ची बोल रहा गॉडफिट, जब मैंने वॉर्ड रिव्यू किया ना मैं बोल दिया गाइस मेरी गलती नहीं है। मैं बोल दिया इन लोगों को, मैं बोला मेरी गलती। हाँ सीख गए हम। भाई इनके सामने जाओ मारो भाई, दिमाग इस्तेमाल करो, ऐसे ही डिसाइड कर लिया। Juicy now in position. पोपा There's बेचारा the wall इतना of the ये guy, and फेक he's on करा top था of तो it वो to keep करा tabs था। on Waterfall. फर्क ही नहीं है। A different एक shot. टाइम The पता है ना showstopper पोपा we've been एसेंट talking में 4 about. लोग बैठे Doesn't थे। get the take, हाँ। but does damage to his backside anyway. में। Yoshi on board, and here comes अरे the भाई three. हम लोग ने The 2 लोग को damage from Scars. विमेन पे मारा, ठीक है? बैठे 2 लोग बैक साइड में हाइड है, राइफल राउंड है, इको राउंड नहीं। They still get it done anyway. In the scrap भाई match, they मैं हम stand. क्या राउंड देखे भाई Juicy, इंडिया I'm में तो surprised he stayed alive for that long. They still have the ऐसा pink राउंड shell खेले, again coming through. मजा आ जाता है। मतलब ऐसा मैंने CS में खेला था, 1.6 में होता था ना, बनाना 2 लोग पुश करते थे और 2 लोग हाइड रहते थे, एक ट्रिपल और एक इधर। हाँ हम नावी मतलब हाँ ठीक है, पर ये वैलोरेंट में Now because of that bleed, they tied the पोपा game जी up. आपको रीड कर रहे थे बस सब लोग। For comfort for Bleed. But at the very least, they were in बात तो position. सही है, साई भाई का एम, साई भाई का गेम। The Scars was coming from. That's a beauty पर again वो of लेजिट crazy काम guys setting तो that kind of मतलब pace. ऑब्वियसली वो And तो as soon रीड as पे that खेलते wall हैं broke, it सिमर was भाई, already a बट telltale sign for मतलब Bleed. That's नॉर्मली coming. ऐसे ये कॉल को मैं नावी बोलता हूँ, ये वाली चीज को कि 2 जन पुश करते हैं, दूसरे जगह से 2 जन रोटेट करके आ जाते हैं, जो 2 जन हाँ अरे वो गलत तो नहीं, हमको पता नहीं था बस। नहीं मतलब देख और स्पीड में बोलता हूँ, 2 जन पुश। वैलोरेंट जैसा गेम है ना जिसमें तेरे पास इन्फो गैदरिंग एबिलिटीज ये वो रहता है, उसमें जनरली लोग ये सब नहीं करते। नहीं पर उसका स्ट्रक्चर रहता है भाविन भाई, तो कैसा रहता है कि मान लो असेंट है, ठीक है, 2 जन ए पे खेल रहे हैं, मान लो आपका केओ और ओमिन ए पे खेल रहे हैं। नहीं 2 नहीं 4 ही चाहिए मेरे को एक साइड पे, 2 का हिसाब ही मत लगाओ। 4-1 मिड ओपन, 4 ऑन साइड। शुरुआत भाई तेरे को क्या लग रहा है, मैं राउंड स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। हमने राउंड स्टार्ट में बी रश किया, 2 लोग को मार दिया हमने जो आगे थे, पैरानोइड थे ना, उनको उड़ा दिया। फिर 2 और बैक साइड में हाइड बैठे मतलब बैरियर से। मिड राउंड का बात मैं समझता हूँ गॉडस्पीड भाई, मैं अभी राउंड स्टार्ट बोल रहा हूँ। A lot of the big momentum swings come into the fold. Yeah, timeout here called by मजा आता Scars. था मेरे को तो। And you can feel already that they. मैं ऐसे ना इजल फ्रस्ट्रेटेड, बोला ये क्या है, तो उसके बाद से हाँ उसके बाद से ना मैं सिंपल बोल दिया, मैं बोला मिड लो देखो, जो जगह प्रॉड करते हैं ना, जिधर ज्यादा सामान आ रहा है उसके अपोजिट साइड भाग जाओ, सीधा भाग जाओ। Exactly, it can't just be a one-man show. These Scars are not going to beat these guys. और फिर बाद में मैं इनको बोल दिया गाइस, 2 मारो, 3 मारो, 4 मारो, 5वां फिर भी एक्सपेक्ट करो। मैंने काले भाई को बोली थी, काले भाई को मैंने बोला कि काले भाई योर प्रॉब्लम इज यू थिंक। हाँ कौन है काले भाई? allows Autumn, Scars Autumn. to more success.
ऑटम बोल के ऑस्ट्रेलिया का you think logically मैंने उसको बोला था हाँ मैंने उसको बोला हेवन में ए शॉट में you kill first expect second kill second expect third kill third expect fourth kill fourth expect the fifth guy to come और ठीक मैंने बोला उसके अगले दिन हमारा मैच था उसमें वहाँ 2 जन को मारा वो चाकू लेके जाने लगा तीसरे जन उसको निकल के मारा ये शॉट वो फर्स्ट शेट मैच खत्म हुआ आया मेरी तरफ हंसते हुए या इसका आर्मर ऐसा ही है भाई इनका ये ए रश डिसाइडेड है वही कर रहे हैं वेरिएशन है और यहाँ से फिर वो सीलिंग कंट्रोल लेने जाते तो हैं इस बार गए क्यों नहीं पर अल्ट है उसका स्किल जॉय अल्ट है सामने वाले के पास तो और जरूरी है ना सीलिंग कंट्रोल हाँ जरूरी है मैं बोल रहा अच्छा इनके पास भी है हाँ ठीक है इसके ब्रीच अल्ट भी है हाँ ब्रीच अल्ट है तब ठीक है So Bleed, that's great counter ultimates there. Yeah, it's so hard, of course, to break that with the paint shells. Instead, when they get the rolling thunder, Yoshi caught out बच गए ये राउंड तो immediately. निकल Allen गया with snake bite towards door. And it's Bleed here, still prepared. Juicy gets that kill. Scary spotted on मैं नहीं Alto. बोलूँगा Juicy again with another समझ चुका मैं one. And पनौती here लगा comes the रहा हूँ spray down from Allen too. At the very least, Scars going for the clear. But Darion wants to मैंने be नहीं बोला crucial in the round. The Odin though. भाई बजाज भाई आपका भाई बहुत गंदा वाला कर्ज है बजाज भाई मत करो आप मैं नहीं नहीं बजाज भाई मत करो प्लीज उसके बाद लगिया का फोन आ रहा है They get the round two. Big What the fuck is your problem? coming in from Allen from that door, applying pressure, making sure that B main hold had to get aggressive. And when they मस्त बंदा है भाई हाँ बंदा बहुत अच्छा है हाँ आप मिले थे ना उससे हाँ बात भी किया था अच्छे से A bit of attention there towards the site itself. He waited for that signal for the paranoia. Went for the push himself. You know why you like Harvard? He's Indian. Scars is not you're very partial to find these fights. Because he's Indian, you think he's good. अच्छा ऐसा बोला और हर बार थ्योरी होता था कुछ भी बात होता था ओके व्हाट कॉम अभिषेक आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट हार्बर बिकॉज़ मैंने ये जो वाइपर हार्बर कॉम जो भी नहीं चल रहा है हार्बर आया था मैंने तब बोल दिया था इनको कि ये कॉम बन जाएगा ये मेन कॉम बन जाएगा बहुत सिंपल था ना वो हाँ अभी जब से लाउड खेलने लगा उसके बाद उसने कुछ बोला क्या नहीं ना और मैंने लोटस के बारे में बोला था क्या बोलते हैं नियॉन ब्रीच सेज ये 3 एजेंट बहुत अच्छे रहेंगे हाँ उसमें बोला ना सेज इज नॉट जेट नियॉन की जगह जेट लाया नहीं जूसी को बहुत अच्छा नहीं माना तो खिलाते क्यों नहीं ये लोग नियॉन स्ट्रांग है नियॉन स्ट्रॉन्गर है नियॉन बेस्ट है भाई गणेश का भी तो कर्स है भाई गणेश बोला कि ये काउंटर नहीं कर पा रहे और रिटेक कर लिया पर आई थिंक सो ब्लीड के लिए बेटर है अगर ब्लीड ये मैच हारे मेकअप का ब्लीड को कॉन्फिडेंस हां ब्लीड को थोड़े वो इश्यूज हैं ओवर कॉन्फिडेंस वाले तो अगर वो जीतते रहेंगे ना तो फिर लास्ट में जाके दिक्कत होगी पहले एक मैच हार जाएंगे तो फिर मेरे को तो नहीं लगता लोग जीतेंगे You could feel a bit of that hesitation from Stars, but it's too क्या लगता है as we कौन got जीतेगा Jemkin back in position. अगर ब्लीड फ्रैंचाइज नहीं गई Watch out for the nightfall here though coming from Scars. The res available तो मैं now कुछ नहीं for बोल Bleed. सकता आगे का बोल है कुछ पर बोल नहीं सकते ना कैंसिल हो जाएगा एग्जिट Slow orb there, preventing it again from Scars. Engaging early. In the meantime, Bleed there to take the fight towards Scars. And Jemkin is the first of all. Crystal 2 has been pinned down and taken down at बोला the same time. बस हो गया जूसी बोला बस हो गया रीटेक for Scars to play from that air, but Yoshi भाई again. He's Yoshi अभी भी ready. जिंदा He's है fighting. बस Neff is here though to play close, and the blaze of मेरा Juicy. जूसी को लेके ना बहुत एक फेवरेट स्टोरी है More chance and one क्या? more kill. 3 हम down लोग लाइन and look का who's टूर्नामेंट flying का in फाइनल win. खेल रहे थे Scary's 2-0 there, जीत रहे and थे it's quite a nightmare for Scars. आइसबॉक्स मैप आया
थी ओपोनेंट में वो लोग थे रेड को लोग और हमारे यहाँ ब्लीड एकेडमी ये थी जो एकेडमी था हम 3 समथिंग 3-5 या समथिंग हार रहे जूसी 0-7-0 मैंने पॉज लिया बोला भाई 3000 है एक जन के पास काइजी के पास 3000 थे क्रेडिट्स मैंने बोला इसको वैंडल ड्रॉप दे जूसी वाला जूसी तेरे को मेरे पे भरोसा है हाँ बोला ये वैंडल ले ठीक है मिड पे जाके फाइट ले पहला फाइट लेना दूसरा लेना तीसरा लेना चौथा लेना पांचवा लेना ठीक है कैसे प्रोग्रेशन रहेगा मिड से ट्यूब की तरफ जाना ट्यूब अंडर ट्यूब जाना अंडर ट्यूब से पूरा बी की तरफ घूम के बी मेन वाले मारते हुए आना और केजे को बोला उसके लिए टरेट बैठाना मिड पे अगर वो लोग मिड पुश कर रहे हो पहले और बाकी सबको नॉर्मल ए और बी जैसे नॉर्मल उसने एस लिया वहां से राउंड पूरा मैप बदल गया 7 आई थिंक तो 7-1 हार रहे थे हम वहां से हम 9-7 जीतने लगे तो 3 नहीं जीते क्या वो फाइनल्स नहीं फिर हम हार गए 13-9 वो मैप अच्छा हम 3-1 जीते मतलब स्टोरी ऐसी प्रोग्रेस हुई तो मेरे को लगा वो फॉलन वाली स्टोरी डिड यू कम बैक नो ऑफ कोर्स नॉट बहुत मस्त कई बार आपको टाइमर में कुछ नहीं बोलना बस बंदे को कॉन्फिडेंस देना मजा आ जाता है भाई ये तो थ्रो किया है इन लोग ने थ्रो ही है नहीं थ्रो ही है ये भाई वो सीज आया तो थोड़ा टाइम रुक के भी जा सकते हैं ना बिल्कुल What did we just witness there from Scars? What just happened with a single bulldog? ये राउंड मेरे हिसाब से इनके पास सेज का अल्ट है ब्रीच का अल्ट आने वाला है आई थिंक सो ये लोग को सी जाना चाहिए Flawless thirsty Bolte. And even in these thrifty rounds, ब्रीच को और दिलाओ ब्रीच को प्लान कराओ ब्रीच अल्ट आ गया ये राउंड सिक्योर So fantastic the way they're able to bring it back. Opener here. कैसे मारा भाई? Off the fadeaway, they line up and he rolls him down. The assumption that the aftershock was enough to force him away. And Toraneko saves the day there for Scars. It's still not enough though. We're not done. Bleed. They have a bit of money to work with, a few rifles now in hand. डेरेन को ऐसा मार के बिठा दिया भाई वो तो. Again, it's such a अच्छा close उल्टो game. लेगा. Such a shift of this momentum for Scars instead. Ranked after Watchparty? No guys, I don't think At the cusp for Scars. ना स्ट्रीम करेगा रे बंदा बेचारा सुबह से स्ट्रीम कर रहा है अभी वॉच पार्टी भी कर रहा है फिर बोलते उसके बाद और रैंक भी खेल What is expected of them? They cannot go down here without putting up कल से है प्रैक्टिस वैसे तुम लोग का कल है हाँ कल सैटरडे है ना संडे कल संडे है They do put more pressure towards Door this time around and a good stun but Crystal not spotted as of yet. He has crossed, but he's found rather by the turret himself. खत्म है ये राउंड उनको पता है खत्म है ये राउंड swarm onto the site here. कुछ तो ले लो क्या कंट्रोल ले रहे लिया सीलिंग कंट्रोल लिया वो चोमो है भाई जो भी उनका वाइपर गंदा पोजीशन में What a find indeed. At least there's the stall potential here Oh, from Bleed. But Scars now swinging, and there Yon gets Crystal first and foremost. This is Bleed with the advantage. It's all left the champion in the 1v3. He's done heroics before, but crazy guy, he wants to be hero this time around. 2v1, juicy and scary. Different angles to work with. Makes towards the doorway. Scary still holding the angle down. Juicy also with the noise, and Juicy gets the job done. हाँ उससे दरवाजा ही नहीं खोला Nobody giving things up just yet, and with the way that this is going, we will certainly be going to the final round of regulation. Another overtime possibly here for the third and final lockdown on either side. How are you? You can see here that for a team like Bleed, they recognize that sticking to what is expected is what will kill them. They suddenly pivot into that B link because they know that they've been establishing A main. मोटा हो गया भाई, what the fuck? इतना मोटा कब हो गया It sets Scars to think there's going to be an A hit. What do we get here? Juicy ज़्यादा वेट कर लिया नहीं juicy हाँ वो बहुत टाइम से हो गया वो हाँ क्या GXR से तो ज़्यादा हुआ हाँ GXR से ज़्यादा हो This match point going. अरे अभी hold it down. GXR के बाद पूरा टाइम असल में क्या है बूट कैंप में रहना पड़ता है ना और जो बूट कैंप था वो थोड़ा अजीब सा जगह पे मतलब वहाँ पे आसपास कुछ है नहीं उतना खाने का तो मंगाना ही पड़ता है
तो क्या हो मंगा तो क्या हो तो बाहर का ही और मंगाना पड़ता तो वही बाहर का अनहेल्दी खा के मैं भी डेली बाहर का खाता हूं मेरे से तो they have to respect it, and Metabolism. with those Odins, that barrier falls immediately. They rush on over towards the A side. जिस बहुत बचता है उसने कर Hearing them सकता first and foremost alongside सब Neko. एक ही टाइप And का as थोड़ी हो Bleed सकता now है look for that A setup. बचता है, It's कोई Scars नहीं बचता who will try to rotate and follow. But they burned a lot of utility to get within that C mound a while ago. Now through rubble into the A site. Another A site hit to come on in here. Allen trying to chime on in, trying to dip into the fight. He gets a kill. Crazy on the trade. Yeah, there you go, 4v4, and Crazy Guy trying to get back in position, but Crystal finds Juicy. Oh, it's nice. Scary though, still on side. And Oh, flips bhai, all nice, over Scary. finds Soroneko. Crystal's Odin though. Scary Brings in the Bolte. damage. Beautiful Here round, bhai. comes Crazy Guy. Beautiful. And there's Neff as well. Any angle for Bleed. क्या ये They will OT take the होगा? opportunity, and होगा। here they are on PGL serious. है क्या अभी? ओजी को बुलाओ A यार last जल्दी minute push. Who? Rotating around OG. from C to the opposite side of the map. A side finally working out here for Bleed once more. And you can see them here. ये दो kill बहुत Scars important थे on this Scary के. retake, just not as cohesive in when they peak this angle. It had to be at the same time when they address that A main position by Scary, but due to him being able to isolate them, they get isolated, taken down. Yeah, and there's the coordination that we expect from Bleed Esports. The way that they're able to recover in utter chaos. And now, it's either we go into overtime or we go for that Bleed victory. Scars, they know that there's a possibility for them to keep their record perfect. But Bleed's the one step away from this victory. Bleed. Can they close it out here? Round 24, when it matters the most. Winning here for Scars would assure their place into the playoffs. जेमकिन भाई 4 किल मारने वाले 30 पूरे. But they have to do it here right now to bring it into overtime. From the shadows available for Scary. How do they utilize that Crystal? You can see him Bait and switch posting setup himself there. Judge in hand. Jury's still out on how effective that will be. Yeah, Jemkin's in position and he knows the wall's coming. There we go with the paint shells being primed, but it's immediately Bleed looking to try and make their way towards that B side. It does hold the attention of Allen, but Jemkin is here in position. Juicy already gone. Scars with the advantage, and the judge a big surprise. Jemkin's there too. This time around, Scars able to take the fight to Bleed early on. Overtime, You can see how अरे successful तीन that ही can मारे be. रे. Overtime is accomplished. लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो? क्या? Flawless in the end. Bleed के कुछ comfort zones है हर मैच पे. Scary. Kind of ओ फेस कैम थोड़ा नीचे हो जैसे Pearl में B है, हाँ. Lotus में A है. हाँ. जब भी struggle करेंगे वो वहीं पे जाएंगे. वहीं पे जाएंगे हाँ. पर वो comfort zone है इसलिए नहीं है कि वो comfortable हैं इसलिए. पर उन्होंने statistically देखा कि वो better थे. मतलब उनका rate better है. सबसे ज़्यादा है. तो उन्होंने scrims और reps कर करके उसको अपना comfort बनाया है. ताकि comfort में वही रहे जो statistically best है. Best Even wait for that spike to plant it. They begin the post plant immediately themselves. Yeah, as it should be. When they're going for the plant attempt, that's ये when लोग you भी hit 6 them 12 हार first. रहे. You're gonna have less people available. less वो भी ये गेम के बाद invite कर. And the spare timing, and you're not gonna allow 12 all हो that गया है. attacking side to User set joined your themselves up for the channel. build. आ जाओ और- भाई. Invite करो bro. कितने टाइम होगा भाई 40 minutes का बैक गैप रहेगा. 40 minutes. हो सकता है कम भी रहे. भरोसा नहीं. नहीं रे उतना रहता ही है. मेरे को भी इनवाइट करो भाई हाँ वही 5 में नहीं खेलेंगे. The likes of months already. अभी से फाइट करते Scars, on the other hand, रुक जा नहीं extend मिल नहीं. जाएगा. looking to go for that C भाई, मैंने side instant मिलेगा? where it's हाँ. there, awaiting them. हाँ तो खत्म भी होने वाला है ना. 12 खत्म चल हो. रहा है. हाँ तो होने तो दो. 18 चला गया तो क्या? Glass cannon is what they've opted for. So now you can see them adjust in their play. You'd wager that now on the site executes, they'd commit a मेरे को lot लग more रहा है इसी OT utility में खत्म है. forward and save for the push itself. Are Otherwise, you you don't single, wanna give bro? up a free opening dry peek. तन्हाई. Getting back in हाँ, coverage, बोल. there we have 19-20 Scars में खेलता looking है to ना? hit that हाँ. B side. रॉसी तू Here we go again. है तो Scary, 4:3 repositioning सब में खेलता हूँ. as well. Neps there too. What's with Toroneko 1920. by their own snake bite. Majority Seen this from 19-20 Scars though to try and cover the Majority cross. तो But Nep 19-20 is है. ओ भाई. and Nep Majority के पीछे नहीं dismantling the जाना है, opposition आपको before we उस पे get जाना even started. 5v2, well by 5v9. तो नाइफ था हाथ मेरे स्पेरी गांडू के फिर भी मार दिया Do उसको. get the advantage now. Oh baby. Nothing even खत्म too है, intricate there, Dax. Bleed Just wins simply a 14-12. smoke क्या आप थाईलैंड में बैठ के expiring मैच when देख रहे I guess Scars didn't expect it to.
And then Neff getting those 2 kills. Flawless. They're lined up for him. They just weren't ready for the fight. In the end, Scars just guys, lead 14 flawless बोला है. That's how the round turned out when they were looking pretty good early. Close game था पता है किसने comeback किया है? 6-all था first half. Close ही चल रहा Last time we saw them in this scenario, Scars. दो राउंड एक राउंड दो राउंड ऐसे करके He's the जीते. one in control. Grip League They bro have मुझे at रोज least आती a है. rifle setup. The Size Odin yet still again for asking Crystal. Rezo in 2020. A bit of a timeout right now. Guys 1000 likes करो पूरे, सब्सक्राइब करो भाई को 50,000 पहुंचाओ यार. चैंपियंस का वॉच पार्टी भी तो चाहिए अपने को. करो. Microphone Certainly activated. some incredibly high standards of play we've come to expect from these teams. And they're delivering. But also just a Thailand में जाके मैच क्यों देखेंगे? matters so much right बात now. तो That सही है. seeding going to be a big thing. Scars could clinch a playoff spot in this series if they win this overtime. And what a way to do that would be when the expectations of them were so low. But then you flip on the other side of the coin. Here on Bleed, Thank you Pratham Sharma, thank you. everybody expected them to dominate. Everybody expected them to be that first seed, to be the favorites of this team. We all did. And yet, look at the fight a team like Scars are giving him. Yeah, isn't that the matter of pressure here for Bleed? It's victory or failure. Yeah, Scars, on the other hand, have just been Jaldi, again Shivananda. and again. Courtesy of Pacific Ascension. Shivananda, But at Bleed least is the 50k one चाहिए. just a step away ready from on. that win that they have been looking forward to. The A side looking likely to be the hit. Jemkin knows वैसे भाई कल he के रेस needs का to be in prediction position bro, to fight back Max against Bleed Verstappen won. Esports. Well, let's see it. The Scars hold on. वो तो है. Give us another पता नहीं मेरे को लग रहा है overtime. लक जीतेगा. Finally closed this Bro, series out 2-1. Verstappen bro. It is the अरे rubber. वर्स्टैपन का इजी है उसके लिए. Three हाँ. taking over. Swift One side है executed from भाई. Bleed. वो So ऐसा much lap quicker करते here हैं from भाई Bleed. They're second place picking वाले up the को pace कभी and they कभी. want to test Scars as soon as possible. Crystal, though, he's going for utility बहुत instead. आगे Darian जाता with the है. takedown onto Toroneko. And here comes Bleed खत्म है, Esports. खत्म. Crystal still holding down the line. ये फालतू में किया इन लोग ने. इतने टाइम से रिटेक हो रहा था अच्छे से. ये बार फालतू में गए. उन लोग यूटिलिटी डाल ही रहे थे ब्लीड हमेशा. सफल गए. चलो गो करो गो करो गो 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 गणेश आजा. गणेश गेम में नहीं चालू किया है भाई. गणेश क्या कर रहा है भाई गणेश में बोला. जल्दी आ भाई गणेश. सब्सक्राइब करो जल्दी भाई इधर भी करो भाई जल्दी. गो करो. मैं एक मिनट कॉफी बना के आया तब तक. मैं भी कॉफी बना के आता हूं. तो पहले लॉबी में आ. सब्सक्राइब करो. इसके बाद ओजी का वॉच पार्टी होगा. अभी के लिए अरे आप रैंक खेलेंगे. मैं ब्लैक कॉफी पीता ही हूँ दिन में 3 बार. भाई स्ट्रीम पे भी दिखा दूंगा तुझे. I think Scars is on the radar for so many to get a bit of redemption revenge later on against Bleed if the bracket does go that way. Now then, Bleed Esports taking the stage. This has just been really what they've been waiting for all throughout these months. This is exactly what that we're building up to with another win here in Pacific Ascension. It's just the standard that they're setting for APAC yet again. इस रॉसी सिंगल वो सवाल का जवाब रॉसी देगा. हम सिंगल से. एक मिनट आया. सिंगल रेडी टू मिंगल. सिंगल recover, recuperate, और क्या क्या था? persevere from map number 1, from that flush of a fracture into Christmas Pearl. का कुछ तो था. Now back here in the Lotus. The later additions to the map रॉसी pool. सिंगल बट मिंगल नहीं These गाइस. guys are looking like masters Single. of it, but just Bleed. The stars Bleed over the दिखाओ, scars. सीधे That's what we were wondering. रॉसी लेट्स गेट They मैरिड. aligned कम for ब्रो. this day. It's just incredible. We saw so कौन सा much type का Odin marriage चाहिए value आपको? also from Scars. Something to consider how they have been able to catch out any kind of angle that Bleed wants Game to क्यों enter नहीं दिख towards रहा you. यार? But in the end, it became that scrap fest that Scars has been looking for. business tour Bleed है. was willing to challenge. इसमें Bleed was Valorant, goading him into इसमें it. क्या? And in the end, इसमें it was है still Bleed only up. with that victory. What a last game though. What a series we have seen. And what a fight from Scars. But Guys, it's क्या हो just गया guys? the Black Bleed Singer brand अच्छा आ गया. that knows चलो. how to dominate in successive manners. Who will Well, top rank for OG? भाई मेरे को फर्क The नहीं पड़ता scars भाई. still turns into a scab and they bleed. Mac. What a Top rank series. तो हमको क्या? That was a weird one. I'm not Yeah, gonna I lie, know. but it's okay. We'll forget about it. We'll move on into the GWR would discussion. be That done was better. a GWR game, कौन सा है? and how good is it seeing Lotus played GDR like that? GDR क्या है? All the way to the bitter end. OT in the second map, OT in the third map, and you really can see that Previous name Scars was pushed Forsaken. Bleed No, today. bro. Bleed, though, do hold them off inevitably and will stay undefeated in Group Omega.
and rightfully hold their Rishabh, title yes, as yes. the He's favourite OG team. eliminated, no Yeah, guys, with 2 game Omega, जीता and तो. maybe for Ascension Pacific being the only undefeated God's team there. Rain. Yeah, अच्छा, I mean, especially with पता this नहीं win, guys. right? Just the way that they were able to overcome the deficit Excellent. earlier इसको on, ये come back into come this, on, force डब्बे को another pick किया. overtime. So I'm impressed by Scars, but they might just have their number soon. They've been meeting expectations against some of the toughest opposition. It has been Crappy versus Orangutan, Scrappy also versus Scars, but in the end, it's still the win that matters for Bleed Esports, even in overtime. Yeah, 29 and 18. Jem Keen just couldn't quite drop that 30 bomb. And even if he did, who knows if that would have changed the outcome. Bleed, they did it by committee. You're looking at the kills there. It's 21 at the most for Neff. In terms of impact, though, Juicy with those Blade Storms. Going towards the end of the map, you saw him playing, you know, from the back of sight, just updrafting, getting kills, keeping Bleed in it, even though Scars were making the comeback happen. Oh, what a game. There was just so much that went down in this series. Neff too, he was just so stellar here for Bleed. He actually top fragged that game, but it was more of the way that he was able to set everything on up. His aftershocks were crucial. So many times on over and buying time, the stuns too. And you can tell that Scars, that loss, that's one that's going to haunt them for quite a bit. I'm sure it's going to stay in my mind. I mean, it's just got that close, right? And big props to Neff as well. He's been a bit more of an unsung hero Pearl, here for हम लोग को Bleed यही Esports. क्यों मिलता है हमेशा? पता नहीं बहनचोद. Pearl या तो Ascent. Hello boys. क्या खेल रहे हो भाई? ले लो फिर The मैं boys. पिक करता हूँ. Yeah boys. Oh my god. Bye bye. क्या ले लो? Bye bye. क्या लूं? Bye bye ले लो. Bye bye. सिमर तू किलजॉय खेल. विम तू एस्ट्रा खेल ले. मैं ये खेलता हूँ. Harvard. रॉसी किधर है? गणेश. गया ना, वो भी बोल के गया 2 मिनट में आ रहा हूँ. कॉल जा रहे हैं यार एक-एक करके. ये मत को दसा है. क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? अच्छा क्यों मची? अरे अरे हाय दुनिया दे विच चिरू नाम जिलो Phoenix. गाइस चाय पी लो गाइस. चाय पी लो. लो चाय पी लो. पोपा बोलो भाई. क्या ही बोल सकते हैं पोपा, आप तो बड़े आदमी हो, आपको कुछ बोल सकते हैं हम? आप बड़े आदमी भाई. फ्रेंच फ्राइज प्लेयर. बड़े आदमी तो स्किल्स है. स्किल्स तो फिजिकली मेंटली सब बड़ा है बहुत. नहीं मेंटली नहीं बोलूंगा. मेंटली बच्चा है भाई हमारा. हाँ. 3 things you like Yes, about there is Korea. another harbor fighting Bro, us. weather का And पसंद yes, था, अभी he पसंद also नहीं. has an artifact. क्यों? Find क्या it. पसंद है इधर? सिटी पसंद है जो जगह में हूँ इधर. ऐसा कुछ Need that ऐसा back. कुछ पसंद तो नहीं अभी के लिए. ये बाहर भी नहीं जाएगा. भाई पोपा जब आया था ना बहुत ठंड था भाई. अभी इधर मुंबई से गर्मी होता है ज्यादा. आज तो 32 Need था. that back. क्या बोल रहा है? मुंबई से ज्यादा पागल हो कर गया तो नहीं है. 20 मिनट चल के आया. ये क्या है भाई? सर हार्बर चला रहे हो? Matchmaking bro. Reloading. चलो ये चलते हैं. Reloading. Reloading. 8 और ये स्प्लिट करते हैं. मैं 8 आ रहा हूँ भाई 8. आप 9 मैं और किलजॉय आते हैं. चलो 8. साइबर टर्रेट नहीं लगाओगे? ओ आगे लगाऊंगा. लेट्स गो. Turret. डबल डोर एक साउंड आया. हर भाई ये वॉल देखो ना गाइस. क्या है? साइबर इधर. मार्क कर. Placing सीक्रेट swarm पे कैसे? grenade. मैं डिफॉल्ट फ्लैश कर रहा हूँ. क्या प्लांट करो. राइट पे करना कुछ मेरा नेट टेक. अब फट जाएगा तेरा. The fuck? Planted. Reyna killed. ठीक है जी. अचानक क्या हो गया भाई इसको? -120. अच्छा मर गया. एक साइड जेट साइड. एक सीक्रेट. Reloading. 60 -60.
सा ज़ेफी ओके अरे 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 सना ना हो गया है। कोई नहीं That's a good run. हाँ शायद तेरा नेट का रेडियस था स्पाइक आधा था रे आधा। You are mod निकलियो bro 32 मेरी हालत खराब हो गई, इसकी कमजोर हो गया है। क्या यार करें? क्या हुआ पापा? सुना नहीं। पब्लिक बोल रही है 32 डिग्री में हालत खराब हो गई, कमजोर हो गया है गणेश हमारा। मैं कमजोर भाई इधर चल के कमजोर हो ही रहा हूं भाई। फ्रेंजी नव्ड, हाँ यार नया फ्रेंजी का स्प्रे पैटर्न ही नहीं सीखा हूं मैं। Blinded. कह रहा अरे बाउंस हो गए। ओह इधर रह सकता है। हाँ केओ केयर कर। Have I told you you're okay? You're okay, fam. Good evening. ये चलना है। अपन 8 और ए स्प्लिट ही करते हैं। मैं बी पे बस ये डाल के आता हूँ एक बॉल। अरे और दिलाओ ना रश करते साथ में। ए पे और दिलाओ, आ जाओ स्काई और मेरा मिड फ्लैश क्यों लग मिड ले रहे यार। फ्लैश करो एमएन। साइफर है। हां मिड पुश मेरे से मेरी टैंडम पड़ी है, ले लो। टॉप में आ रहे हैं। हां क्या 8 दो लोग 8 सप्रेस्ड हूं मैं। टॉप में ऑलरेडी है। दो लोग पड़ा उसको। रुको मैं आ रहा हूँ इधर से। ड्रॉप करो। एक और क्लोज राइट। वो लो है डैश किया उसने। दो लोग बार है। बी जा सकते हैं, सब बी जा सकते हैं। बी को बोलता हूं। Reloading. भागो भागते रहो, रुको मत, मैं बोलता हूं आपको। सीटी आ रहा है, ठीक है, सिर्फ सीटी आ रहा है। That's done. Hawk out. Placing sentry. तू स्पाइक है। हेवन देख रहा हूं। Spikes down. एक लिंक कर रहा है शायद। सीटी तो क्लियर है, ठीक है, लिंक कर रहा है। फ्लैंक के लिए फ्लैश किया। लास्ट सीटी है। फ्लैश है तेरे पास। Flash. Stop snooping. Popa ji age 25. Battles are won by geniuses, and I am a genius. So. Midase, hey! Taking that back. बी जाते पे सामान डालते हैं। हाँ स्टैक रहेगा। फ्लैश करो क्लोज। ठीक है, करो। ब्लाइंडेड क्लोज। और एक फ्लैश कर रहे हैं। एक लिंक Heads up. Careful now. दो लिंक Reloading. Heal up, squad. One's up. फ्लैश करो ऑल के थ्रू। करो। एक अप प्लेयर है। स्पाइक देना। मैं प्लांट करता हूं। और मैं Someone's B. सिटी ये किल मारो। आप मारो यार। और एक और में मेरा अल्ट आ जाएगा। Where are we going this time? Remember what worked in the ए जाते हैं। मैं और लेता हूँ, अल्ट करूंगा। गोपी को प्लांट दे दो, गोपी का भी अल्ट आ जाएगा। मैं लग करता हूं मिड से आता 8 साहिबा इतना शांत हो गए आज। हाँ भाई, साइबर कॉल्स नहीं दे रहे, मेरे को बुरा लग रहा है अभी। फील नहीं आ रहा ऐसा। और कुछ बेशर्मो। साई भाई सच्ची बता रहा हूँ। साई भाई I'll clip that jet's wings.
रश कर रहा है मैं करके जा रहा हूं ठीक है रुक जा Ultimate ready. देख लें हाँ ये जाने देना इसके बाद जा काट ठीक है स्टार उठा देना स्टार उठा दे इसे 2 8 यहां खड़े ठीक है मैं नॉक कर रहा हूं What a life. बैक डिफॉल्ट Someone's A. मैं लाइट हूं पूरा ये कार्ड प्लांट कर दे प्लांट रीलोड ओ उसको अकेले छोड़ दिया दो साइड बैक साइड काट चिल डग आउट के हेडशॉट पे था वो और एंड अरे रीलोड आ गया लोग ने स्टन में मार दिया क्या तुम लोग को मेरा और मारा रे अल्ट आ जाएगी कुछ समझा ही नहीं इतना सामान आया करूं बी का फार्म करते हैं बी पे मार देता हूं हां चलो केओ का अल्ट है यार हां विम तू पीछे रहना स्मोक करने के लिए ये कर ताई भाई गाली नहीं दे रहे गुस्सा है क्या हां भाई Reloading. Placing alarm bomb. Wave crashing. Can't use that. अपना शो क्लोजर है सकता Can't use that. Reloading. My ultimate is ready. ओ भाई भयंकर डिफेंस चल रहा है इधर Bomb grenade out. Reloading. रुक जा एक और वॉल डाल रहा है सिमर जा आगे इसके पीछे Flooding them. Hawk फ्लैश out. कर रहा हूं वॉल की अल्ट खींचने दे सिमर को रुको What the fuck? Careful now. ओए अरे बैक साइड Bomb बैक grenade. साइड Bomb grenade out. Area is clear. केयर बैक साइड हो सकता है क्लियर Watch your eyes. ए ओपन प्लांट करना Blocking fire. अरे Spikes down. बाय बाय रेडी हो गया आउट Someone's B. ओए अलार्म बोर्ड से कैसे अच्छा बहुत कुछ हुआ भाई इधर तो बहुत कुछ हुआ तूने क्लासिक से तीन को कैसे मार दिया गाना हां एक क्लासिक के अंदर Reloading. वो भी बोलते रहेंगे क्या चुते रहा है चलो गाइस अल्ट आ गया चलो एमेन पे और प्ले ले जाते हैं चल तेरे साथ मैं भी अल्टी करता हूं राइफल ब्रो उधर वॉल था ब्रो वॉल के थ्रू कैसे मारो उसको चुप गया बंदा I got you, bro. रश करो दो से जा रहा हूं है मुझे My ultimate जा रहा कर रहा हूं मैं भी Come on, let's go. अरे Punch your guy there. सप्रेस I suggest you move. भाई सीक्रेट बैक से लीड कर रहा हूं निकलेगा एक Concealment. डॉक कर रहा हूं Bomb grenade out. एक और 8 सीक्रेट केयर नाइस Get that on camera. I feel something. Hey Arjun, welcome Watchparty to का Mini क्या हुआ? Legends bro. Guys, Thank you for becoming a member. PUBG का गेम स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक ये गेम के बाद हो जाएगा अभी भी ऑफ नहीं है लिंक टू भी चलेगा चलो चलो मैं भी लौटा लिंक टू रहा भी चलते हैं एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हूं आया साइबर का कॉल आ गया गाइस चलते हैं तेरे लिए वॉल डालूं क्या रोशी हां डालो उधर से कुत्ता करके आ जाओ तुम लोग इधर से वन साइड रख हां दे सब अशोक दास Wave crashing. गॉड डैश Dash किया किया। कनेक्टर केयर फ्लैश करो क्लोज ओह नाइस पोपा एक और पिलर था एक और है गाइस क्यों था गाइस क्यों है अभी भी फ्लैश किया था बिलोंग रेड शॉट सिटी कुत्ता करो कर साई भाई का एम साई भाई का मैं हेवन देख रहा हूं सिटी I have more tests to run. Ultimate ready. अल्ट आ Make गया sure to guys. follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. अल्टा की अल्ट तो आ गया बट आप कब आओगे चला ये चलते हैं
नहीं ये यार वैसे 3-3 खेल रहे हो लोग। अरे बी चलते हैं आज। बी चलते हैं बी। ऊपर पे प्रेशर कर दिया भाई। कब आऊं? कब? इधर टैलेंट कहाँ आऊं? इधर से दे रहा हूँ। हाँ बोलो डैड। बोलो। पापा मैं चेक करता हूँ यार, एक सेकंड में अगले गेम में इसे चेक करता हूँ। सीधा स्विंग करते हैं। दोस्त कोई नहीं है। लॉबी का लेफ्ट एक और है शायद। ड्रॉप करो। स्क्रीन क्लियर। एक सिटी लेफ्ट में हाँ। हेलो Reloading. क्या चल रहा है भाई धर्मीम भाई? पीक ही नहीं कर रहा मादर चोद। Heal up, squad. Reloading. Now this. Talk out. Don't worry. Don't think it's चलो अल्ट आएगा इस जाते हैं। R2 ही चलते हैं राउंड, ये राउंड R2। मैं आर्ट आ रहा हूँ, मैं अल्ट इधर खेलता है एक याद रखना, हर राउंड एक इधर और एक इधर से बाई से रोटेट करके उसको हेल्प कर रहा है। ओके ओके। इधर लिंक से से आ डॉग रहा करना है है। उसको ही मारूंगा। हाँ लिंक से आ रहा है वो, हर राउंड लिंक से आ रहा है उसको हेल्प करने। वो भी एक फ्लैश कर दे इधर वाली। दिल से Right there. मैं वॉल कर रहा हूँ, वॉल के पीछे डॉग कर लो। हाँ ठीक है। अलिस मर के जाऊंगा मैं आर्ट से। हाँ मेरा वॉल उतरने तक रुकना, 7 सेकंड लगेगा वॉल उतरने। ऊपर जैसा आप बोले। लॉक करो। करो। डबल डोर। मैं देख रहा हूँ, डोर देख रहा हूँ। क्लोज क्लियर। बॉक्स चेक करो। बॉक्स क्लियर। Come on, let's go. लिंक की जा रहा Burn the हूँ। die. ये वाटर से लगा हुआ Water rising. है। एक डबल डोर एक एक वाटर। टीवी से। Shield going up. फिर बैक साइड बैक साइड। वेट सिटी में सिटी लिंक क्लियर। फ्लैश करो इसमें भाविन। Talk out. बाइक क्लियर, दूसरा बाइक क्लियर। और एक कोप के अंदर। Spike planted. आर्ट आ जाओ। बैक साइड रहना। Flooding them. भाविन मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ आवाज नहीं आ रहा है। नहीं मैं अपना देख रहा हूँ बेंचो। एक सीक्रेट। ओए कर रहा है। क्या फ्लैश है? लो 93। डिफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा एक्सप्रेस करो भाई फीलिंग्स को। How's everyone feeling? Good. मैं भी देख रहा हूँ। एक्सेप्ट कर दिया था मेरे को ऑलरेडी। ऑफ बोला ना किसी ने पर बीच में ऑफ। साई भाई को बोलो स्ट्रीम करे। साई भाई आपको स्ट्रीम करने बोल रहे हैं लोग बहुत। रात को करेंगे ब्रो। रात को नशा हो गया। चलो ठीक चलते हैं। कहाँ चलना है? बी चलते बी। चलो पी को भी थोड़ा प्यार देते हैं। एवरीबॉडी सुनो स्टार पुलबैक भी मत कर, डायरेक्ट स्विंग करते हैं। मैं प्लान कर दूंगा जाके। डालू या डालू ही नहीं। डाल ही मत। चालू मैं इधर का प्लान कर रहा हूं, अल्ट काटियो से साथ कर। चलो गाइस स्विंग। चलो गाइस वाइड टीम हो जाए। फक तीन पांचों भी भाई, पांचों भी। मेरे को लगा अपना फिनिक्स फ्लैश तो आएगा एटलीस्ट। अरे स्काई फ्लैश आएगा। कोई एक भी फ्लैश नहीं आया बेंचो। अरे मेरे को लगा वॉल और स्विंग करते हैं बोलने का मतलब था कि फ्लैश के साथ। मेरे को ऑफ देना, मेरे को एक ऑफ लेके यार मार दो। आ जाओ। Don't waste your firepower. अच्छा हाँ थोड़ा ऑफ प्रैक्टिस करता हूँ। चलो Reloading. Oh, do I have to attach legs to the spike now? मैं लेता हूँ स्ट्राइक। पोपा मैं आपको भी ले। नहीं मुझे। वो भी भाई ओके थैंक यू। हाँ कर रहा हूँ। गेम स्टार्ट होने वाला है, इधर गेम खत्म होने वाला है दोस्तों। चली सोलो। ओ पुश कर रहे हो लोग उधर, कुत्ता करके My जाते ना। ultimate is ready. चिल करना अल्ट करते हैं। नहीं जा सकता। गो आउट साइपर भी। Talk out. Water rising. आपका वॉल Turret out. Shield going up. प्लान कर दो। एक डिटेन हो गया। Spike planted. Reloading. आठ लेट। हाँ और एक आठ। Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Flooding them. Someone hey. आठ और क्या रहा हूँ मैं भी। क्लोज। ए लोडू फ्लैश में है पहले बोल। Perfect. Swarm grenade out. स्पॉट देखो नहीं देख रहा। और एक उधर कोने में। मैंने 100 डन, मैंने हील हो गया। अबे वो
मेरे ऊपर कोई काला जादू किया है भाई, ऑप्शन नहीं पड़ रहा है। भाई भगवान से प्रार्थना करो। भगवान नहीं भाई सच में लग रहा है। 8 और लिंक का सेटअप लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं बी पे वॉल रेडी रखता हूँ, आएंगे तो। तू खेल रहा है क्या बी? मैम तू एक खेल लेना। तू 8 और लिंक का सेटअप लगा रहा हूं। Reloading. आपको क्या लगता है मेरे को मजा आता है मिस करने में? खेलेगा को भी 8 खेलेगा मेरे साथ? हाँ खेलता हूँ, इवेंट फ्लैश कर रहा हूँ पहले। अबे तो वहीं से कर देना। अरे और लेना है। अरे प्रॉपर क्लियर। बी 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 BR Walls up. मुक कर सकता हूँ। मैं बैकस्टैब हूँ मैं। बॉल जाएगी तो स्मोक कर दे, स्मोक कर दे। पुल कर। क्या? पीछे आ रहे, 4 लोग पीछे आ रहे। एक स्मोक में था, मुझे साउंड। हाँ 4 लोग पीछे, 4 लोग रोटेट हो रहा हूँ मैं। पोपा आपको मरना नहीं है, अभी बता रहा हूँ। आप मर गए तो को साउंड नहीं है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जब शॉट करते रहो। आई केविन। आई मैंने ऑल 3 4 शॉटेड। थोड़े चालू 135 और दो एमएन। Water rising. नाइस स्क्वाड। राइट देख रहा हूँ मैं। मार्क पे। अरे बुलेट नहीं है। डिंग है। 95। वाह शेरिफ गया है रोड। नाइस पोपा। अरे बुलेट नहीं है भाई। ओवर हील था जे देना और उसी को मार रहा हूँ मैं भी। UPI ready. You must cultivate a sense of calm. ऐसा क्यों हंस रहे हो भाई? थोड़ा सा हुआ है वहाँ पे। साहिब भाई आप तो बड़े ही नीच निकले। क्या हुआ? तू तो बस बोल, तू सप्रेस कर देता लोगों को बहुत सही है। तू तो कुछ मत। साहिब भाई it's nothing that you haven't done for the past 8 years. अरे मैंने एक बार गोपी बाहर खड़ा है। वाह 4 लोग है भाई। 8 लोग। लिंक टू बी। जा उधर जल्दी जाके कंट्रोल ले। स्मोक किया शक किया। 8 एक घुस गए लिंक टू बी। लिंक टू ए ना कि बी। नाइस भाई। एक और। अरे साइफर किधर है? अरे मैं रेडार देख रहा हूं। साइफर इधर वाई पे। भाई। ठीक है। अरे साइफर इधर मैं बिलोंग पुश किया है। टीबीएस कोई फ्लैश हुआ? नहीं। इधर ट्रैप है। बी जाएंगे क्योंकि वो लोग। हाँ बी प्लांटिंग। हम तेरे लिए कंपटीशन दे रहे हैं बेस्ट मोड बनने के लिए। कौन रह सकता है ना ऑलरेडी? हाँ मैं आ रहा हूँ बिलोंग से। तुम लोग आ जाओ पहले, मैं लेटा हुआ। कैमरा से मेरे को देख लिया है। एक साइड सिटी है। -80 दोनों साइड गए अभी। चल भाई मिड फाइट लेके खत्म कर। चलो मिड आने वाले। Watch their movement. Study their patterns. Eco? Exploit whatever you can. We know best one. मिड फाइट नेक्स्ट राउंड जज खेलूंगा। पोपा आपके लिए मैं कुछ भी खेलूं। टॉप मिड में ये डालूं क्या? वॉल डालूं? कास्केट नहीं उड़ा दो ना। आ रहे उससे। हाँ तो वॉल के थ्रू भी आएगा ना। लोगो है तो भाई इतना बर्फ इन चैट। अरे मैं स्विंग करता हूँ तो मेरे उस पे भाविन पिक करके मार दे। दिवा कर रहेंगे दे ब्रो। तेरे कंट्री वातावरण। एक एम है फास्ट। मैंने स्मोक कर वॉल कर दिया। इसने वॉल किया, मैं शक करूंगा। कैमरा विंडो पे लगा है। इसके थ्रू फ्लैश करके जाने की बहुत इच्छा हो रही है। 5 लोग हैं। ये बैक पर ट्रैप भी लगाया है उसने। मैंने पूछा कि रखना, जब घुसते रहेंगे मैं वॉल करूंगा। वॉल और
वो लोग आएंगे नहीं शायद, वो लोग आएंगे नहीं, आपके तरफ आ रहे हैं। मेरी तरफ है, दो भागो भागो, अभी जिंदा रहोगी, जीत जाएगा। डैश कर दिया चूती ने मेरे पे भाई, टॉप मिड। रुक गए तीन। All out mid. 8 आ रहे हैं। एक और है, सप्रेस तुम्हें, आठ फाइट नहीं ले रहा उधर। 8 घुस गए 8 फ्लैश पिक करो ना। नहीं है, फ्लैश नहीं है। ओ भाई, एक और। I know exactly where you are. यार एक और है, फक। वो भी अल्ट है। अल्टी कर रहा हूं मैं। एक गेम है ना यार। एक गेम है ना। ओके, वन ऑफ नाइस। मेरे पे था। साइड में नाइस पॉप। All targets clear. ये लोग पागल है भाई, ट्रिप क्या थोड़ी भाग रहे हैं। Once we win, just dump all your tech in my lab. When is the match starting? बस ये गेम अभी हम लोग का हो जाएगा, उसके बाद वो गेम चालू होने को आएगा। गाइस, और लग गए गाइस। Sentry. पोपर नहीं, वीक ड्रॉप इज। Placing alarm bot. थैंक्स बोलते। गणेश जा, इधर जा गणेश। इधर जा और फ्लैश होल्ड कर। काम करता हूं, बैक साइड ही नहीं दूंगा इनको, बैक साइड के नेट्स डाल रहा हूं। गाइस, मैं तेरे लिए वेट कर रहा हूं। लो जल्दी जा। क्यों हुई तू? ओ दबरा। मिड। कोई नहीं, डबल डोर किया रहा, मिड लिया था एक ने। अच्छा आप क्यों मर गए भाई? अरे बैंचोद वो शक कर रहा था ये। पीसी बोलते। लिंक केयर गाइस। वाई कह रहा तुम लोग के पीछे आ सकते हो गोपी। हां ठीक है। वाई फ्लैश पिक है, दो लोग हैं। दो आर जाते रहो, और आर पर जाते रहो। एक और है, जेट मिसिंग है। -120 हार्बर। I स्पाइक जेट अननोन था, हार्बर ही अकेला दिखा था और वो लो है। स्पाइक तुम लोग के पास है। अलार्म बॉट है। ठीक है, देखते रहो। Alarm bot out. नाइस अलार्म। मैं दोनों जगह सामान लगा दिए। ठीक है, 8 देख रहा हूं। मैं तो छुपा हूं, इधर ट्रिगर होगा, फ्लैश भी करता। हां। एक्चुअली रुको, ऐसे ही रहो। हाय 15 सेकंड यही आना पड़ेगा उसको। अरे वो Bot सारे coming back. सही भाई मारो, ऐसा नहीं जीतना है हमको, मार के जीतना है। सही भाई जीत गए। चल जीजी नहीं मिला गया। चलो गाइस, Who's up for a debrief? BCT waiting for you bro. इसको कैसे बताऊं, 4th आया हूं मैं। ओह शिट, भाग गए एकदम, टिल्ट हो गया बंदा। यही तो चाहिए, सामने से टिल्ट होने चाहिए लाइफ में, मजा आता है। यस साहब रैंक अप हुआ फाइनली। लोड़ा रैंक अप हुआ, 2 हार के। तुम लोग 2 हारे इसके पहले। हां भाई, कैसे हार सकते हो भाई? 5-13 6-13 अनएसेटेबल गाइस, टोटली। चलो भाई मैच देखे, भाविन की स्ट्रीम खोल दिए। चलो चड्डी खोलो भाई, चड्डी खोलो। चलो गाइस, गेम शुरू हो जाए। पानी चाहिए भाई, पानी लेके आ। Oh, we're back. Hey, इसकी तरह डोले बना लेते। Welcome back to VCT. डोले क्या होता है? We were just Biceps. sharing some fun stories of our Valorant life cycle here. But of course, the game is not too far away now. What's so funny, huh? Yoru is the best Valorant agent to ever exist. If you don't pick him in your team comp, your agent comp, you're doing something wrong. To be fair, we were having a conversation earlier about the potential skill ceiling of his high expertise kit. You can actually get real deep into it. Either way, look, that's not what we're here to talk about. We're not going to be seeing any Yoru today, but we are going to see some kind of maps. Do you guys have any idea where we're going? Ooh, that's a good question. I need a second. Honestly, I feel like Orangutan is going to try to steer this into maps where, again, their capability for that aggression is going to get the most value. Maybe we could be looking at Pearl. You're a very maybe funny even CC. Haven, so mayhaps, I think. I
think you would want to avoid certain maps, and that would be Fracture, because that's where we saw D+ actually kind of I don't think मैं कभी CC नहीं really unsettling behavior. Meanwhile, for Orangutan, you want something small, something with Stream a lot तो more करूँगा, stream करना maneuverability. पसंद है. इसका मतलब नहीं Haven, CC. ठीक है. maybe Bind? Bind, you reckon? Yeah, I think so. I feel like I've liked what we've seen from Orangutan so far on Bind. We also saw that series yesterday with DPLUSKIA, so it is a shared map, of course. Both of them pretty interesting in how they approach it, though. So, look, I don't know if we're going to... Sai-Bhai ka aim, Sai-Bhai ka game. Sai-Bhai ka aim, Sai-Bhai ka game. Chutney kholo. Maybe. User joined your Sai-Bhai channel. chutney I feel like kholo. It feels like unless someone sees something they don't like from the other team, they just want to get it out of there. आज इधर बोल रहा था चड्डी खोलो चड्डी खोलो मजा आता है मेरे को ये सब है भाई हां नीचे आओ जरा really similar to like how फिर से लोड़े लग गए क्या User left your channel. I don't know. I don't like that. I don't like ये it. आदत हो गई है User left your Because if you channel. have like problems dashing in, you For know. which one? For which one? Ascent. I'm not a big fan of Ascent. What? Not! You were telling me you want Icebox back in the pool. Everyone shun this guy. Like, it is fun. It is a great map, but shun him. Shun him real quick. Quack, that's you. I need you to shun him. You need to channel your Twitch chat. Quick. How do I do? What do I do? Shun him. Shun him. Shun him now. He's my buddy. I'm gonna keep him on here. Anyway, I'll save you out of this one because we have the players there ready, and it's time to figure out what maps we're playing. We're gonna go ahead and get our match 3 map draft underway. Yeah, don't give timeouts without warning, guys. Don't give timeouts without telling them, guys. Ban Lotus. Ban Lotus. DK, you're banned. Ban Split. Lotus हमेशा ban करते हैं. First map pick. Orangutan. Pick Bind. Oh, Heaven मिला भाई इसको. Side select DK. हाँ? Oh, कुछ तो है भाई. And second map pick DK. Attack. Haven. User was moved out of your channel. Side select Orangutan. तो आगे है क्या refresh किया जाए? Haven. And Fracture Pearl remaining. Your first ban. Ban Pearl. Ban Pearl. Final map ban DK. Ascent Fracture. भाई ओजी के अच्छे मैप्स है. Fracture ban. पोपा जी आप भी बहुत अच्छे हो. And then side select. Orangutan. पोपा. हाँ, thank you So bro. let's review real. Love you too. पोपा मेरे लिए अच्छा पिक तो आप Lotus है. ban, split ban, pick bind, attack. बस तेरे ऊपर दुनिया नहीं चलती ना. Fracture ban. What the fuck? Final map ascent. Defense. All right, best of luck. Puma versus Adidas, guys. Puma versus Adidas, guys. Oh हाँ यार, Puma was Adidas. Let's go Rishi. अजीज़ात मारना चाहिए. Puma, guys, but मैं Adidas का शूज मेरे को पसंद है, guys. Puma का कोई नहीं. हमारा टीम में तो एंटी आज खुशी से सो रहा है, guys. फिर तो जीतेगा. अरे मतलब आजा टीएस क्या इधर बड़बड़ कर रहा है? एंटी लुक सेज और मतलब चड्डी खोलो. ओ सब हंस रहे हैं भाई, आज क्या हो गया? इसको गाइस आज जीते गाइस. वाइब आ रहा है एकदम. मैं तो पहले ही बोल दिया आज 2-1 ओजी है. भाई गाइस फिर पता नहीं गाइस. आदत चल. फिर पता नहीं गाइस. वो CR7 का सेलिब्रेशन है. अरे पता है गाइस, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोला तो. User left your channel. Guys ये भी हंस रहे हैं guys. Solo and guys, the Doc, जीत गए guys. Which one's going to be doing the most behind the scenes to help both teams take that dub today? That's the big question. Solo, of course, a lot of experience, a world of experience in the world of FPS. He's been around for a long time.
And hopefully he's done enough work to try to get that confidence back for DPLUSKIA going into today's game. But the doctor, you know that he's going to be able to give the right medicine every single time. But is there enough to calm down Orangutan's crazy playstyle? That's a big question because this map beat-up feels like it has been steered toward the favor of Orangutan. Look at the first map, it's going to be a map where they won against Global Esports and double-edged sword. This is also the map where we saw D+ get absolutely bodied. Well, not so much. I mean, it still went in that overtime, but still get bodied by Bonkers. So there's definitely good starting history here in the group stage that favors Orangutan again for the map. That's why it's a really fun and interesting pick. Both sides have gone overtime on this map. Both sides guys, volume ka bolte really oh, Eraser, your team. Get a little bit worried for Orangutan, and that's where I think the doctor really has to be that leader for the team. Do you think that DPLUSKIA looks better on Ascent than what guys, Eraser. Oh, DK gave Eraser car, guys. I think they actually have a stronger chance than Orangutan just based on how defensive, how defender-sided the map can be. By Godspeed, ho kya? Let's turn the conversation towards Agent Select, of course, kicking things off on Bind. I guess वो नीचे वाले channel पे गए. Eraser owner of DK. नीचे मसाला चालू है. हाँ. DPLUSKIA owner. क्या हुआ True Reapers का? पता है कुछ? I think he has. He definitely loves the fade, but I just can't remember if that's what he was playing. Yeah, it's either that Sky or the Soba. 2x करो. They're playing the exact. तू YouTube पे देख रहा है? क्या बोला? पापा? तू YouTube पे देख रहा है क्या? बोला ना कल YouTube पे देखते हैं इधर. मेरा ये 720p में आता है by Twitch Korea. Yeah, and on the other side of things as well, you are going to see Orangutan go for what works best, right? You've got Raw Fuel on that Jet, you've got Aziz on the Raze, and look, when he's playing that duelist, I always have the hope for Orangutan. They're going to be starting on the defense with double duelist, so you better believe we're going to see them, you know, going for that bathrooms control, going for that long control, going for that mid control at any given point. You know that they're just going to be pushing, so we'll see how DPLUSKIA have prepared and how they're going to be able to stop these aggressive defensive pushes. You know how we talk about the slow play of D+? I feel like if your thoughts on Binks and T1, that's good, bro. They deserve it. Quite risky because again, if you don't get that proper map control and bind, you're forced to always go for the rush. And I feel that's where Orangutan really find their strong point. They're so good at punishing teams at those close contacts that it's going to be quite difficult for D+ to really get any meaningful push if they don't get that map control quickly. It also depends on how they want to play that default, right? If they don't push aggressively, if they're all split up, and yes, you got 3 people swinging, if you're only going 1-for-1 at best, that's usually not enough, especially if you're going to lose map control, because map control in a map like Bind is certainly too important. That's the caveat for me, though, I think, because while this can go either Wagoner better, guys. Mini Cooper better, guys. Mini Cooper Aston Martin का ना पापा? Has some tiny tendencies. हाँ, I think. मेरे को तो बहुत पसंद है Mini Cooper. पापा मेरे को तो आप बहुत पसंद है. गणेश मुझे भी तो बहुत पसंद है रे बाबा. But मैं पहले बोला भाई आप अगर आप बोले ही नहीं पसंद है तो गांडू है बस. I can't wait to see what the doctors prescribe again. I've said it about 3 times this week, and I'm going to keep on saying it. Now, Bind is going to be that first map. You know, DPLUSKIA, they're on the back foot. We didn't get to see too much of them, honestly, up against Bonkers yesterday, and it's their second foray into Ascension Pacific. They're supposed to be a favorite. Let's see if they look like one. Well, as Mac was mentioning, doctors, prescriptions, but you know what I say? To get out of that, Apple keeps the doctor away. If that joke has made you uncomfortable, well, I'll make you feel comfortable, guys. Steel case, play better, sit better. That's true, though. That's true. I mean, hey, the players are sitting on those chairs, and also, I mean, that's how you get a headshot a day, and that's what keeps the L's away. चलो चलो guys. 5, अबे 4, 3, 2, 1. DPLUSKIA. चालू हो गया तेरा आपका? हाँ. अरे YouTube में आपकी किधर है? Can already see Orangutan Twitch pushing so far hard YouTube में देखो भाई. भाई इसके पहले तू मेरे आगे था. अरे able to get that तू X कर ले एक बार. Now that they don't spot anybody on the A side, they're going to be figuring out what's happening here. And Quadra TP. Free side. Nice, Ray. No corner for the wall for him to actually back up on. And Australia looking to maybe at least deal with nice, the angle, but RDK is just too quick. हाँ, रुक ना ये round के बाद करता हूँ. That's going to be XC, kind of watching for it. Spike's been planted, but not a huge problem.
Orangutan, they're already going onto it, trying to get the defuse. They've managed to stick it halfway through, and the rest of the DK players trying to peek on can't quite find the contact that they need. OGS just have way too many. Nice, let's go. Too sharp that they get the first pistol. Well, that was kind of awkward because 𝘍𝐿𝐼𝐽𝐿 got caught sleeping. Maybe because he was setting up utility to throw somewhere. You got those lines. The defuse, they've managed to stick it halfway through, and the rest of the DK players can't quite find contact. हाँ अभी मैंने 2x किया YouTube पे ही हूँ मैं अभी. Double up पापा. Well, YouTube पे आ गया मैं अभी. Maybe because he was setting up utility to throw somewhere. You got those lineup outside of bats. Problem was they didn't expect the quadra TP, so it's like, hey, what am I supposed to do at this point? And then of course, because there was a pistol around, because there was no utility to really utilize for the post plant, even though they have the stars from the Astra, it's not really the biggest thing when like 5 players of Orangutan are there. There's really not much that DPLUS could have really done. Chalo guys. In that situation, makes it very क्या timer है? 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Some of their plans coming into this one. कौन चिल्लाया भाई ऐसे? साहिब भाई. कौन चिल्ला? बम बम. The automatic weapons now. They're just playing it safe. बम बोले. I like this. Nobody going out too far. Meanwhile, for DPLUSKIA, again, kind of playing it safe. They sensed a bit of danger. Get those eco frags, baby. Confidence. भाई मेरे को अजीज का पोजीशन बहुत खराब लग रहा है. DPLUS, we did mention how. अच्छा अंदर है क्या? हाँ फिर ठीक है, अंदर है तो ठीक है. पोपा मेरे को अजीज का पोजीशन खराब लगा, but आपका भी मेरे को खराब नहीं लगता. This isn't a race, this is a shooting game, so you gotta, try to. Guys को kick करो भाई team से. Joking here a little bit, but they can already see DPLUS hoping that maybe somebody gets caught out by 𝐋𝐈𝐍𝐿, as he is just holding on to be long. As you can see, his back is on that TP, so just in case he does get overwhelmed, can always go for that TP play. What's kind of good here is if they Godspeed की stream mute इसलिए है क्योंकि वो मसाला ले रहा है या दे रहा है. Talking throughout the whole thing, they just shift walk all the way through the tunnel. And yes, 4 kills, but he finds that contact instead. Triple kill, triple spray. Allow answers back and picks up one of those specters. Not too bad, not too shabby. But you still have 4 targets on the other side. Rawfield, he's got a bulldog. You start things off with the Nebula. You Godspeed masala trader. He goes in for the spray. Oh, what? मत थ्रो करना भाई ये राउंड. Lights out. Goodbye. Good night. And Aziz comes back into trade. 1 player left. And that's going to be allowed. Trying to pick up Popa, but he can't. Ah, guys, ज़्यादा weight है Popa. Aziz still has the paint shell, so you know what? He's going to save it. Uses the ghost instead. Teammate sticks to DP. विशी अजीज को देता भाई. Orangutan get a good win. Yeah, definitely a good win there. You did mention the shift walk. As I was also describing the stack out, they're just hoping that maybe they can get that contact, but I mean, this is just good enough. They get the plant, they get the kill. Not the worst, especially on the pistol. Focus में लग रहा है आज different लग रहा है. Pressures not too big yet for DPLUS, but now it gets a little bit trickier. Now, can they actually utilize Esperanza's setup with the smoke? As they've been putting that every single round on short, and I haven't really seen it get that value. Yes, they use it on the pistol, but again, they didn't really do so well then. Maybe a bit of mental conditioning. They look kind of sharp, though. That's the one thing that I'm counting on. That shot through the Nebula absolutely domed Orangutan. But talking about it, we go back to some past tendencies. We're taking it slow. We're hovering around, trying to set up. The other thing about them बजाज भाई आ गए. is that when they set up, मसाला लेके आ गए. they have really strong मसाला लिया क्या दिया है ट्रू रिपर्स का. नहीं together as a full मसाला हो जाए. नहीं आपने वो ट्रू रिपर्स के सीईओ ने लिखा ना कि players need to get their shit together. फिर आपने बोला I understand, I heard what happened जो भी है. हाँ मतलब मेरे I'm not sure if that is correct or not. The setups are a bit. They can hear it, they can feel it, and again, if they watch the ball, they should know that this is going to be the hit from DPLUSKIA. Esperanza finds the pick. Allow trying to just go through the mess of things. And somehow actually gets away with the stab. Okay, it's going to be a good one. As Orangutan definitely vibing. But still, it's only Tesseract. Side के अंदर नहीं खेल सकते इन लोगों के सामने. Against Esperanza here. The Vandal maybe, but looks the other direction. Unfortunately, that's going to be it. DPLUSKIA come in swinging and driving through the B side. That's the setup that I was talking about, right? They spend a lot of time. They maybe make a bit of noise.
but they also cut noise away. And with that, क्या लग रहा है वीटो कैसा लगा? मेरे को लग रहा है ओजी के लिए बेस्ट वीटो है। मेरे को भी यही लगा, बहुत अच्छा वीटो गया है ओजी के लिए। Something that I think Orangutan did not expect. And it's a पर lot प्रॉब्लम of ये है ना, डायमंड पूरा एंटी खेलती है ओजी का। Yeah, and again the thing is, पर I लो think if you put that snake bite there, you also take damage inside the tube. And if you're the teammate that's taking the molly damage, you take reduced damage as well. So he doesn't really allow us really have to feel too threatened by his own teammate's utility. But Allow is now looking for that contact once more. Just kind of setting up again. I feel like they're not going to commit into this. A bit of a snake bite perhaps. देखिए just to bait out a little bit more. I think it's going to be a hit, and it does bait. अजीज भाई तो मेरे को पता नहीं, कभी-कभी अजीब ही लगते हैं वो। And this is where things could go wrong. ईगो फाइट बहुत लेता है। अजीज भाई का पता नहीं, बट आप तो मेरे को बहुत to अजीब see them set up and then rotate around. They hear the utility come through, but oh my god, up in the air, it's going to be Raw. अलाउ पहला सुपरस्टार था कोरिया का। 2 players gone now, 3 left to go. ये लोग सब भूल गए हैं अलाउ को। They've set up camp. अगर याद ही नहीं तो भूलेंगे कैसे? Players going through. Antidote tries to find a shot, tries to deny the plant, able to get one. Comes in now. On the other side, we're holding up by Bats, we're holding up by A short, and it's just a tough retake scenario. How can they go in? They've got a little bit of utility, but not many sky smokes to work with. The shots have to be good. Look at the discipline from DPLUSKIA though. Hiding behind the boxes. RVK anticipates it. It kind of lines up for him. He gets the first headshot. Looks over to the other side. What works for them is the fact that Allow is low HP. Goes in for a tap. Doesn't quite get the check. And unfortunately, with 2 angles being watched, Estrella is the one who gets the final tap. भाई पूरा ओजी चिल्लाएगा और उधर से सोलो अकेला चिल्लाएगा तो भी कम पड़ जाएगा। When they got the take or eliminated 𝐋𝐈𝐍𝐊𝐒, so no more activations on those stars, but somehow DPLUSKIA still able to weather the storm, able to हाँ 1. CS:GO में ना। Allow was 26 HP, he was very low, भाई सब but लोग रिकॉर्ड again, करके चलाते he हैं भाई didn't पॉप lose आजकल। his composure. मेरे लिए बहुत ही surreal moment like था Orangutan was in a position where the players on जैसे पहले a short 2019 में मैं एंजल से मिला था। he held his angle and held his own. वो मेरे लिए surreal था because उसके बेसिस पे ही मैंने पूरा गेम की मतलब मॉडल किया है मेरा। अच्छा ओके। और फिर मेरे को MVP के बहुत पसंद था और सोलो एज अ प्लेयर हाँ मैं आइडलाइज करता था उसको। तो वो तो 1.6 से ही खेल रहा है। हाँ 1.6 से तो उससे ऑलमोस्ट ऐसे बात करने लगा था जैसे दोस्त। ओह हर रोज स्क्रीन पर मूवी के साथ करते थे। बहुत रियल मोमेंट था वो। Get him, Tess. Get him, Tess. What have them, Tess? Knowing that he's gotten the frag, wants to pick up the Vandal, plays through this smoke instead. And now that he's got his little present, he's going to be running away. Thank you. Oh, it's there. Honestly, I could feel like he could just try to go for a clutch. Maybe he will because he's running all the way through A short. Maybe he's going to try to go for the flank because he's not stopping. Look at this. He's going to go all the way through spawn right now. And perfectly, Estrella is... No, he actually slowed down just in the nick of time. And the timing for Tesseract is perfect! Does he have time? मैं रोसी में ट्विच ही लगा रहा हूँ भाई, अटक रहा है यूट्यूब बहुत। हाँ यूट्यूब अटक रहा है, मैं ट्विच ही लगा के। नहीं गणेश, सॉरी यार। As I mentioned, अरे बहुत अटक रहा है रे मेरा लाइव मतलब। And the ability has the word well in it, but this is nice this. Yeah, definitely unwell situation. मैं मानता हूँ भाविन भाई कि लोग बोलते हैं कि He almost had it. ऐसा कुछ नहीं होता, पर भाई जब होता है आपके साथ तो एक बार के लिए लगता है कि हाँ वो मोमेंट है। अच्छा इस बंदे को तो मैं देखता था। हाँ वही। आप उसको मिले मतलब रियल लाइफ में मिले कि ऑनलाइन? नहीं रियल लाइफ मिले ऐसे हम रोज बात करते थे, ऑलमोस्ट रोज स्क्रीम करते थे ना। अच्छा कौन सा आरजी की ब्लीड और उसके पहले भी ब्लीड एकेडमी में भी। अच्छा Oh, short baby. The double control. Bleed Academy तो broken था. Twitter down है क्या? हम I think so. But it's actually working for them हमने because total now they're able to separate and 120 scrims खेले होंगे हाँ और हम 15 हारे थे। क्या बोल रहे हो? Anyways, अरे नाइस रे उड़ा दिया अपना। And that's gonna at least lower the capabilities of DK on the push. दे रे एस्ट्रेला बिस्टिले का भी दे। अरे एक एक करके नहीं रे, ये कुत्ता करके अल्ट किया। Coming into it now. अच्छा एंटी का एक फ्लैश बाकी था ना। ओ रफील वापस हो गया। कल भी हुआ था उसके साथ।
Esperanza, you don't have the spike. He was, oh, excuse me. Yeah, Esperanza. Okay, there you go. भाई ये No, तो not अलग yet. पागल As a है. fellow hopper, मैं relate कर सकता Okay, push up. Prowler utilized. Tesseract can't really push through. Has to wait for his teammates, but look at this. Big flag coming in for RBK. If he can maybe spot somebody coming out of that pit, he can get a catch. He can get a very big flag. And Tesseract has gotten 𝘼𝐼𝐍𝐿𝐼𝐿𝐼𝐿. They have the numbers now. All they have to do is मेरे को एक बार के लगा वाइपर को मार दिया. finding where their opponents are. Axie though, going through hookah as well. Esperanza in the corner. Taking out 2 players. It's all up to RBK. You have to guess where he could be, and he's just so slippery inside of this thing. And unfortunately, RBK just does not have the time, does not have the advantage, has to back up out of here and give DK the round. That is true. ये रॉफिल का राउंड था Especially when रे. Esperanza was just so well hit inside his pit. You gotta give it to Tesseract for finding the one player inside, but that wasn't the one that they really wanted. They wanted to be able to finish this Viper pit already. हाँ वो चल ठीक है ट्रेड हो गया उसके बाद भी बोल रहा हूँ मैं. And Aziz just couldn't find him. He held his ground. And that's what you do as a Viper. वो तो डबल पिक करना ही चाहिए. You want to expect again from DPLUSKIA. अगर सोलो पिक कर भी ना तो फ्लैश करके करे एटलीस्ट. हाँ. They go through the तो स्कार्स और ओजी में ये फर्क दिखता है ना तो हम लोग देख आधे से ज्यादा एंगल्स क्लियर कर रहे हैं डबल पिक करते करते. What's the doctor going to prescribe this time? Well, unsure, but ये हैंड वार्मर. वो क्यों हैंड वार्मर? हाँ मैं of things. Warm up It कर just रहे हो. feels like the post plan is not बोल रहा अगले going मैप में in मेरे को the घुसना favor पड़ेगा. of Orangutan, so they need to figure a way on how to get that retake much more efficiently. चलो That's बेचारा the biggest thing. They're not really able बोल तो to रहे. flush out the players of DPLUSKIA. अर्ली गेम ओजी का ठीक है रे. मिडिल गेम एंड गेम में स्ट्रगल हो रहा है. So much of the timers that, well, again, there's just no chance anymore. Yeah, right? I mean, even watching some of these retake scenarios, you often have Orangutan's players working against the numbers advantage. And this is because DPLUSKIA, again, they go through a little bit slow instead. मेरे को इतना पता चला है. Set executes. और क्या ये लोगों से बात करके कि सोलो का खौफ है वहाँ पे. If you're not prepared हाँ for वो it. तो है. So लोग that's what I'm डरते हैं expecting from सोलो से. Orangutan. I've seen the doctor pull off some wins off of time. तो रिस्पेक्ट देते हैं एकदम लेजेंड का. मस्त मस्त. सोपा में भी Maybe आपको not. बहुत I'm not too respect sure. करता हूँ. They're kind of set up around hookah, and that's what I have my eyes on. Oh, man. दिल के I would love to just get my hands on that fighting game. Right. Yeah. With the Radio Night Entertainment System. पता है वहाँ पे मेरे पास एक मस्त कंटेंट आइडिया था. Right now, the entertainment is all Users this ये जो radiance. viewers आते सोलो हैं ना मतलब उनके लिए. सोलो मनन नहीं बोल System रहा combined. गाइस. सोलो कोरिया का Playing. Solo manan. All right, we peeked out a little bit. हाँ. DPLUSKIA. अभी तो सोलो उसका नाम है ना यहाँ पे. Playing it safe. It नहीं was a ब्रो timeout, सोलो so मनन like, नहीं भाई. They might do something. Let's chill out for a second. थोड़ा दुनिया थोड़ा अपना ऐसा ये ब्रॉडन करो. भाई क्यों भाई ये सब क्यों बोल रहे हो भाई? सिर्फ हाँ या ना बोलना है भाई उधर. सब ज्ञान क्यों दे रहे हो? हेलो. तो बोलना नहीं हो गया. ब्रॉडन करो वो करो. सुबह के नहाया करो ब्रश करो. वो सब क्यों बोलना है भाई? वो सब क्यों बोलना था भाई? क्योंकि वो तो तू है. को बोलना था नहीं है सोलो मनन नहीं हो गया. Aziz yet on the contact with Tesseract. Okay, He's there gonna it is. open Pandora's चड्डी box. पहनो ये सब बोल रहे At हैं. least he gets information, because I was just about to say, Orangutan playing this safe, not peeking out. They don't have क्यों that भाई much, अभी but बोलते क्यों बंद here हो it रहा है is. भाई? It हेलो. gives it away. This is गांड the मरा tell. ना. बहुत गंदा पोजीशन नहीं है. Heading into the क्या कर रहा है side. टेसराक्ट भाई? RBK will kind of burn Tesseract, but there was a pick. And then here comes DPLUSKIA. Look at Esperanza. Allow, they pushed all the way in. ये भी वापस अल्ट यूज किया ना अजीज ये राउंड में On मतलब. the rotation, on the retake. ओह. Aziz is sharp अब तो with the करेगा. trip. अब तो One करेगा. headshot. नहीं नहीं अभी Not क्या a second. करेगा. Raw अब field मेरे को लगा अब तो bringing करे. up with the blade. हाँ मेरे को So many ये angles लेफ्ट to क्लियर watch, नहीं though. करने And it वाला all अकरम. starts with the off angle. He has Akram. to check this Akram. one, and unfortunately, Akram. it's gonna Left, be left. Esperanza who rears his Anti, ugly head anti, instead. 5-2 क्या काम मत करना. I thought Esperanza wasn't going to see that because बेरोजगार जी. पैसे कमाने. yeah, because he's sorry, but टेस्ट तो भर रहा है भाई. it's टेस्ट Esperanza. He's तो not मार gonna रहा है. miss a beat. But we'll say though, again, you're seeing Molly- Orangutan. RBK का Molly में बैठ गया. He's left-handed like I am. Cool. That's why he got saved. I was only the observer. Hey, it's a fun little detail. You कोच के observer, आदमी उसको क्या Make it बोलते हैं? super मैक्स fast. गेमिंग But yes, उसको हैंड back to what वार्मर I was बोलते हैं. तो mentioning.
ऐसा ठंड लग रहा है, ऐसा हाथ फ्रीज हो रहा है तो यूज करते हैं यूजुअली टूर्नामेंट में, बिकॉज़ टूर्नामेंट जगह बहुत एसी होता है और ठंडी होना चाहिए हाथ। बहुत तगड़ा रोस्टर है नावी का। नो मैच फॉर कोरियन टीम्स, कौन बोला भाई? मैं तो बहुत धोया हूं। Especially Korean. It's a bit of a gamble if you want to push out and you want to gather more information. If you want to play against how DPLUSKIA are playing. But if that gamble doesn't pay off, you lose players, you lose guns. I thought it's for sweaty palms. नहीं guys, sweaty palms के लिए तो पता नहीं, but हाथ freeze होते हैं तो properly खेल नहीं पाते। So they have to kind of flex तो है, facts है। I want to see Antidote kind of making some reads, some calls onto this. But it's so tricky again because of the teleporter, because of how DPLUSKIA are playing. Now the toxic screen goes up. This might be a bit of information. He zooms in. अरे कुत्ता आ गया यार, कोई तोड़ने के लिए नहीं। शी यार, starting to push all the way through. A bit of presence from Bats too. The satchel up onto the top of the box, and then it's just absolutely. अरे भाई जैसे ये शॉट पे घुस रहे अल्ट खोलना अजीज भाई। बहुत मुश्किल है भाई। अरे वो ठीक है, उसको इतना यूटिल आ रहा है, अजीज क्या उधर हिला रहा है क्या? अल्ट खोल के जाना मारने उनको। Every utility by himself. No one was breaking. एक शॉट नहीं लगा भाई सैमुअल भाई, उसको चांस मिला, एक ही शॉट मारने का चांस मिला। Aziz was right behind him too. If you look at the minimap, he's right there on the cover up. Maybe he was trying to shoot, maybe he was trying to throw utilities. नहीं पर भाविन भाई ने सही बोला, अगर उस समय आजिज अपना अल्ट मार के जाता ना आगे तो रॉकिल को थोड़ा टाइम मिल जाता। बैकअप मिलता, हां ब्रो, पीछे होने का सब कुछ मिलता। He got like 3 shots off that hit absolutely nothing. Maybe just a tag on allow, just do nothing. I see what you're saying. भाई इसका यूटिलिटी बहुत खराब है अजीज का। Rafael has a chance to hold that position just a second longer to take a shot, but still, it is what it is. It's a little bit unfortunate. It's a little bit chaotic, and it allows for DPLUSKIA to put themselves on the 6. Now they've got the guns. OGS not quite really, but playing around the utility, playing around this spot. Tesseract once again manages to take out his counterpart Lakia. Picks up the Vandal too. बेस्ट तो दूर है भाई उनको। तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ। हाँ यार हर्ष क्या? As you can see, he's actually pushed outside of hookah. Could get the catch onto 𝑋𝐈𝐍𝐿 right now, who does have the spike in hand. And 𝑋𝐈𝐍𝐿 was just jumping up and down. Australia has spawned Aziz. There's the use on the Seekers. Esperanza entry frags and clears up the rest of the B side. This is going to be terrible as Tesseract pushes in through the smoke, but he gets a face full of Esperanza. Rafuel now just fueled up, ready to serve some justice with the Sheriff, but unfortunately he's been spotted and they're not going to take the chance. They're just going to use every bit of utility, and that's not going to be a bait. He knows you're still there. There's a different sound cue when you TP. Come on, Australia, but Rafuel still couldn't do anything. He really can't. गाइस मैं उठ के जाता हूँ इधर से। But someone could be on the other side of garden. Someone could have pushed out. राउंड जीता तो पोपा का प्रॉब्लम है। एफर्टलेस स्किल्स है सब डीके के लिए। हाँ मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है। या तो मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ। पोपा मैं भी आपके बारे में हर रात सोचता हूँ। I think so हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Maybe an exit frag. हाँ पर मतलब वो He'll have to die to the spike, so he pushes in at the last देख second. मेरा एक सिंपल पॉइंट है, 2-3 दिन से मेरे को ही दिख रहा है कि अजीज यूटिलिटी नहीं यूज कर रहा है, तो उनका कोच भी है ना भाई, तुम देखा कोच है प्लेयर, तुमको दिख रहा है ना वो नहीं, तो बोलो ना उसको। तक दे इंडिया वाला बात हो गया, पता है कि वो पास नहीं करेगी उसको। भाई ऐसे ही समझाता हूँ हमारे प्लेयर्स को, मूवी के रेफरेंस दे के समझाना पड़ता था। कोच कार्टर का रेफरेंस देता था। कोच कार्टर यहाँ पे 90% लोगों ने देखी नहीं होगी। भाई कोच कार्टर नहीं देखा है कौन? अरे इधर नहीं मतलब भाई अगर एक एथलीट एनालिस्ट भी है कंपलसरी नहीं है, बट ऐसा अच्छा है कोच कार्टर देखना चाहिए यार एक टीम प्लेयर्स। भाई टेड लासो देखो, टेड लासो भी आया एप्पल टीवी पे। अब बता रहा हूँ मैं नहीं देखा भाई, को आप नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं बता रहा, बट अगर इफ यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर एथलीट कम्पीट कर रहे हो किधर टीम एनवायरनमेंट है सब, आई थिंक कोच कार्टर अच्छा मूवी। हां कोच कार्टर एनीमे में कुरोको नो बासुके रियलिस्टिक नहीं है, हाईक्यू नहीं, पर उसके मेथड उसके जो आइडियोलॉजी है वो रियलिस्टिक है। आइडियोलॉजी that the sum of players is greater than the players' individual skills. Playing around the same thing. Orangutan, we saw a couple of players trying to push out and get a little bit of presence towards B-Long, but there isn't information. It's so unsettling. हाईक्यू आ गया। You don't hear anything. You don't हाईक्यू बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग है। हाजी में नो इप्पो आ गया। प्लीज सुना नहीं रफूल।
That's absolutely right. You talk about again how D+ is such a slow team, but the thing is, it's cooking Orangutan to always play that guessing game. Actually spots out Rockfield, can't really get away, but Tesseract has been spotted at the back of the site. There's going to be the haunt that executes him, or rather gives him up for the execution. And 𝘼𝐽𝐿𝐼 does pick up the kill. It's going to be a hell of a time for retaking this from Orangutan. They're hoping to maybe get a couple of kills through the wall bangs, but it's not going to happen. And then 𝑋𝐈𝐍𝐿𝐼 just drops in the wall. Aziz has the show. Now he finally goes in for it. This could be he missed him. But no, misses the angle. Doesn't quite see Estrella. Allow getting the last frag. Blue lock देखते हैं पर DPLUSKIA with those post plant positions held so perfectly. पता नहीं मेरे को लगता है स्काई को बीलोंग खेलना ही पड़ेगा। मैं अभी देख जो राउंड फ्री विन था वो राउंड में अल्ट नहीं यूज किया, अगर अल्ट यूज करता तो और ये राउंड अभी जब 3v4 डाउन है चल ठीक है निकल सकता है, पर इवन इन टर्म्स ऑफ लाइकलीनेस उन लोगों का कुछ कंट्रोल नहीं है, एस्ट्रल डिवाइड पड़ा हुआ है। Not getting that due diligence to check him out, gets caught. नहीं पर मैं बोलूँ इनका डिफॉल्ट ही गलत है भाविन भाई। हाँ वो तो है ही सेटअप। That is ultimately leading to big mistakes that DPLUSKIA is. मतलब देखो स्काई का अब जब से नया वाला आया है ना ये टीपी, तब से स्काई अब बीलोंग ब्रोकन है, बीलोंग का कंट्रोल तो मिलेगा ही। शावर्स में आप क्रंच कर सकते हो, रीटेक कर सकते हो, रिक्लियर कर सकते हो, मतलब अनगिनत पॉसिबिलिटीज है। कितना स्ट्रक्चर्ड खेलते हैं यार इन लोग, एक एडी कुछ भी विदाउट यूटिल नहीं क्लियर करेंगे। मेरे को बहुत पसंद है। सर्जिकल लिटरली सर्जिकल मेरी फिलॉसफी बिल्कुल ऐसी है, पूरा एकदम मेथोडिकल है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा। अच्छा तो मुझे भी लगता है पर हर एक पॉइंट पे नहीं, थोड़ा बहुत। आप फुटबॉल देखते हो मोहन भाई? हाँ देखता हूँ, तो थोड़ा बहुत मुरीनियो का आपको पता है ना कि क्या है पूरा उसका स्ट्रक्चर है, अपने हाफ से लेके फाइनल थर्ड के पहले तक। फाइनल थर्ड में लोगों को फ्रीडम देता है वो, तुम अपने हिसाब से क्रिएट करो, कोई मेथड wailing and getting the site itself. But as I was mentioning, maybe it's just the first series jitters. Again, a lot of the teams were experiencing that. Fancy, boom. मैं भी उसी चीज को फॉलो करता हूँ। बेस फाउंडेशन और बाकी सब कुछ तुम्हारा स्टेप वन एकदम स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसके बाद तुमको जो करना है। One sounds off. Estrella catches on the Rothfield, expecting that peek out. फुटबॉल कोचिंग भाई मैं फुटबॉल कोचिंग के लाइसेंस के लिए जाने वाला था जब कोविड आया। मैं लिटरली लंदन जा रहा था फुटबॉल कोचिंग का लाइसेंस अर्न करने। Look at those cones of vision. How मेरे को एक सवाल है, ठीक है? एक्चुअल में ऑनेस्टली सॉरी ओजी पर कोच और एनालिस्ट अगर गेम्स देख रहे हैं सामने वालों के, ठीक है, तुमको पता है डीके कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना आराम से खेलता है, ठीक है, तो तुम वो सेम प्लेस क्यों करोगे वॉक इन वॉक पिक ये वो वाले जो यू नो उनको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है ए एंड बी, जो उनके सामने काम नहीं करेंगे अर्ली आउट प्लेस बनाना, क्यों करोगे? At this point it's just rigidity कि मेरे को चेंज नहीं होना है, मेरे को मेरा प्ले स्टाइल ऐसा ही रखना। But still there's so many angles to still to deal with. It's not just those angles on the Viper's pit too. Estrella has been waiting for Antidote for the longest time. He knew where he was coming from, and now we have Alone. मैंने बूट कैंप में एक कोड बोला था मार्सेलो बिएल्सा का, उससे पूछा गया था कि आपकी क्या राय है प्लेयर्स और ये सब टैक्टिक्स के बारे में, तो वो बोलता है if my players were not human I would never lose a single game. Both of them actually turned away, but पर वो उसने वो पॉजिटिव वे में बोला, उसकी इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं थी, उसका बोलने का मतलब है कि मैं जानता हूँ प्लेयर ह्यूमन है, मैं जानता हूँ हारेंगे, मेरे को चलेगा। वो ये नहीं बोल रहा है कि भाई अगर मेरे प्लेयर्स गलती नहीं करते ये वो। ये डीके ने तो मेरा ही कॉल करा है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते थे मैं बोलता था 3-4 ऑफ खरीद लो लगा दो, आएंगे सामने वाले लास्ट राउंड पे हमेशा। मेरे को अभी I mean they won so many rounds in a row that they have this perfect game plan that just works so well against Orangutan. We were talking about it on the desk, and unfortunately,
those plays just aren't How there. wise do you think In it is fact, to they're add old there players as for coach and unless DPLUSKIA. time Those coaching experience executions, नहीं है? the way that they're holding, the push and pull of यार, it all. Just I as won't it say comes old crashing players onto because them, Doctor is still a player, active player. वो बीच में OG का कोच था, फिर वो वापस प्लेयर बन के चला गया, वापस आया कोचिंग कर रहा है. Me personally, I don't find उतना वो appealing वो चीज. हाँ, जिधर फिर ये तो हो गया, जिधर नौकरी मिल रही है उधर वो खेल लेते, खेलने मिल रहा है खेल लेते. आधे BCL जैसे में कोचेस तो ऐसे ही थे, जो प्लेयर से पर उनको क्या बोलते हैं, प्लेइंग जॉब्स नहीं मिल रहे थे तो कोच बन गए. मेरे को वो नहीं पसंद. मेरे को भी नहीं पसंद. जिस दिन पोपा मेरे को आप बहुत पसंद है. That's the round. He gets punished by the operator. मैं जिस दिन कोच बना उस दिन से मैंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, सोचना भी छोड़ दिया कि कॉम्पिटिटिवली खेलने के बारे में. And it starts here again, as all things do. तो मैं ऐसे भी अच्छा नहीं था, तो वो बात अलग है. मेरे लिए ज़्यादा वो था, but I don't think so. आप दो जगह पे पैर नहीं डालना चाहिए. हाँ, दो नौकों में पैर रख के सवार कर सकते हो. देखो, रफी प्लेइंग जेट एंड स्टिल स्ट्रगल्स, देखो वो बोलना बंद कर दो. फर्स्ट गेम के बाद बहुत लोग यही थे, अरे रॉफ्यूल फ्रेंचाइज लीग में खेलना चाहिए, ये वो. और अभी ये गेम ऐसा जा रहा है तो तुम बोलते हो कि जेट खेल के भी मतलब BCL ऐसे में बोल रहे थे कि आजिज तो फ्रेंचाइज जाना चाहिए, सीक्रेट जाना चाहिए. हाँ. अभी नहीं सुधरोगे भाई. मैं तो हंसता हूँ भाई बस. मजा आता है. ये सब होना चाहिए, साइज ये सब सीन में होना चाहिए, तभी तो मजा एंटरटेनमेंट है. राजी बोल रहा है मेरे साथ बहुत हुआ. देखो, रिजिड कोचेस आर नीडेड, ठीक है, पर वो सुन प्लेयर्स के ऊपर है. मतलब मैं अगर कोई टीम का कोच होता मैं तो गांड मार देता, नहीं सुनोगे तो. सीधी बात. इसलिए आप कोच नहीं है. नहीं, पर भविन भाई अभी वो भी हो गया है कि मेंटल आप तोड़ रहे हो. क्या? हाँ, तो मेरे टीम में ही मत खेलो, नया प्लेयर ले आऊंगा मैं. पर वो अलाउ नहीं होगा. मैं अगर करूंगा जीवन में तो ऐसे ही और ढूंढूंगा. मैं बोलूंगा होगा तो इज्जतदारी में जिसको करना है. अगर इंडियन टीम को कोच करना होगा तो शुरुआत में प्रॉमिस जरूर करती है इंडियन. और नहीं, मेरा हिसाब नहीं. वो देखो, मेरा हिसाब सिंपल है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दूंगा. अगर नहीं कर रहा है तो मैं फिर फ्री एजेंट राइटिंग में लूंगा. मैं वर्बली विश्वास ही नहीं करता हूँ कोई भी और पे आजकल. वो बहुत अच्छा करते हो भविन भाई. आप वर्बली विश्वास नहीं करना चाहिए. नहीं करना ही नहीं है विश्वास वर्बली. हाँ भाई, मैं जो भी आप बोला मैं उसमें सहमत हूँ. I will stand till the edge of the world with you, holding your hands. It's like the Popa. जाने दे भाई, डिसअपॉइंट हो गया. You want to shout? He's right behind you. पोपा मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता. Or maybe if you अभी LCQ में देखता हूँ मैं. चल. in the arena here with us. No, they're all shouting. No, we're gonna get reprimanded. All right, that's true. No. Look, it's backs against the wall. And orangutan नहीं यार, don't give up. We talked about प्रॉब्लम ये this. क्या है, इंडियन नॉर्थ को पता नहीं रहता कौन से प्लेयर उनको चोमो बना रहे हो. उनके सामने मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके. And it starts out good. He even gets a second onto Estrella. That's a bulldog that you can pick up. That's a spike on the. बेचारा ऋषि को लगा इधर घुसने वाला है, स्प्रे करना चालू कर. इंडिया में सच्चाई की वैल्यू बहुत कम है. जो मुंह पे बोलता है उसको लोग नहीं देते. वो तो है, मुंह पे बोलने वाले ही चूतिए हैं हम. हाँ. He's waiting for someone to peek out at this. मैं तो guess what? पीक चुका हूँ. Setting up a retake. Two players from elbow, one from the. और मेरे से होता नहीं है गांड चाटना किसी की. हाँ. A bit of a flash, and then we have a loud going off a little bit through. Getting a couple of shots in towards Garden. That's a little bit more information. लस्सी होगा उसमें. Trying to play inside of hookah, able to get one. Come on, 1v2 आराम से. He gets another. Looks for the last one as he runs. Nice. Threw up on top onto Antidote. Getting that final kill onto XC. पोपा. OGS stay. बोलो भाई, आराम से चिल्ला मत गांडू. पोपा, ये राउंड का पता नहीं, but आप तो nice. Out of elbow, as they peeked through there was so. विरोसी पक गए एक ही चीज बोल के कुछ नया ला यार. अरे नया ही बोल रहा हूँ हर बार. अरे पर फॉर्मेट तो सेम है ना. थोड़ा कुछ नया फॉर्मेट ला.
मैं well format placed 18 enough plus that they really couldn't scan them all in the nick of time, and they were kind of expecting maybe Orangutan to keep the challenge, but Orangutan in that round actually held off, and again, perfectly showing what happens when they're actually able to play together on that side. Yes, especially when they are going with their own aggressive play style, right? And they get Ross to do is what they here. want to Let's do. go! Even with the C's from Tesseract on the two players from DPLUSKIA, they're gone. He somehow finds a headshot. Esperanza close range with a frenzy. They fight back, but still the firepower is too overwhelming. Sight not quite under their control, so they run through the teleporter, but it's all a ruse. भाविन भाई ये उस दिन का असेंट वाला चीज है Market. Esperanza, he's got question marks. अब ये लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए खेल रहे हैं but unfortunately gets punished, and that leaves Estrella alone. असेंट नहीं, सेकंड मैप तो हेवन है, ये तो इनका पिक है। नहीं नहीं, याद परसों जो मैच हम हाँ पोपा बोल भाई। सेकंड मैप हेवन या बाइंड वो मेरे को पता नहीं, बट आपके साथ मैं हेवन में basically the same thing, but Valorant wise now is just to brute force their way. गाइस जिसको भी हंसी आई थम्स अप डालो चैट में, जिसको भी बुरा लगा थम्स डाउन डालो, देखते हैं अभी। The play here, the setup. मुझे तो हंसी नहीं आ रही है अभी बहुत टाइम से। On the attack, why not utilize it? And they are able to do that. Of course, this is still the weaker buys for DPLUSKIA. To get a free hand to build a team with as well as Bhavin bhai se pucho. Thought process is there. Australia, of course, he tries to peek out. Rossi, more thumbs down than thumbs up. They got themselves a whole कुछ लोग दोनों डाल रहे हैं, दोनों हाँ थम्स अप भी थम्स डाउन भी। पोपा जी जितने भी लोग आपको थम्स डाउन दिखाए, मैं आपके लिए हमेशा थम्स अप। गाइस ये सब सहने के लिए तुम लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए। देख रहे हो मेरे को क्या क्या सहना पड़ता है वॉच पार्टी करते हुए। They're starting to get a little bit more proactive with it. Meanwhile, DPLUSKIA OG doing a comeback, Bhavin bro. One thing that I'm watching out for is when DPLUSKIA does decide to go on the offensive. Oh yeah. Orangutan has to watch out for this. User joined your channel. अभी मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अच्छा क्या? User joined your channel. मतलब जो दिख रहा है इतना जल्दी तो कमबैक में विश्वास नहीं होगा। Is a thing, guys, on Bind. It's very difficult. And if DPLUSKIA gets lucky enough to hit both of those as they're pushing in, because you can see right now, Lakia and teammates they don't know that Allow is right on top, and he gets the kill onto Aziz as he tries to get control onto the A site. Rafael has the judge, but can't really push too much because the range is going to be a discrepancy for him if he tries to go out in the open, which Lakia, as you can see, is very much prepared for. He's just watching on the other side. पोपा उनका वीडियो किया, बट मैं हमेशा आपको पिक करता हूँ। विम भाई मैं बोल रहा हूँ ना, इनका वीडियो जो भी करता है या जो बनाता होगा कुछ गड़बड़ है उसमें। He doesn't quite connect onto as many players as you had hoped to actually get some information. So जबकि आज का वीडियो इनफैक्ट मेरे को अच्छा लगा। हाँ मेरे को भी अच्छा लगा कि ओजी के फेवर। पोपा मेरे को तीनों मैप में फेवर में। And the hot being shot out kind of confirms it. तीनों मैप विनेबल है। Rafael dancing up in the air, but it's still being as they try to waterfall off. मेरे को लास्ट मैच वाला वीडियो अच्छा नहीं लगा था। You felt the urgency of Orangutan pushing through hookah, but the big problem there was they used the one prowler to check where who was this? The Skype was playing at, but the problem wasn't spotted at all. So they're like, you know what, screw it. We're just going to push in and hope that we get our push here. And look at the replay. That's exactly what was going on their minds. And it does not work because they had no vision. They were pushing through Esperanza's toxic screen that, ladies and gentlemen, lo and behold, 1x1 drop. हाँ ना bro, वो भी एक मतलब छोटी-छोटी चीजें बहुत है जाना अभी। I mean, a perfect breakdown. आप ये मैच को जाने दे सकते हो, बट मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। वो छोड़ डॉक्टर 12-4 पे क्यों टाइम आउट ले रहा है? क्योंकि टाइम आउट है। अरे तो उसके पहले लेना 11 सेकंड। So another timeout. Well, the last timeout being भाई मैं टिल्ट हो गया ये गेम देख के आज का भाई। मतलब मैं एक बात, मैं डेमोन किया को 2 साल पहले खेला, फिर भी वो ऐसे ही खेलते थे डिफॉल्ट होल्ड कर करके ये करके फिर जा। I don't know. पर actually don't know bro. पर भवन भाई कोरियन प्ले स्टाइल ही लिटिल वही तो बोल रहा हूँ, पर कैसे तुम वैसे ही खेल सकते हो यार उनके सामने? It's okay. You know what? I came from the Philippine. या तो ऐसा है कि उन लोग का टीम में शायद चेंजेस होना ले, कुछ तो बस खेल रहे हैं। Love you guys. बट जीतने के बाद कौन सा चेंज? Not just them, just the whole group. जितना मेरे को सुनने में आया है शायद
हो सकता है। Okay, there we go. मेरे को भी सुनने में आता था, पर अब सुनने में आ रहा कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है क्या? अच्छा। चेंज हो रहा था फिर भी हम जीत रहे थे पोपा। हमारा तो हम तो विदाउट उम्मीद ही नहीं थी कि टीम मतलब साथ में रहने वाले। आप अगर सही में देखेंगे आप लोग कितना आयरॉनिकल है, ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स, इनको पता है कि अगर ये जीतेंगे तो आधे लोग निकलने वाले। जो भी टीम असेंशन में जीतेगी वो फ्रेंचाइज जाएगी, आधे प्लेयर्स तो निकल जाएंगे। हाँ, किसको रखने नहीं वाला है भाई। निकल ठीक है, दुखती रस पे हाथ मत रखो। First hand experience पोपा जी है इधर। DPLUSKIA have decided to go through bats instead. Tesseract, unfortunately, eliminated out of the equation. They've managed to get the spike down, and now they're भोसड़ी के तो अकेला खेल रहा है भाई। you also have Antidote आपको क्या लगता है मैं खुशी में? अरे वो थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, खुशी या दुख का बात नहीं किया मैंने। It allows for DPLUSKIA to get a lot more space. It's been segmented as Z tries to fire a shot from behind, but unfortunately he gets traded by Estrella. RBK's the last किसी की फीलिंग्स नहीं समझी है भाई। मतलब आप तो तू तो सबकी फीलिंग समझता है मतलब। बहुत अच्छे से। He gets the first. इसलिए 10 लड़की का नंबर है इसके। 10 बस नहीं 10 से ये बात करता है। This is my game. I'm gonna take it 13. I got too excited more than I should. Not enough time for the defuse, but it was like 4 seconds left. You saw the thought process again. There. They wanted to use the orbital strike to again catch the players of DPLUSKIA out in the open. I guess they could have used it for the post round, but because of the wall was there, they weren't unsure डायमंड को थोड़ा अंडरएस्टिमेट किया क्योंकि ये पहला मैच हार गए ना बॉन्कर्स के साथ। They went for the challenge, and the challenge was too much for them to handle. Yeah, sometimes you just don't have enough materials to turn in. भाविन भाई आपके लिए क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ बोलो। कि अगर आपको टीम बनाने बोले, हाँ, पर उसमें खुद को नहीं रख सकते। हाँ। और 5 प्लेयर्स की टीम बनानी है, 3 डोमेस्टिक 2 इंपोर्ट्स। हाँ। तो आप क्या टीम बनाओगे? 3 डोमेस्टिक 2 इंपोर्ट्स। हाँ। मतलब कोई भी वर्ल्ड में कि जो अभी एसेंशियल लीग में खेले वो? नहीं, अभी VCL ऐसे के लिए आपको टीम बनानी है इंडिया में। ऐसे तो मैं डर के बोल दूं, पर ऑप्शन नहीं है ना राजा में। रियलिस्टिक मतलब। हाँ इंडियन। हाँ, जो अभी खेले लीग में प्लेयर उनमें से ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो उनमें से क्या आप अलग भी ले सकते हो, पर रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इंडियन उनमें से ट्राई करता हूँ, इंटरनेशनल जो अभी खेले वही लेता हूँ, ठीक है? जस्ट फॉर। Wait, so for Indian, Rossi Golu allowed or no? नहीं। वो मैं लूंगा मलाव, बजाज और भाविन को। बस जीत गए। मुंबई सर्वर में कभी ये टीम हारी नहीं है। बोलते ही रहेंगे। 2 इंपोर्ट मारेंगे, 3 लोग पूरा डायरेक्शन एक बंदे के पीछे। अच्छा सेट है ना, हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे एक बार। अगर कोचेस को ऐसा ये करना पड़ेगा तो ऐसा स्टैंड इन करना पड़ेगा तो ऐसा टाइम आउट का जरूरत ही नहीं है ना, सर्वर पे ही है। हाँ, अरे it worked pretty well for KC ना। सब मिस्टेक सब कुछ बोलते रहेंगे। Okay. I'm only taking लोग जो मेरे को मालूम है कि हार्ड वर्किंग है। हर्ष, मतलब वाइपर खेलेगा। Just like Vibhor. थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस प्लेयर्स में। हर्ष, साग्निक। Okay. गया, ऑलरेडी गया गाइस, अभी बता रहा हूँ। नहीं रुको, चेंज कर रहा हूँ अभी मैं। चेंज कर दिया ऑलरेडी? शुरू होने से पहले चेंज हो गया ना। इसको टीम बनाने मत दो। ये तो एमएलटी वाला गलत है। टेनमैन रोस्टर बना भाभी। टिक्स कंट्रोलर, ऑटम ड्यूलिस्ट, ओके, अनुज IGL, ओके, हर्ष फ्लेक्स, ओके, और एक स्ट्रॉन्ग सेंटिनल। अनुज सेंटिनल खेलेगा तो टेक्नो, जस्ट पुट टेक्नो ऑन सेंटिनल, इट्स ओवर। होक्स, आई टेक होक्स। ब्यूटीफुल। No love for मेरा तो मतलब को पता होगा ऑलरेडी। No love for कोहली, no love for टेक्नो। तेरे को पता है मेरा?
क्या है Dhwani messaged me or Dhwani Yeah, Kohli, Techno, takes Autumn and Hooks. और अगेन मैं इन लोग के साथ ज्यादा खेला नहीं हूँ तो क्या अनुज के साथ खेला हूँ बाकी क्या टेक्स ऑटम तेरे लिस्ट में कोहली नहीं है हाँ ठीक है अरे कोहली का बात नहीं कर रहा हूँ मैं हाँ मैं वही समझा हर्ष इन लोग के साथ खेला नहीं नहीं होगा क्या ये लाइनअप से की जी हो गया इधर क्या क्यों व्हाट लॉल व्हाट अ जोक टीम अगेंस्ट सीएस वॉस साइकिल भाई इसमें नया बंदा है हर्ष तुम लोग को जाना नहीं मेहनती लगता है मेरे को भाई मेहनती लगता है तो क्यों नहीं लिया भाई टीम में आप पोपा जी हर्ष को मैंने उसका रिकॉल कॉपी किया ले मैंने पूछा तो था बोलू के पहले भाई आप मैंने दिया अपॉर्चुनिटी नहीं दिया भाई पोपा को यंग टैलेंट भाई पोपा जी ऐसा प्लेयर्स के साथ खिलाया मजा ही आएगा पोपा जी हेलो हाँ कौन से प्लेयर बोल रहे थे हम किसके साथ खेले सर ट्राईआउट में ना सरता हाँ सब मैं तो पहले बार सुन रहा था इन सब रेलिक के हाथ भी खेले थे ना रेलिक हाँ रेलिक की हम फर्स्ट ट्राई किया ना रेलिक मालव का रिकमेंडेशन था कभी एक्शन खराब रिकमेंडेशन तो ना था मैंने किधर बोला खराब है पर वो मेरे को ऐसा पहले सुनता था ना तो वही है ना कि सभी गेम में हाँ फिर तो ऐसा आप लोग ने बस्टर को भी ट्राई किया था ओए बस्टर तो भाई बस्टर में सीएस पे चले गए अरे बस्टर तो मारता था भाई बस्टर और होते थे Reloading. गोपी है भाई कोई नहीं जो भी हुआ एक मैच वैसे ये ठुके मार क्या तो ठीक है सीरियसली ट्वीट पड़ा ये टैग यू भाविन अभी ट्वीट किया था क्या टैग है फनी ट्वीट है थोड़ा यार मेरे को डर लगता है सीरियस जब भी कुछ ट्वीट करता है उसका वो वाला दूसरा वाला ट्वीट क्या हुआ कि कराया क्या है Bomb Maria. Stretch one. समझ गया अरे यार Back off. Grounded. Grenade. भाई क्या इन लोग का 10 seconds until stage change. Coming through. Satchel up. Satchel up. No surprises. क्या हो गया गलत चालू है भाई मेरे साथ टीम ने मैच में भाविन भाई का हार्ट अटैक आ गया ऐसा एक्टिंग कर रही है इधर हाँ बोल रहे हैं कि टीटीएम खेल रहा हूँ Not ready yet. इतना मेहनत करके अल्ट आता है भाविन टेबल का कुछ किया कि नहीं वैसे ही है कैसे ये मतलब कपा पैर के उधर बंद है ना हाँ वो वैसे ही है तेरी माँ की चूत रहे ना बकरी के मैं माफी मांगता हूँ Be faster. दूसरा ऑर्डर भी आ गया था क्या हाँ
Bomb buddy out. Get out of my way. Get out of here. Take this. नहीं एक और ऑर्डर हाँ वो अंजय सिंह हाँ क्या शी पावर Listen up. ये लो बेटा लो Wait, you know what Yash is doing? Kind of. कोई तो बोला रहेगा आप Was it about this? खेलेंगे उसको ज़्यादा पैसे दे दिया Is it what Russ इधर said? क्या ऐसे ही होगा ना नहीं Yes. क्या बोला रहेगा कोई तो बोला रहेगा मनी बेटर देन लॉयल्टी ब्रो इधर ही की किधर आ इधर Joke's over. You're dead. अरे नहीं हमने कुछ डिस्कस किया था जब नहीं था हाँ 2.5 मिनट दिखा है ना वैसे ही कुछ था 4 बज गए वो भी सूख के मिनट खाने में 4 बस कई लोग भाई दोपहर के 4 बजे भी पार्टी करते हैं भाई मेरे को व्हाट्सएप बुक क्या बना भाई बैंगलोर का टीम है प्लीज कांटेक्ट क्यों भाई भाई बूट कैंप जाना है बोला मैं प्लेयर्स को थोड़ी मिलने जाऊंगा वैलो टीम का जीत गए भाई अरे भाई कुछ तो होगा ना गॉड्स रेन का ऑफिस हाँ बूट कैंप बहुत अच्छा बूट कैंप है गॉड्स रेन का ऑनेस्टली बस गॉड स्पीड कभी नहीं गए नहीं he was there no नहीं मैं बैंगलोर बूट कैंप कभी नहीं भाई मलव आया था हमारा फाइनल्स में बैच ऐसा जीते थे हम ऐसा They're awake and they're hitting their shots. क्या बोलते हैं वो 100% win rate 100% win boot camp win rate yeah 100% boot camp win rate bro क्योंकि उसके बाद वो आया नहीं नहीं लास्ट कब आया था boot camp BCC 2 आया था ना तो नहीं आया था इसलिए हार गए शायद एक नहीं फिर डायरेक्टली लैंड पे मिलते थे ना अपन अरे मतलब BCC2 ऑनलाइन हुआ था भाई हां जो हम सेकंड प्लेस आ गए तभी कोच स्लॉट आ गया था ना गेम में किट्टी कोक शुगर लेगा भाई इसके रॉसी किट्टी कोक शुगर लेगा समझ में नहीं आ रहा शुगर फ्री नहीं है ब्रो शुगर इसके रॉसी मैं ऐसा ज्यादा 2023 इसके रॉसी बल्क गोलू मस्त बल्क कर रहा है ना अभी अच्छा फिजिकल है उसका पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता भाई इसका फिजिक का क्या सीन मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा अच्छा है कौन सा गंदा है गोलू का अच्छा When you see teams running into गोलू B, का that doesn't necessarily आप mean देखा that means they could be split in A. They शोल्डर्स could be अच्छे थे split उसके in अच्छा the shoulders We've seen अभी clarity the दिया strats just अरे go हेलो से to overtime. सर And we Sir, haven't I am not like that. Haven here at I am not like that. so far. So अरे I'm क्या keen to see पता भाई what South Put Asia your brings, head on what my Korea shoulders गाना brings, and background में just चला how के they're going to clash your here. Looks like it's hands not on my going to be the exact same picks on both sides. Orangutan leaning more towards the Astra, DPLUSKIA bringing the Omen in. कर दो हाँ नहीं अच्छा चलो चलो एजेंट सेलेक्ट इज द डन पता नहीं I don't like Astra anymore on Heaven पोपा OG एजेंट सेलेक्ट कर रहा है बट मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ they are still sticking to their Sova Sky comp and not पोपा हेलो breach पोपा FK शायद से मतलब OG is picking agents right now but I would always pick you wow thank you This could be creative. Deja vu आया मेरे को thank you put off a little bit of chaos. कौन टीम डिसबैंड हो गए भाई सब डिसबैंड हो गए कोई नहीं बचा जिनको होना था वो हो गए जिनको नहीं होना वो हो जाएंगे फ्रेंचाइज के बाद रेस्ट इन पीस बेबी I was just about to say we are seeing Orangutan with their comfort pick as well. Aziz, Bond! I know him for how great he is on the raise, but he does love those flash agents. क्या यार गणेश यार हाँ क्या रसी नहीं जानेंगे भाई एल नहीं जाना रसी हो एलए नहीं भाई ऐसा नहीं सुन रहे ना इंडिया गाइस का टूर्नामेंट था मुंबई में दिल्ली में बूट कैंप ठीक है दिल्ली में बूट कैंप किया तो सिंगापुर सर्वर 100 पिंग आएगा स्ट्रीम किसके साथ करेंगे मुंबई सर्वर सिंगापुर में just ब्रो 100 ब्रो सीन
killing है bro, सब ऐसा force नहीं करना चाहिए। punishing for every little मुंबई से मैं आई थिंक तो नया सीजन तो मुंबई में होगा ना। हर वीक दिल्ली जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद पैसा आता नहीं है वैसे भी। बट है बहुत देने के लिए, उसका टेंशन नहीं है भाई, ऐसा नहीं भाई, अच्छा नहीं लगता। एक तो पीसी स्पोर्ट्स से पैसा नहीं कमा पाते, ऊपर से ऐसा होटल स्टे करो, बट तो उनका फॉल्ट है ना कि वो लोग रेवेन्यू सोर्सेज नहीं बना रहे खुद के लिए। भाई तू पागल है क्या? हर वीक तू क्या बता रहा है भाई? For sure. Well, are we going to get more? That's the question I want to know. Okay, is what it is going to be Orangutan bringing this back on map number 2? Will we go all the way to 3 to keep that consistent across the day? Or are we going early? Is it that 2-0 continuous? सिर्फ इंडियन सीन नहीं है भाई, वर्ल्ड सीन में भी रेवेन्यू सबका कम ही है। हाँ, बट इंडियन सीन में स्पेशली आई थिंक इट्स लाइक मैं क्या देख, मैं तो एक बात बताता हूँ, आज तो एक बोल पैसा नहीं आता है सिर्फ इधर और एक्स्ट्रा चार्जेस है, समझ रहे हैं ना तेरे को दिल्ली जाने के लिए। हाँ वो तो समझ रहा हूँ। तो सोच तू पैसा बचाने के लिए टीम को दिल्ली में बिठाएगा, तो स्क्रीन और रैंक नहीं सिंगापुर पे खेलेगा। ब्रो 100 पिंग में कैसे खेलेगा? पागल है क्या? हम लोग नहीं खेला था, हम तो दिल्ली में रह रहे थे बूट कैंप में। तुम लोग दिल्ली में बट है ना कि रॉसी इफ यू चूज टू ट्रैवल अप एंड डाउन एवरी डे, लाइक अगर पैसा जाएगा ना एक्स्ट्रा, और पैसा भी छोड़ पैसे का बात मैं अगर जाते तो मैं नहीं डालूंगा। हाँ तो फिर तो शॉपिंग पे चलेगा ना, इजी सिम्स। भाई मैं लेजिट बता रहा हूँ, बूट कैंप दिल्ली में करने के वजह से और ने कम से कम 10-12 लाख रुपए बचा लिए। हाँ ब्रो बट यू आर किलिंग द सीन ब्रो, वही तो बोल रहा हूँ। प्लेयर्स डेवलप कैसे होगा अगर स्क्रीम 100 पिंग में खेल रहे, रैंक 100 पिंग में खेल रहे हो तो? नहीं वो तो है, इसलिए तो बोल रहा हूँ अगला सीजन तो मुंबई में होगा। टूर्नामेंट्स पे गंदे खेलेंगे, अगर टूर्नामेंट्स पे गंदे खेल रहे तो लोग नहीं देखेंगे, अगर लोग नहीं देख रहे तो सीन नहीं बढ़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ अगला सीजन तो मुंबई में होगा क्या? मेरे को पता नहीं है, मैं बस गेस कर रहा हूँ कि हो सकता है मुंबई में, because what Rossi is saying makes sense. भाई मैं देख रहा हूँ इन रैंक लोग दिल्ली का टीम से ना, आई थिंक मेडल ये लोग थे ऐसा 100 पिंग में रैंक कर रहे बेचारे लोग। 100 तो नहीं आता, 80 आता है। 80 कितना होता है? 80-85 भी पकड़, still worse than 55-60। क्या बताओ यार, मैं मुंबई में ही रोता था, आपको पता है। अभी ठीक है ना, जब तक बीच का सर्वर नहीं आएगा भाई। एक तो सिर्फ सिंगापुर का एक्सेस है, समझ रहे हैं ना? मैं कोरिया से खेलता हूँ ना, हांगकांग और सिंगापुर और ये खेल सकता हूँ बस। सिंगापुर अपने को बाहर एक्सेस दिया ना तो सही है, 40 पिंग 30-40 पिंग नहीं रे, बहुत रेसिज्म आ जाएगा भारत से। ओ हम लोग जैसे रेसिस्ट नहीं है, आई मीन कंपैरेटिवली लाइक इट्स इवन। हाँ तो सिंगापुर में नहीं है रेसिज्म, bahrain में होगा। तो bahrain is I would 100% say is नहीं भाई कुछ ऐसा नहीं है। हम इंडियन सबसे ज्यादा रेसिस्ट हैं, हम जहाँ जाएंगे वहाँ गंदगी फैलाएंगे। हाँ भाई ठीक है, इंडियंस पूरा इंडियंस को बोलते हैं भाई। हम इतना गाली देते हैं छोटी-छोटी बातों पे। भाई मुंबई सर्वर वालों को अलाउड नहीं होना चाहिए। मेरे को पता नहीं, बट सॉरी टू से, बट मेरे को गुस्सा आता है जब लोग कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि सब लोग कंप्लेंट ही करते हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं लाते। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन नहीं है इसका अभी। देन व्हाई कंप्लेन ब्रो? नो कंप्लेन, जस्ट प्ले। अभी बोला ना इंडियंस सब गंदगी फैलाते हैं। नहीं वो बुका ना कि रेसिस्ट रहेगा bahrain, मैं बोला भाई हम लोग भी रेसिस्ट है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं मैं तो रेसिस्ट नहीं, मैं इंडियन हूं। अरे सी यू से ऑल इंडियंस बिकॉज़ देयर इज नो वे फॉर यू टू ऑल इंडियंस नहीं बोल सकते भाई। हां बट द ओनली रीजन यू से ऑल इंडियंस इज बिकॉज़ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हिच इंडियंस आर एंड व्हिच इंडियंस आर नॉट। हम लोग सर्वर स्पेसिफिक बोल रहे हैं, मुंबई सर्वर इज वेरी रेसिस्ट सारी। अरे इट्स नॉट जस्ट फॉर नाइस चलो फाइनली हो जाए। एक राउंड जीता भाई शॉट पे। भाई ये पर हर बार नहीं होएगा कि ऐसे जाके वो टैग खा के भाग के आगे गया है। specific position in that specific way when they were setting up like 3 facilities ये राउंड इंपॉर्टेंट है, and very much punished by Tesla। करना यही पड़ेगा उनको मिड राउंड अग्रेशन पर, ऐसे करना है कि कैसे करना है वो मेरे को नहीं मालूम। having their hands ठीक है, something else they have as they Sky try to to set set up up, for the so it's site, gonna so be easier. there you go। यही मेरे को नहीं पसंद है, ये क्या You gotta love the Orangutan team and staff. इतना He's अच्छा in the अल्ट है crowd, इसके पास, and he's just shouting and cheering for the whole team, and it keeps the spirits up. अरे क्या राउंड नहीं, डीके वैसी टीम नहीं है जो ऐसे आती है भाई। हाँ बर्बाद कर दिया पूरा अल्ट।
guess he was trying to fish for information, but he doesn't Team find to any. team. Nice, catch boy! भाई आराम आराम से भाई जैन तेरे को मालूम तो है अपन खेले थे The idea was there, the damage was there, but the pick not gonna happen. Tesseract though, he really started this game on fire. Pretty much all the kills on the side of Orangutan. आप जो बोले वो बहुत सही है. Deterrent for D+ and they're being pushed back to go to the A side where Tesseract isn't there, but look at the minimap. Tesseract's already expecting it as raw fuel information that they are आराम से एडी करके हाय He has to survive हाय this, though. मैं इधर हूँ. Here comes the execute. And he's kind of playing around allow. Thankfully, Tesseract here to भाई trade. ए मत घुसो बी जाओ अपने बंदे का पोजीशन देखो हाँ Esperanza. क्या चाहता है क्या है तू मैं तो अच्छा वैलोरेंट देखना चाहता हूँ ओजी जीते हुए वो भी चाहता हूँ पर अच्छा वैलोरेंट खेल के ये लॉक बहुत मस्त है अभी इसका भाई जेन ने तो मत देखो भाई आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है बस बुला लिया सबको पीछे बोल दिया कि चलो आ जाओ वो पिंग्स देख ब्यूटीफुल पिंग्स केयर के 2 players left from Orangutan and they've split up forces. One on C-Link, one on A. अजीज भाई फिर भी आगे ही जाएंगे क्या हाँ अजीज भाई आगे अजीज भाई थोड़ी रुकेंगे Not for D+, अब but थोड़े पीछे for हो Orangutan, गए look at where this is pushing in. Maybe he can break it down, which he does. And almost even takes away Australia. The thing is, भाई मैं पीछे थोड़ी हूँ अजीज भाई ने मारा ना अभी और मरा अजीज भाई नया पीछे हो इधर आरवी के सेव करने चला गया not get isolated by RVK and he even gets tagged by the recon dart. That is मैं भी ट्विच पे हूँ भाई stunned. क्योंकि रॉसी कोरिया doesn't have 1080p अच्छा अभी बूम हुआ ना 3 2 1 0 रुको बोल के हाँ ना हुआ कि नहीं बट आपके लिए मेरा हार्ट बूम. Yeah, I got overexcited for sure. I saw that spray transfer from the क्या करे गणेश बहुत टॉक्सिक हो रहा है रैंक में मैं किधर टॉक्सिक हो रहा हूँ भाई थैंक यू बहुत टॉक्सिक है भाई तू आजकल भाई जयंत साई भाई की बातें मत सुन भाई स्किल्स बहुत टॉक्सिक है स्किल्स बोल रहा भाई बस मैं ट्राई आउट करता हूँ तो टॉक्सिक बोल देते हैं जयंत क्या करूँ स्किल्स पापा जी एडी कर रहा था स्किल्स 1v1 में बोलो ये शॉट बैक्स पे है ऊपर एडी दीवार को मार दिया भाई get him baby kind of a bit of a dink and then he has to tail in back. DPLUSKIA are just holding around this. Surely nobody peeks out again, but अगर इसके बाद पैरानोया भी आता तो फिर तो दोनों को मार देता वो आई थिंक हाँ एक्चुअली पैरानोया आना था ना शॉट हाँ पैरानोया शॉट से हाँ कौन अरे हाँ हेलो भाई इतने देर ज्ञान दे रहा था भाविन आपको पता ही नहीं ओमन ने इतना ज्ञान हाँ देख देख मदरचोद खुद भी हाँ बोल के भोसड़ी का मैं ज्ञान दिया कुछ के ऊपर मैं ज्ञान नहीं दिया ज्ञान जो दिया मैं सिर्फ बोला पैरानोया होता तो मजा आ जाता उधर दो जन साक हो रहे और भाभी ने बोल रहे हो फ्लैश दोनों आप गाइस समझ रहे हो इसके वजह से ये मार रहे थे ऊपर का ध्यान नहीं रहता अरे तो समझ गया भाई आई थिंक instinct actually tell him that the short is exposed, that the short is nice Rishi absolutely not. And with that they take the round. RVK again, this is what I'm saying, strike them when they least expect it. No way that DPLUSKIA knew that someone was coming up for guys मैं क्या बोल रहा हूँ कल व्लॉग अपलोड करूंगा ठीक है तुम लोग 3 बार देखो मेरे को पता एक बार प्रॉपर्ली देखो उसके बाद दूसरा बार लगा के सो जाओ चैनल डेड हो चुका है गाइस This is what you need to see from Orangutan. YouTube hates me. Those flanks can't work, but those sight anchors will. Absolutely, it's all about आज करने वाले थे the hold on the site. So if DPLUSKIA slip up even a little bit, you're really seeing the punishment for Orangutan flourish in this situation. Rafael ऐसा मस्त से क्या हुआ इसको
सीलॉन्ग लगाया था तो इधर क्यों आ गया ये? वही ना। नहीं वो गराज का शॉट लेने आया आप ही खेल लो भाई। आई थिंक वो गराज को रिपोजी करके गराज का लाइन चाहिए था देख लिया उन लोग ने ऑफर इधर है अभी जाएंगे फटाफट मतलब रॉफ्यूल को गराज लाइन चाहिए था बट मेरे को आप चाहिए रॉफ्यूल को गराज लाइन चाहिए था रॉफ्यूल को गराज का लाइन चाहिए था बट मुझे उस पे ही लाइन मारना था नहीं वो अच्छा नहीं जो मैं बोला वही Oh! He's covered by the dark cover. I was just about to say, and then allows breakthrough. He actually finds his way. Numbers advantage kind of gone, but they still have some Mandi game it is. They're trying to set up for this. Mandi gaming. That shot dart. Unfortunate. This has to be a safe call here, right? He's got his work cut out for him because the big कुछ problem है now नहीं is हाँ काउंटर सोवर्ट भी है घुस के भी क्या ही करेंगे ये लोग to push in with him and then he can maybe get a Well, free I shot don't or know whether they'll something. save or not, but I feel safe when Does I get a fall. tag off onto the Lao, but they don't know that he's गेम एक talking बार down there मैसेज with करता है आज 𝑋𝐈𝐍𝐊𝐒. और रिप्लाई भी नहीं Yeah, देता you're उसके absolutely बाद right. No time, gonna have to just back away. And Rafiel given a bit of safe call is here exit frag as well. Iron opportunities, baby. Prize, but that's not the prize they're looking But for. at They least want Rafiel the ने grand आप बचा prize, दिया and that is not to get the 0 series. भाई at प्राइड all मत in हो Group गया but Omega. अरे guys entertainment बोलते hate it. Yes, DPLUSKIA are up 4-2. Rafiel now has his Blade Storm. He gets to keep that operator. It's such a hefty investment. You need to bring it over to the next round. You need to find impact with it. Yeah. And perhaps one way to do so is ये राउंड अगर ओजी हार गया तो फिर again, it's a जीजी लग रहा है हाँ जीजी लग रहा है मोमेंटम मेरा भी 10 साल का थोड़ा कुंडली बता Rafiel, he's all about aggression as well, so maybe की शादी होने वाली है अगर मैं कल कुछ करूंगा तो 10 साल में मेरे साथ क्या होगा पोपा I'm not sure if someone has अभी कल शादी बच्चा हो जाएगा 10 साल में बच्चा नहीं होगा भाई 1 ईयर में होगा ना नहीं तूने तो बोला कल कुछ करेगा तो 10 साल बाद रहेगा ना बच्चा तो a threat for your opponents. नाइस रे You know what? Rafiel gets out of that straight with a shot. Could go for another one, but gets forced back. नाइस रे Nice. लेट्स गो अकरम Oh nice. Pushing into the back of the भाई site. रॉफिल ही सब कुछ कर रहे हैं रिकॉन भी वही तोड़ रहा है Too good for DPLUSKIA. भाई मेरा टीम ये As इसमें अच्छा है Rafiel says, it's not going to happen. To Career me, ही the खत्म हो गया paradox भाई, तो has been shifted. And But nice anchor though, good stuff. just completely turning मेरे things लिए मेरा over. टीम टरेट तोड़ता था Orangutan ड्रोन are तोड़ता था proud. रिकॉन तोड़ता था स्मोक This नहीं is डालता what था you're saying. कुछ नहीं Yes, करता था लास्ट के DPLUSKIA, they have these लाइक लास्ट great दो setups, राउंड they के have दोनों these great रिकॉन रॉफिल ने executions. स्मोक ऑफ But if किए you get the first pick, if you throw a wrench ये into their देखने के plans, बाद I the love you site my anchor will teammates work out a little bit better. And this time the read onto भाई the वापस C कोई नहीं site, बोल रहा है starting off with the भाई up pick from Rafiel, We love you flipping too. over to the shorty, then बट picking ये up बताने the के second बाद- kill कर coming from करके मेरा behind as 3 साल well. खत्म हो गया This is when क्योंकि तेरे को Orangutan सीसेट ओपन नहीं करने का था इसे विदाउट कोई रिकॉन तोड़े अरे सी सेट में मेरा डेडली नहीं This will नहीं be a था strong स्किल्स और गोल you can already see हेवन में Orangutan स्किल्स इधर ही है ना स्किल्स Come हेलो on! बोलना Do बोलना it! सीसी Push it! बता The तो hunter भोसड़ी has के been सीसेट होल्ड activated. कैसे कर सकते हैं And भाई where is Hetzerak finding its mark all बता the ना way गांडू through खुद ही घुसता है ना garage from अभी A गांडू lane. होल्ड कौन करता And है बता ना Orangutan definitely I think feeling the the dirty heroics, language feeling use the कर रहे courage of their भाई यही teammate, and करने not यही only सिखाते having क्या to dirty go language high से up आप again. नाइस रे Rafiel MC once PC again. सिखाते क्या अभी सी Australia घुसता है is बाविन डैश मार के down. घुसता है अभी 3 सी players of एक कोई नहीं खड़ा दिखता है होता भाई Shot remain. वही And they're ये stuck. अच्छा They अग्रेशन can't कर really रहे हैं find अभी it. उन It's लोग the गराज map, प्रेशर they किया have the तभी spike एक in घुसे hand, but पोपा मैं भी the बहुत utility मजा to आया get a पॉइंट little दिया bit पर of आपने एक information, पॉइंट it's मिस still कर दिया going कि to be आप lacking एक्स्ट्रा है Xi. पोपा वो And ओपन hoping नहीं to हाँ वो maybe तो हाँ, गलती है वो- माई बैड ब्रो is there on platform, but डिस्प्ले में रिटायर्ड हो और तू खेल रहा है बस मैं किधर मैं भी तो एक ही बैठा हूँ वेला हाँ पर रिटायर्ड नहीं है ना अनाउंसमेंट रिटायरमेंट है this could give a chance. स्किल्स का तो इनवॉल्वमेंट Oh, no chance. He can't really find it. And नहीं, Rafiel skills finds break one onto पे है Lakia once more. So far off the sites too. And that's the वाह रॉफिल spike नहीं कर पाती carrier उधर dropped. नाइस चलो 8 गाइस players left and रॉफ्यूल में I guess कांग आ they गया could opt for ये a भी save. ठीक है There's 30 seconds left on the clock and that is why maybe के लिए so मॉनिटर far टेढ़ा back. करना पड़ेगा वैसे Allow just tucked away inside a आराम B बात है cubby, क्या उधर? anticipating perhaps a peek or a push. स्किल्स भैया मैं क्या बोल रहा हूँ The Hawk gets Bonk. snapped out. All right, doesn't quite find him. So it's a great Bonk, way again for खेला भाई Orangutan to actually start this. ओजी का round. नेक्स्ट में उनके सामने ही Have है Tesseract Bonk के with the सामने। blind hunter's fury actually. नेक्स्ट क्या लास्ट मैच है वो And meanwhile, हाँ भाई फिर भी ठीक है नेक्स्ट है ना भाई क्यों भाई जीतेंगे भाई अभी allow जीत the के नेक्स्ट में will जीत be के और able to गेम्स होगा move the consolation. ग्रुप भाई, स्टेज OG का है, लास्ट OG मैं बोल रहा अगर हूँ ये Not a सुन रहे हैं तो truly इसको कभी blind मत लो आपका और hunter's ये fury, if I करें। believe, because again they still got the इसका name other है players Bhavin of Orangutan got the Certified contact hitter? on Garage. लास्ट But गेम
still had to be very experienced enough to know where to follow through as they were trying to retreat from that. So definitely
बाहर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, अपने वाले भी सपोर्ट नहीं करते। अरे सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। नहीं नहीं किधर कर रहे हो भाई? अभी तो बोला है लास्ट गेम में उनका। रिवर्स साइकोलॉजी ब्रो। नहीं नहीं ब्रो, ये सब एस्केप कर रहे हैं गाइस अभी। अरे पकड़ ले इसको, ठीक है पकड़ लिया तूने बस। डॉक्यूमेंट पे स्माइल आएगा। That's the thing though. मतलब मेरे मुंह पे भी स्माइल आता है जब मैं तेरे को भाई मेरे को नहीं लगता प्लेयर्स इतना हैंड ओवर यूज कर रहे हैं जितना ये कर रहे हैं। हाँ डॉग को दिमाग चलाने के लिए हाथ गर्म रख रहे हैं। भाई ये रेट लिमिट एक्सीडेड क्या है भाई? ट्विटर हेलो क्या? रेट लिमिट एक्सीडेड, प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स देन ट्राई अगेन। मैं ट्विटर रिफ्रेश ही नहीं कर पा रहा हूं। गाइस देखो जब तक टाइम आउट है लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। हां भाई ठोक दो भाई, ठोक दो भाई। ठोक दो ऐसे नहीं ऐसे ठोक टाइम आउट है, इसको चपा फार्मी लाइक सब्सक्राइब। भाई मैं चपा का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों अगर ओजी ये मैच जीतेगी तो मैं आधा डेडलॉक आधा ये मेरा नहीं था, ये अनुज का लाइन था। ओजी मैप जीतती है तो मैं आधा डेडलॉक गिव अवे करूंगा। बोला मुझे आधा डेडलॉक। That they were aware of the plays that DPLUS could be utilizing here, but now looking into things. I'm enjoying this watch party. XE as well. They can make the exit on the A side, and they have a lot of options here. They could even go for the very sneaky and tricky to deal with from the shadows at the back of the site that could catch Aziz off guard. I've seen Mako pull off some of those. It all starts with this play though, and Aziz gets the perfect read, perfect information onto all of this. So DPLUSKIA have to think twice if they want to commit into the A site. They actually push into the dark. I am enjoying you, Rossi. What the fuck? Power of friendship. But it's great, yes. Power of How to friendship. enjoy you, SK Now they're going together. Starts things off with Allow. Yeah, The wrong field. Oh my yeah, God! yeah. Look at how courageous this guy is. Into the Nice! with the shorty. Nice, Finds the Rekram. kill. Tesseract from behind. From two Assist goals. from the Nice, baby. side. Esperanza up on A short. No way. अकरम बोला ऑप ही नहीं चाहिए, चलो शॉट ही लेके मैच। Bro, I am in G music. नाइस लेट्स गो जय। पुराना वाला शॉट एक बार खींचो record। ये पुराना शॉट ही लग रहा है। पुराना शॉट ही लग रहा है ना। हाँ नहीं। 200 माइनस हुआ मैं अभी बाई करते Oh, थे। ये पुराना पैच है? पुराना पैच है क्या? अरे हाँ इतना फास्ट चला है शॉट ही पुराना ही है फिर तो। टक टक। जोर जोर से किसी को Peek out the checkout from DPLUS. अरे he's just getting hyped up. Is the who guys? Yeah. See what is Who? happening. And the setup OG. not really fast वो enough. लोग कितने लोग गए Players उधर? orangutan on the side, they're 14-15 really जन? reacting quickly हाँ, and क्या? well. क्या बोल रहा है? मैं तो हाँ, 3-4 बोलने वाला था अभी एक सेकंड के लिए। Now he holds the angle out. Crowd वो में से उन्होंने कोई कुछ फोटो डाला था किसने तो Yeah, baby. जय ने या किसी ने। Yeah, Jay Oh went. my God! But allows Please us break back his straight recon. in. Rafael answers back through the cloud burst. Actually catches him. 4 players from DK now. They make the quick rotation. चलो at least Rafi ने तो मार दिया था। Onto the Rafi side. में मारेगा। Allville repositions, मैं मार gets देता। the shot. RVK sitting What? back flat. He finds अरे। Blackia with the Hunter's Fury now coming in. And Estrella Nice. finds a bit of space. He eliminates that operator. Now he's looking for the next target. नहीं। Oh my First the Trailblazer and then भगवान। Antidote. Yeah. Aziz now left alone. The spike's not been planted yet, so they could be भाई anywhere on this map. effortless नहीं चिपका है बे उसको। Last seen, and he actually saw the rotation. भाई Just जो भी बोलो कोरियन the प्लेयर्स ना कैंटम beautiful से बहुत locks मारते हैं of Lockheed. हाँ उन लोग का फैंटम न्यू पैच है हाँ 50 बुलेट। फैंटम से चपा चपार में हो जाते हैं क्या वो लोग? ये नया पैच है। चपार में तो आप पल नया पल पे खेल। नया पैच है क्योंकि 50 बुलेट्स ही है ना रिजर्व में। This is the problem of a Haven. Vandal of Phantom. You play bro. If you're in this Hey, situation, Gary you का have to पहले just टिकट बुक करो। 33% chance of knowing what's right, to be honest. अजीज ने I wrong will guess start कर दिया guys. I have very good contacts. .333 repeating. अजीज ने wrong guess कर लिया unfortunately. वो जीत रहा था गाइस, गैरी आके बैठ गए इधर। Estrella has the rolling thunder. नया पैच है जीत हाँ। रहा था वो लोग मस्त। But he could. And that's the most painful thing. All of that rotation took up quite a bit of time. It's roughly 8 to 10 अगर ये seconds. क्लच And किया now मैं एक BMW Blackia कार perfectly anticipated BMW car. the angle, a simple tap, and it's going to be 5 to 5. Yeah. Again, Australia was BMW पे रुक गया था जैसे इतना मर गया उसके बाद कार गिफ्ट कर रहा हूँ। Think about it, just micromanaging. औकात इतना था, इतना If बनाया, Aziz इतना pushes up, बनाऊंगा, ठीक है? And Lockheed was looking at contact, he has to still run back into the site where Short would have such a better angle
and catching him back into trying to defuse that spike. Just to kind if only I had listened to negative people. Anyways, I honestly thought that this was going to be a round for Orangutan because they were doing so well in catching the movement. अकरम अच्छा खेल रहा था रे ये राउंड वो शॉट लग गया था ना इसको from here and it goes from my right ear. Left ear से सुन के right ear में चले जाता. उसके लिए वो स्मोक में था ना गोली वोली चला देता था मार देता. अरे वो स्मोक में इसको गन दिख गया मेरे को लगा अकरम मार देगा इसे ही कप्पा. Behind this dark cover. But from the shadows was used. I don't know if it was अरे यार. Allow just peeks up. Yeah, very good. Double kill. Tesseract tries to hold the angle instead. And he will be able to find the first, but not the second because Esperanza and the rest of the team are already on the site. RVK only left with the stars. Tesseract ने decide कर ले only W, no stopping. Test बड़ो ये ना कि बड़ो ये ना कि भाविन की वो रॉफियरी लाइक ये मैं पूरा लास्ट में तो इसके मेरा सेंसी 0.42 internet DPI 1.5. He definitely does. Behind you. Wow. Okay, he's getting away, but the thing is, it's not only Lakia now that is going for the hunt. It's the rest of DPLUSKIA. 2x करो. You know what Kia's standing for right now? Anti-root का button नहीं दबा. क्या? देखता हूँ. But in that setup, what is the? There it is. Like what value is that setup adding? पता नहीं भाई setup पीछे दोनों आगे क्या setup पीछे दोनों आगे और flasher B side पे और recon A B पे दोनों initiator को B पर yes रे बस दो लोग चाहिए मारने के लिए setup is for vibes brother. That is unfortunate. but देख ना कि तेरा flasher जो रॉफिल को जो set करने चाहिए वो तो उसके अलग खेल रहा है और एंटी जिसका setup है जो stall करना चाहिए B garage पे वो किधर और नाच रहा है रॉफिल के साथ. I also thought there was going to be a chance for Antidote to get maybe a pop-off because, again, Rafuel missed the shot, but he also gave his life to gravitate the attention of the players of DPLUS. It honestly just looks like they're playing with the vibes. Antidote was feeling that forced him to pass him a little bit more. Maybe he can get the trigger discipline. But again, as you saw in that replay, saw the elbow, and that's all enough for Allow to go for the heavy punish. And you can see again, Orangutan really feeling the pressure has to fall once more. I don't mind it. It's the first half, the last round. Kills भैया. To secure बोलो 6-6. अरे कप्पा जी आप नहीं भाई आप तो मार ही दोगे. It's always good, but it's कप्पा also से a पंगा नहीं tricky equation that Skills we भैया. solve because looking at the buys just before we headed into the player camera. Skills hello. There were a lot of ultimates. Godspeed आपको lip reading करना आता है? Skills भैया कोई आपको lip reading करना आता है? हाँ. क्या बोल रहा है डॉग बताओ फटाफट. मैं सिर्फ उसके हैंड वार्मर पे ध्यान दे रहा हूँ. Yes, yeah. You like it when he does that? And that's one thing they kind of anticipate. They've got some Court ultimates of their own. Rossi's Yamate Kudasai. Yamate Kudasai. मैं गोलू जब बोलता है ना वो. And a very useful lockdown. So ऐसा लगता है वो confused तरीके से बोल रहा है. गोलू is so cool. He's the one at the very end, and you see him. He's playing with like a jacket over his shoulders. Such a bad boy. सबका पप्पा है. No He's not piercing too. Oh yeah, he doesn't even have his arms inside of the sleeves. It's like just hanging on his back. Okay, man, I see you. Anyways, Angla text on anime. Backed off here. Whoa, pushed out mid. On anime goals. As well, and this is what I like about Orangutan. Again, they're willing to always try to do something to try to basically catch the opponents off guard. Okay, Rafuel. He tailwinds away, and there's that rolling thunder. So it doesn't really hit anyone, but it gets so much space for DPLUSKIA. चलो ठीक है अभी सवाल नहीं है तब किल जल्ट और रेस्टोरेंट के अराउंड होपफुली रन निकाल. Oh, nice. बच गया भाई Tesseract. Oh, deeper. Gets punished. Defender lockdown Anti flank now पे क्यों is जा रहा है? भाई वो ठीक है Tesseract अकेला रिकॉन करके क्यों कूद रहा है चूतिए की तरह. But they also have some positions. कूदने नहीं गया कप्पा पीक तो छोड़. It's eliminate a couple of players. You can hear them shouting sight. Coach ही lacking practice. I don't know bro. As this pushes in at the right time, and RVK coming in with him as well. It all comes down to Whatever they're lacking is none of my business. He gets the business. shot through resist. Now Rafuel watching the angle, but the shock dart is good. RVK just trying to stick it all the way Nice रे ऋषि. at the right time. कर दिया ना. हो गया. Saved. OGS in this first half tied up 6-6. भाई ये कौन चिल्लाया? Let's go. Indeed. चिल्ला रहे उधर. That
so much मुझे हो रहा था effort कि for जोर से आएगा क्या Orangutan. बोलो crowd They से were threading the needle in every single bout that they were taking in this round. Look at the replays. It could have gone any other way. 6 on There was defense, already good, some no? resistance on the side itself. When you saw them 6 coming round in, Sharon अच्छा है defense. felt the pressure, had to push through the wall itself and got the pick. But then पर Lakia, my only problem is अगर इन लोग अभी walk in करने आता ना डेमोन के सामने तो उनको पनिश करेंगे. मैं वही बोलने वाला था. and if RVK हाँ वैसे ही खेलते पर चेंज करना पड़ेगा ना भाई इनके सामने. been well outplayed here by Lakia. Could have been, right? Coulda, woulda, shoulda. Bro, so smart and just so चेंज करेंगे नहीं करेंगे कितने की a little bit इसके ऊपर लग रही है. मैं तो बोल रहा हूँ नहीं वेट करेंगे. लगाओ यार क्या बैठे. ठंडा माहौल I क्यों think Betting the not shot allowed, going Kappa. off with his teammate getting eliminated. He knew वाह. that Lakia मुंबई would इंडिया में push बैंड है in ना? at some point. He heard the footsteps, he heard the Stream shot, पे ही and बैंड है still गांठ. got off the tap, and that is what स्ट्रीम में तो secured भाविन that भाई एक बार round. आप मान भी Well जाओगे. played by RVK. पागल But है. again, Guide there are guidelines, you know. There are rules and तो regulations. ये गिवअवे वाला रिश्वत चलता है क्या? That is a giveaway. There is no betting. अच्छा अगर ओजी जीती तो मैं एक वेबसाइट को 10,000 रुपए गिवअवे करूंगा. ये किसने बोला? The thing is, this is where the Sky gets a lot more value, I think, for Orangutan, just because you do have the extra reconnaissance with the Trailblazer. Yeah, but it's not as strong to bully out on the side like a breach, but again, it does give Orangutan a clearer picture and better options. नहीं And भाई this आप could तो hater spread हो भाई. DPLUSKIA pretty thin. भाई hater नहीं हूँ. But at least for the start of this pistol round, it मजाक seems कर रहा हूँ like पापा दिल पे Orangutan बताओ. बस realistic. want to go for that hella bully on the A long, if not पापा A लो. site. हाँ हाँ. जी यार इतना अच्छा लाइन बोलता और रिप्लाई नहीं आता है guys. अभी क्या एक ही लाइन तो रिंस एंड रिपीट करके बोलेगा तो बोर हो जाएगा रे इंसान. नहीं ठीक है भाई. जब आपको बोर खत्म हो जाएगा तभी बोला तब तक. I will never be bored by you. You can talk Oh! all the time. He's tucked away behind the boxes. But he gets tagged up and stunned by Estrella. पापा क्या आपको फ्लर्टिंग करना नहीं आता क्या? लड़कों के साथ नहीं. चल रहा है भाई. भाई फ्लर्टिंग स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए लड़का है और लड़की क्या फर्क पड़ता है? लड़कों पे ही पड़ता है भाई. नहीं नहीं इमोशन थोड़ी आता है लॉन्डो के साथ. फ्लर्टिंग होमोसेक्सुअल नहीं हो जरा भी. क्या शॉट. मैं नहीं हूँ होमोसेक्सुअल जरा भी भाई. I don't- होमोसेक्सुअल नहीं. होमिसेक्सुअल ये क्या है? Popa got no game. Lakia's so smart too. He just wait. He क्या was already डाला ना tagged, ऋषि को. waited on heaven because he has the recon लाकिया dart बोलते already हैं. active. So he's Guys, waiting for अब his इसके teammates बाद to clear a little bit more of देखेंगे. A long as well as A short. And boy, did समझ they, as रहे you हो? can see right there. And just about their hit onto the side, there's the recon dart. Now they know. Lakia even भाई एंटी अलाउ को जाने देता तो और मिल सकते थे क्या? gets tagged by the shot dart. पोपा No, एंटी eliminated अलाउ by को the shot जाने दे dart. सकता है And बट just मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा. ओए हाय. बस जाने नहीं दिया बट कुछ चलेगा ना गाइस. हाँ वही तो. Instantly knew how to play टूटा it. हुआ. Hiding up heaven. His teammates were already flanking. They took out Tesseract. So ठीक है बोल दे तू नहीं खेलेगा LCQ. कौन और मैं? आजा हाँ हम इधर खेलूंगा ऑफ भाई. सीजन खेलते हैं. मैं जीता हूँ खेलने के लिए. नहीं तो मेरे साथ खेलना मुझे नहीं जाने दे सकता तो. ऑफ सीजन में आता हूँ भाई खेलने. नहीं नहीं अभी आजा डायरेक्ट खेलते हैं अपन. नहीं नहीं अभी 50-50 का LG के इवेंट चालू है 50,000 के छोड़ LCQ. नेक्स्ट वीकेंड पुणे में इवेंट है जल्दी बोल. ए लाकिया ए पप्पाचा घर चेका. पकड़ पकड़ वेंटल वेंटल. पप्पाचा घर चे क्या 2 लैंग्वेजेस मिक्स कर दिया थोड़ा. हाँ गुजराती और ये. ये भी उड़ा. हाँ उड़ा उड़ा अलाउ फाइनली उड़ा. ऋषि भाई डिगल लेके अकरम का पोजीशन से फील नहीं आ रहा है गाइस. आ रहा है नहीं आ रहा पोपा फील तो मेरे को आपसे आता है. कोई कुछ आके करेगा तो फील आएगा नहीं तो नहीं ये तो गायब होने वाला है. हाँ वही. बट ऋषि प्ले बनाना चाहिए. For XC's smoke to actually come back. क्या So लाइन अप they कर only रहा है have to deal with the one भाई? angle. There's the paranoia. They do have the angle. ओ on दोनों को to डिंक lock तो you, किया है. but that is 2 head taps. Nice. And this ए could लो make है it दोनों. easier for दोनों RVK लो. at least. He has the hand cannon. Nice baby. ऋषि का राउंड है. Nice. Let's go ऋषि. Of course, by his teammate. Thoughts Ryan. रे हाइप हो गया Nice, ऋषि nice, हाइप हो गया. Orangutan इसका takes इसका that फिक्स रहता है 7-7. एक मैच में एक शेरिफ तो निकालने के लिए God, कुछ भी करके. Yeah, जीत के आने फर्क नहीं पड़ता. एक शेरिफ फ्लिप मेरा पे एक हाईलाइट तो निकालेंगे. मोंटाज तो बनेगा. मैच का भाई ऋषि 4 ही राउंड कैसे मरा है? 4 ही बार मरा है वो.
OG played against Scars, and yes, that was a tough match, but RBK had some insane shots with this Sheriff. And he's been doing that for the whole team this entire series, this entire event. He is that guy with the Sheriff. Oh, मैं assist को kill देख रहा हूँ. पहले तो बोलते ओमन होना चाहिए था, फ्लैश होना चाहिए. भाई क्या हो रहा है भाई? भूख लगाई क्या? भाई नशे में हो गया पोपा. हम नशे में, हम नशे में, हम नशे में. पोपा मैं तो आपके नशे में. ओह. रॉफिल भाई चपाचप. Push from Tesseract on C-Long. चलो टेस्ट भाई भी चालू हो गया. टेस्ट ने किधर मारा था C-Long? भाई अलग है सब. Tailwind is primed and ready. इनिशिएटर एक जगह है, बाकी चार एक जगह. नाइस इन्फो फ्लैश बैक साइड के लिए एक दिया. फार्म दे बेबी, फार्म दो स्किल्स. चलो चलो रॉफिल जेट रेड्स एक्टिव कर लो नेक्स्ट राउंड के लिए. फिर बी फॉर दे दे. कप्पा आप तो बहुत ही टॉक्सिक हो भाई. That's the Blade Storm 2. A great play. Headshot बोलना था गलती से राइफल. फिर भी ऋषि 5 बार ही मरा है रे. नहीं कोई नहीं पोपा, कप्पा दिल की बात ही आता है. 5 हाँ. सेव किया ना थोड़ा लोग ने. भाई अभी पोपा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, फिर एरिन को माय आईजीएल बोलते हैं धोखेबाज. तो क्या polygamy is very accepted guys. कुछ नहीं कर सकता गाइस, वो पोजीशन में दिख रहे हैं और किधर एक पीछे बैठा है और 3 दिखे. They picked up a lot with बाकी लोग मेंटल सपोर्ट है. भाई जयंत किधर गया भाई? बोर हो रहा है ऐसे तो. जयंत का ज्ञान के बिना. हाँ भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है. See how that goes. I don't hear the. हम लोग 4 रहेंगे तभी वर्ड करेगा. स्ट्रीम ऑफ रहेगा तभी. It still is going to be tricky though, because they're going to have to go through the KJ utility as well as the Omen. It's covering a lot of the space. No filter चाहिए. Gonna have to back away as he does get the tag. This does set up perfectly for Orangutan, but the setup's still there. Utility's still there. Esperanza get the momentum going, boys. Get this round. Hopefully, I've played at the back of things, but he's nice alone. He can't really do too much. Nice रे, nice. That's about that. जीत गया राउंड. Nice रे. And now they're building up the lead. Taking that operator away from Alau's hands. Wide swing बोलते. प्रेस भाई ये गेम में ही वाइड स्विंग किए वो पूरे. हाँ ये वो बाइंड में भी वो बोला भाई तो मैं मारता हूँ उनको. बाइंड में भी मारा भाई बेचारा. बहुत मारा. You can see that they were trying to work around this. They were trying to anchor the site, but with too many players up around, and I guess 𝘼𝐽𝐿𝐼𝐴 kind of alone couldn't quite answer against it. So yeah, 3 rounds in a row now for Orangutan. My man Rafiel just again happy. एकदम frustrated लग रहा था मैं. This contact. राउंड जीतता राउंड हारता है सेम फेस. Now trying to main control, a house control. Smoke's about to dissipate. And there is one outside the decision. If they can get the catch on him, his teammates are nowhere near. नहीं है ना किसी लॉन्ग होल्ड कर सके, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल होता है इन लोगों की. इसलिए राफिल टेस्ट को वेस्ट नहीं करता. चेक नहीं किया रे इसने. दो को मिस किया उसने. दो को मिस किया. हाँ दो को. बट जेट स्पॉट हो गया ना, वो लोग ऑपोजिट साइड ही जाएंगे. हाँ घुस गए यार क्या भाई. हाँ वही ठीक है. चेक नहीं किया वो ठीक है, बट हाँ अजीज का यूटिलिटी इतना अच्छा नहीं है, माफ कर दो भाई उसको. भाई ये तो हेटर है भाई. भाविन तो टारगेट कर रहा है. Transition while allowed tries to utilize the पीछे जा. भाई 𝘼𝐽𝐿𝐼𝐴 ने क्यों अल्टी यूज किया है? उसे बोला टेस्ट यूज करना था इको में, तो मैं भी कर देता हूं एक. Postman positions are up. All the angles held. पकड़. हो गया भाई जीजी. But not quite enough. 𝑋𝐈𝐍𝐿𝐼𝐴 will be हो गया भाई जीजी. अगर अभी से हारा तो इसका ही जिंक्स है गाइस. end it all. OGS in the lead 10-7. तो ठीक है ना, अभी एस्ट्रल आ गया ऋषि का. अभी अगर ओजी हारा तो भाविन का ही जिंक्स है. So what? ठीक है. Ults built up है decently OG के लिए. Again, they already know that their opponent's going to be already rotating hard onto C-Long. They're pushing up aggressive, and then there was some sort of, I don't want to say it's a disconnected play. I think it's just a play that didn't really get the kills because 𝘼𝐼𝐿 just got punished and again didn't get any value off of his ultimate. So the Hunter's Fury also couldn't get that value. If he maybe got the pick, तो C-Long ही स्टार्ट कर रहा है भाई अकेला हर राउंड. क्योंकि इन लोग के पास ये लोग कंट्रोल स्मोक यूज नहीं करते ना, पुल बैक यूज करते हैं ना. जेट ऑपर को सही है.
Going a little bit too aggressive. They got punished outside of garage. This allowed them to get. But ठीक है ना अभी एस्पेरेंसा के पास किल जो अल्ट तो फर्स्ट पोस्ट अच्छा ही है नहीं पर ब्रीच अल्ट है बी सीलॉन्ग बीप के लिए पोस्ट ना अभी पोस्ट में जो जीता वो And that could be अभी लेट garage आके दो मार रहे हैं टेस्ट उस पे डिपेंडेंट है कि किस पे डिपेंडेंट है वो बात अलग है बट फोर्स पोस्ट भाई तीन लोग को कुत्ते ने काटा रे Oh fuck. बहुत strong कुत्ता है मेरे को भी चाहिए. And look at that recon ball. Perfect information. Lakia comes in and just decimates. In all that time though, Orangutan, they hold up outside of garage. The whole team has made their way around the back of the spike. DPLUS goes through anyway. Popa ji curse activated. RBK not really expecting. Gun drop karo, gun drop. DPLUS here too. Popa ji curse activated. Again, just commit to the defuse on the spike. But to be fair, the rest of the members were already pushing onto C-Long to punish the players of Orangutan. There was a little bit more RVK could have done there, especially when you saw this KJ player. भाई मैं बैटल पास जीता था कब जीता अरे मुझे मैसेज नहीं किया आपने मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूं मोहम्मद भाई मैंने एक जन से बात हुई मेरी बाकी दो लोग ने आप लोग ने मैसेज ही नहीं किया है पोपा ऐसा नहीं करते मेरे को मैसेज भेजो यूपीआई आईडी भेजोगे तो मैं भेज दूंगा ना भेजा भाविन में भेजा मैसेज हां बरोबर पोपा मैं भी भेज देता हूं नहीं आईडी में लिख के रखे है आईजी पे किया आया नहीं ना ब्रो एक्शन रुको यूपीआई आईडी और क्या चाहिए पोपा आधार कार्ड चाहिए मेरा वो भी दे देता हूं बैटल बस मुझे मैसेज रिक्वेस्ट में आया ही नहीं अगर आया रहता तो मैं कोई नहीं अभी दे दो अरे भेजा देख भाविन तेरे को यूपीआई रुक जा मुझे ट्विटर पे मैसेज कर दो ना मुझे इंस्टाग्राम पे अरे रुको रे उसने वो बेचारा जीता है अच्छा हिडन रिक्वेस्ट में चला गया है क्या ओह नाइस नाइस Two players gone, site not defended, spike planted. You've got DPLUSKIA. देख ना एक राउंड हारे नहीं एंटी ने ऑफ निकाल दिया Yeah, this definitely was a save already. They didn't have the most convincing of rounds last time. आ गया Buys is going to be definitely short of मोहम्मद भाई आपका आ गया anything at this point. But really strong. हिडन रिक्वेस्ट में ये डील मैं डील ओके किया मेरे को कट चाहिए देखो अभी 20% होगा भाविन क्या बैटल पास मेरे को 20% चाहिए मोहम्मद भाई डील कंफर्म करके दिया आपके एक डेडलॉक Big problem here. रॉसी को क्या मिलेगा Feels like they're struggling. एक डेडलॉक Figuring out 0.2 डेडलॉक दे सकते हो चप्पल दे दो भाई चलेगा अब तो भी कुची के स्लाइड्स मिलते हो रॉसी भाई चप्पल क्या करूं मैं prizes for D+ at this point. के स्लाइड्स लेट्स गो जी लेट्स गो नहीं चाहिए भाई नॉर्मल स्लाइड से काम चल जाएगा are very close to match point. एंटी और आरवीके का अल्ट है ये राउंड भी अजीज भी अगर और दिला दिया अगर सीलोंग 3 स्विंग करके अजीज को दिला दिया फटाफट से और तो वो अच्छा हो जाएगा अरे छोड़ अजीज का अल्ट क्यों चाहिए तू किलजॉय अल्ट डाल एस्ट्रल डाल खत्म कर रहा हूं अजीज को पोस्ट प्लान लेने दे बट वो भी वेट ये लोग ने ऑन पर्पस ही टाइम गैराज विंडो स्मोक नहीं किया अभी वो हैंगओवर हिला नहीं रहा ये पूरा जोन आउट हो गया ये डॉक्टर he's more focused on that than anything else so favorably for Orangutan. He has better places to be Godspeed The abilities that they have spreading out like that and not really getting punished for it as well. User joined your channel. So much control and leeway. मैं टायर्ड हो गया भाई बहुत बात कर लिया आज यो man trying to figure things यो सिमो बेबी व्हाट्स अप प्लीज टेक ओवर क्या हुआ क्या चल रहा है But कुछ चल ही नहीं रहा है वही तो प्रॉब्लम Orangutan are so well versed in attacking. Orangutan चल रही है They don't just attack from one angle. You can see second map 11-9 up है they're flooding through garage. They're even going through the garage window and pushing all the way through spawn, which again feels like DPLUSKIA is not prepared for and getting outpaced by. So this happening, it's been a hassle. You can already see the benefits and the efforts really accrued for OG 11-8. That laugh. 3 ultimates. That's mine. मुझे पता तुम क्यों हंसे हो ये बहनचोद भाविन की स्क्रीन पे 11-8 क्यों दिखा रहा है तो 11-8 ही हुआ है 11-8 है 11-8 गलत बोला है अभी 12-8 होगा अभी फ्यूचर की बात कर रहे थे हम भाई मैं तो बोलूंगा साहिब भाई आप क्या बोलते हो आपका प्रेडिक्शन क्या है चलो जिंक्स करो मस्त बढ़िया वाला नहीं भाई बिल्कुल नहीं बोल रहा यहाँ पे लोग बोल रहे साहिब भाई अपना कर्स एक्टिवेट करने के लिए वापस भाई अगर अभी ओजी हारा तो साहिब भाई कुछ तो
ला 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 ला। आपका कर्ज दिख जाएगा अभी ये राउंड में। अरे सिमर भाई बताओ ग्रैंड फाइनल में मैं ये गाना नहीं गा रहा था टाइम आउट में आजीज। हाँ And DPLUS, they're really going for the hard, like, तो जीत रहे थे ना उसके बाद हार गए। He's activated his ultimate just to spot if there's anybody, any forces outside of C-Long, but nothing at this point. कोई ना गॉड स्पीड। तो फेंक दिया ऑफ। No noise, no information from both sides. Orangutan gets a chance at surprising DPLUSKIA. Of course, the Killjoy utility will reveal quite a bit. So will that ऐसा है कि नहीं? हाँ है। Lockdown being deployed just to give them a bit of safe passage onto the अरे site. लॉकडाउन ने तो ऑफ क्यों फेंका? पोस्टर हो सकता था ना साइड में नहीं? Push in though. It doesn't matter because all they are looking एक for कोई is भी the spike लिंक to get देखने के लिए planted. कर सकता था। Oh no! Tries to get in with a little bit more space, but unfortunately वो not फास्ट अटैक कर रहे भाई। enough. ये क्या So टीपी gets किया taken भाई out. उसने? हक दिया टीपी Esperanza थोड़ा now सा। थोड़ा हक दिया। हक दिया टीपी हल्का सा। पाक हाथ दिख गया उसका। Dark हक cover. दे। भाई का कर्ज गाइस पता चल जाएगा राउंड में। And they might have to भाई go for ये a राउंड couple में। of अरे but Esperanza, look at that sidestep. 3 kills in this round, and he sticks the defuse, gets it halfway, but oh! come on Tess, come on, nice रे। Tesseract comes up huge with देखा? the double kill, the 1-on-2 साई भाई का clutch कर्ज नहीं to है bring किसी OGS to सबसे। match ये point. कर एक ही बंदे का मैं समझ चुका हूँ वो है गॉड स्पीड। Let's go one more round। Kills. क्या बोलूं मैं अभी कर्स अगर प्रूव करना रहे तो क्या बोलूं ओजी जीतेगी। Clutch, however you want to call it. थर्ड मैप पे देखेंगे। That was an unfortunate shot and step because मैं अभी बोल रहा हूँ he got ओजी जीतेगी। punished for चलो just देखते हैं। trying to get that backside control. अगर कर्स सच्चा है तो ओटी जाएगा। And look at that. A while ago, they were Oh, just shot sitting down, test तो ऐसा chilling. activated है भाई। Now, all तीन hype, दिखे। all shouts, all roars. In any case, one more round and we're gonna go into game number 3. Oh, hold on. DPLUSKIA backs against the wall. They don't care whoa. anymore. They're ओ just भाई Lucky, आईची double kill. गॉन ये Exit क्या था? from the other side. इसको कैसे Completely caught by surprise. Tough. DPLUSKIA, they managed to नहीं बोले, push रुक जाओ Orangutan back. That was taking a play off of the round था? age of बजाज Orangutan. भाई If they're देखा मैच देखा मेरे बोला ना नहीं नहीं गेम बोला अभी भी 3 राउंड है। Might as well just throw everything in. Yeah, let's look at this. अगर ऐसा हुआ बजाज भाई Rockio to get a couple of आपको punches there, but टीम स्पीक से किक कर दिया जाएगा। अच्छा था भाई ये तो। through and then as everything was Hello, happening Simar. outside, he उन्होंने made अच्छा the round mid push खेला। was also simultaneously कपा भाई। getting that OG looks that clueless pressure. because they घर पे caught गया them off Simar? guard Okay, bro। of course, ऐसा strat के साथ। excuse me. भाई ये अभी इसमें घर पे ओजी कुछ नहीं कर सकता था भाई। Some of those like sucker punch rounds can only work. अभी अडैप्ट कर रहा है एक्चुअली डीके। Now you got इट को 3 सोलो छोड़ रहे हैं पे पता चल गया ये नहीं आ रहे हैं लोग। सिमर भाई कबीर लिख रहा है साई को बोलो वीसी से निकले और स्ट्रीम बंद करे। I think so वो बोलना चाहता है कि मैं कर्स नहीं हूँ। Maybe Rawfield to get in the sneak plants, but okay, XC is holding the off angle and तूने जैसे बोला राउंड हार गया। retrieve valuable information. So instead, it's a quick conversion on मेरे the आते C उसने side, वन but भी then टूट नहीं रे गया। नहीं रे दो लोग हैं और इधर। Hunter's Fury. So गॉड स्पीड ने बोल दिया है। Well, has gone down too. Let's go Tess। There it is. Nice Rebound will have to be broken by Lakia here. Shock ये जो dart does पकड़ा absolutely पकड़ी nothing. खेलते अरे अजीज क्यों Caught, कांड में गिरा side spotted. अरे अरे It's अरे। not done अरे yet. रेडार देखा उसने रे। Lau has to go for this pick at the back, but Tesseract's very aware. हाँ Spike बताओ has been लीड के planted, so मैच के DPLUS टाइम पे will still have to go 2-0 जी बोल के गए थे। for this retake. RBK running for his life as the lockdown. He tried to break, but Oh! it's not going to happen. Nice, nice. All around the map. Kills Come on, are Auntie. being had. Tesseract, an antidote, still alive. Smoke to Nice come रे on. Tesseract। Pushing up. They're hoping. Nice जी 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 जी। ये गराज वाला The तो tag बहुत is ही there, मॉइंट but it's only Esperanza to remain. And there Nice, is the भाई। Hunters here to Right, seal the day. Tesseract। Ladies and gentlemen, we're going to game number धो 3. दिया भाई टेसरैक्ट तो पूरा गेम। देखो प्रूव कर दिया मैंने भवन भाई। कर दिया आपने प्रूव। shots across the map, whether it's Let's go. Garage, whether it's B, have these angles held, and Orangutan, they will एस भाई तो खोल दिया। The tango Yo, continues. Rank, what's up? Orangutango continues here. And How are you? Guys hit that like and subscribe button अभी boys। जाके सोलो भरेगा game 2, पूरा डायमंड it's को। Orangutan. And it is truly, Haven truly is the playground of the South Asia region. एक बंदा चैट में पूछ रहा है भाविन की टेसरैक्ट इंडियन है क्या प्लीज बताओ। Roster. Guys, give us time. हाँ इंडियन है। Because after इंडियन है this, इंडियन है it's बस। going to be a very exciting game number 3. ये क्वेश्चन सुन के एक
ओ भाई I'm watching you from first map. Oh right, thank you. टेस्ट भाई ने बहुत गजब ही गेम घुमाया ये गेम। चलो एनालिस्ट सर, मालव सर बताइए, what is your analysis of the game? What went wrong and why did Yeah, OG win and OG too cold. what they should do on the next map to win and what they should do. Give away भाई, give away तुम दिल से सब्सक्राइब करो यार, give away थोड़ी कड़की चालू है गाइस। भाई मैं तो वॉस्ट कोच हो गया इधर। सब कैसे हो रहा है? इधर गॉडस्पीड है गाइस। My answer is same as Godspeed answer. So whatever 50k हो गया आज तो गिव अवे करेगा ना? Every day give away please. भाविन भाई आज 50k तो 50k होगा भी नहीं। आज होगा। नहीं होगा। अरे 47k ही नहीं हो रहा है। 50k किधर? गाइस अगर इंडियन चलो TDM टाइम आजा। Warriors assemble, TDM time, Warriors assemble please. गाइस 47k भी कर दो। ऐसा उम्मीद बैटल पास गिव नहीं, बैटल पास और उम्मीद थोड़ी आएगी। 46k पे एक साल से अटका हूं अभी, ऐसा फील हो रहा है। पापा मैं क्या बोलूं? 46k पे एक साल से अटका बोल रहा है। पापा मैं क्या बोल रहा हूं? आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में फोकस नहीं करना चाहिए। मैं वो नहीं मैं अरे मैं तो कुछ बोला ही नहीं, वो बंदा बोला गिव अवे, मैं बोला गिव अवे कहां से? हाँ भाई, अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा तो गिव अवे नहीं कर सकते, ऐसा तुमसे। अरे तो किया ना अभी। और करो। हां तो तू कर, करते रहो। मैं कभी नहीं करता वैसा। देख पूछो मेरे लोग को, मैं कभी गिव अवे किया? ऐसा नहीं करता मैं। लाइक सब्सक्राइब बंडल देने के लिए तू कब दिया? बड़ा स्ट्रीमर है ब्रो। बड़ा छोटा का स्ट्रीमर नहीं, मैं ऐसा हैबिट नहीं रखा हूं गिव अवे का। चलो गो करो पोपा। मुंबई हटो पहले। I am the Raja। आगे का भाभी। ये भारतीय भाषा। I am the Raja, 'cause I am the Raja। चिनिंग डिडिंग। तीसरा बार देखो मत, चला के सोचो। ओ भाई कांड हो गया। क्या हो गया? मैक्स और पेरेस के बीच में कांड हो गया। रेस चालू हो गया? ओ ठोक दिया क्या एक दूसरे को? हाँ अच्छा हुआ। तो क्या मतलब पेरेस ने? Wait, were you watching it in India? Yeah, Formula 1 TV। ए भाई तू डिस्कॉर्ड आ, तेरे लिए स्ट्रीम कर देता हूँ मैं। ऐसा आ जाओ गॉडस्पीड। अभी तो भाई पेरेज ने उसको ग्रास पे ढकेला मैक्स को, तो मैक्स ने जवाब में उसको और उल्टा ढकेल दिया। तो पेरेज टीम लीडर पे बोलता है अरे मैक्स को क्या हो गया? What the fuck? सब लोग वही बोल रहे हैं कि भाई पेरेज तूने उसको ढकेला पहले ग्रास पे, वो क्या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? ट्विटर पे क्या आ रहा है? इतना प्रसाद वो नहीं होगा अभी मैं जितना गॉडस्पीड है। भाई मैं तो परेशान हूँ, फरारी फैन हूँ। अरे फरारी फैन हो तो आपको उधर रेडियो रूम में बैठना चाहिए। फरारी फैन तो 15 साल से परेशान है। मेरे को कभी-कभी लगता है कि सिमर भाई की बात सच है, मैं ही बनाती हूँ। मैं किन टीम्स का फैन था? मैनचेस्टर यूनाइटेड, LA लेकर्स, फरारी, तीनों डूबे हुए। लेकर्स तो यू बी हैप्पी विद नॉट दिस सीजन। भाई 2015 के बाद से तीनों पे शनि छा गया। मैं तीनों का फैन था, पर ड्राइवर में लुइस हैमिल्टन अभी वो हो ही नहीं रहा बेचारा। हैमिल्टन ऑब्वियसली, पर मैं फैन हूं मिक शूमाकर। हां अरे हां वो तो मिक शूमाकर नहीं, मैं माइकल शूमाकर। मैं माइकल का भी फैन था, उसी के वजह से देखना चालू किया। हां सेम। उसका बेटा टोमेटो, वो मेरे को भी मालूम है उसका बेटा है। अरे नहीं भाई, टोमेटो बोला मेरे को डोमिनिक टोमेटो की याद आ गई सिमर भाई। सही बता रहा हूँ, दिल्ली बहुत ही अजीब जगह थी मेरे लिए, पर कुछ लोगों की वजह से बहुत मजा आया मेरे को दिल्ली में। कौन है ये लोग? आरती, स्वाति, सिमर भाई, सॉरी मैं कुछ और बात कर रहा हूं। सिमर भाई, साइबोर, क्या नाम है, विम भाई।
क्रैट भाई क्रैट ने तो बहुत Oh, Shiba. Not ready yet. क्रैट मजा आता है Somebody out. Ouch! Reloading. A long old day going all the way to the मालिक आ coming, but Orangutan gets back and they look so good. And they heard you guys talking a little bit of smack about Ascent on the desk and said, you know what, we're going to go all the way through, we're going to make this simple. बारी भी आ गई है रेगुलर रेसिंग चालू हो गई है Satchel out. Satchel out. I loved how they played as well. Once they got on the defense, they got off to a pretty decent start. Starting to win a few rounds, made it. And then, I think it was forced by the second half. Get him. That game. Yeah, what's kind of interesting to hear is those last couple of rounds for DPLUSKIA, it felt like they ran out of steam or ran out of ideas. Get out of here. They had one round to push that, but then rounds, you know, the tape sort of took him 30 there. But still was the MVP. We did mention it was going to be him and here that we were looking at on those socials. Satchel out. And it turns out, you know, Tesseract, Look किधर है भाई? the other point I'll quickly want to make as well. Raining so much that Delhi is somewhat senior for once. What the fuck? Try Burgerama. Yes, I tried Burgerama. So that might be why map 1 looked so one-sided. Here on खेलते के भी फैन थे हाँ अबे सब मेरे ऊपर मत फेंक दो भाई and obviously they adapted to clean the map. So knowing that, going into the third and final map of this season, got him. Bomb buddy out. Satchel out. That's of course so much that you can do, there's so much that you can play with. Yeah. You just really need to get a read on what DPLUSKIA Grenade! नहीं रेना तो बहुत मार रहा है. Not ready yet. Get out of my way! Feeling you don't see that super often. The age of 10 seconds until stage change. Ready. KJ, right? yeah, for sure. And the issue there is easier for DPLUSKIA to stage. show the angles here, because I think that's the big problem on Haven. The hunt begins. You have these guys, but it seems like Orangutan were just brushing it off. They weren't really caring about that, and it really Here comes the get over that hurdle, but ultimately just couldn't. They try to play the same game as Orangutan. One round and as Buck was mentioning, only wasn't a kind of scratch. Yeah, and that's the thing about Orangutan, I feel also. Satchel out. Just a few days ago, actually, very recently against Scars, and then that's one match where he didn't have a great performance. In fact, Rawful actually kind of suffered a lot. अरे तो ना एक जगह. My ult's ready. Again, this goes back to what we were talking about way before. Ultimate orb spawning. एक बंदे थे वहाँ पे. That could go Satchel out. quickly that DPLUSKIA finds a strong lead, and you cannot let them have that momentum. Well, that's the right. Not ready yet. The hard way that you can't take D+ quietly in that first round. So they've certainly shown that their weaknesses on Ascent over the last couple of days. And so look, if Scars can dominate us, Okay. then there is a chance for D+KIA to do the exact same. Much less see that shift up going into this series. हे भगवान. Satchel out. Hopefully, moving Maybe 150 kills, 150 kills. Even if Orangutan lose here, there is still a world. There is still a player.
someone gets it. Thank you, Tane, for 5 If then Bonkers plays horrendously, if DPLUSKIA plays horrendously, and then this tie is a world allow Orangutan to make it in the playoffs, into that third position. So, even if they lose here, there is in the outer regions of the atmosphere, outer regions of the universe, a way for Orangutan to still make it. I like how 5 kills left. But I'm also hearing a lot of The hunt begins. Ultimate Orb spawn. It's tough. Not ready yet. It's a 1%. It's a 1%. The lesser you get, the less wins you have, the more ifs are thrown into the mix. But at least until the group stage is over, there is बस चालू a होएगा. shot here for Orangutan. And you were talking like it's this series is done yet. It's not. Game 3 is still going underway. Yeah, and we're So going now to I'm see washroom the का. meta one you expect on both sides, which means again, Agent pick हो गया है, we get to Rossi. see Tesseract playing on that Sova. We get to see Luckier as well having another shot. Both of them मेरे को मत were रखा positive. अगर सर्च भी कर रहा A है. spectacular job there on Haven. It's just Tesseract did it better. But now is it Luckier's time to bring this one back? It has to be. I mean, he's been playing incredibly well today. But just to talk up DPLUSKIA again, though. Insidious देखने जाओ भाई, Insidious देखने आ जाऊंगा यार, मेरे को बहुत पसंद है. Satak Dixie, thanks a lot for becoming a member. Looking at Ascent, the last time they played this was against a team in Ascent in 3? finals. New act. 13-4 was the score. Yo guys, DPLUSKIA had a strong attack inside, and of course, with the guy that you'd expect leading the charge, it's Lakia with crazy kills, top fragging, coupled by Estrella. The issue is, right, Lucky has been a little bit slower today, and on the other side of things, Orangutan, every time we've seen them play Ascent, we've been saying, look, Aziz needs to have a solid performance, right? But he hasn't. He has not had the impact on the KO over the previous days. But today, he's looking a little bit better. He's looking a little bit sharper. And maybe, just maybe, this is the day to prove me wrong, prove us all wrong, that he can actually do it and still be that pseudo-duelist with the entry. Well, Tesseract also is here as the Sova, Sova, and he's been pretty damn good on that Haven map. And lo and behold, Ascent also gives a lot of plays, a lot of leeway to showcase what you got as a Sova main. Look, I know you said before, Asarai, you hate Bro, watching I'm Ascent. a big It's fan not of your favorite map. It's super boring. But I'm going to be having a good time backstage because this series is delivering. It's been entertaining. It's keeping the hopes of South Asia alive, knowing that DPLUSKIA could be going to a 0-2 scoreline, which is now a possibility. That's not something we discussed 4 days ago, before group started. Do you like the whole new bundle on a particular gun? I like the whole bundle. It's good, it's fun. I like that. Red Door final chapter. क्या बोलते हो guys? And again, it just goes to show how OG. volatile the By difference 2-1 OG बोला था मैंने. क्या पता सच हो जाए? I heard from a bird, सच हो जाए तो again, 10 it's medal tweeting बस around होगा here, it's पापा flying जी. around. It's a magpie, I think. I don't know how it got here from Australia, but it was making some noise in my ear, and it told me that Ascent is not too far away. Magpie's going to be flying up there to join the rest of the zoo, the orangutans, the boys from Korea as well. These individuals are looking to get the dub, and let's see who finds it here on Ascent. Thank you, Kabir, बताने के लिए, but मैं कर ही नहीं पाऊंगा. Starting out on the attack. You got OGS going off of their gorilla chat, and they're starting out on the defense. You can see setups already, and they're prepared to receive them. Did you see anticipation after the चलो OG. Insidious कौन देखता है भाई इधर वालों? Main here. Interestingly enough, maybe they're waiting for an aggressive पता था final chapter peek कुछ from तो आ रहा है. Orangutan, but that's not going to happen, as you mentioned. Orangutan already have sold themselves on each of these sites. It's going to be a slow पता नहीं, peak for but the आ रहा है moment. बोला Red Door कुछ तो. No real explosive entry from DK as well. Slow creep up. Waiting for their Ascent abilities to defense give them first round. a bit more information before How they many really classics start are you to do buying? anything. Oh, I have a very different take. You have no classics? It's going to be up to Tesseract. He lines up that recon bolt perfectly. But ये तो है सही है. And then they walk through together as a squad. जल्दी पूछा था. भाई Tesseract भाई full flow में है मस्त. It's going to be down to a 3-on-3 Oh nice. चिपक रहा है ना पोपा ऐसा सर. हाँ सब चिपक रहा है ऐसा लग रहा है. Full flow zone enter गया. हाँ समझ सकता हूँ चिपकता है कभी. The rest of them holding out inside a boathouse.
firstly taken out by Aziz's fragment, and then 𝐋𝐈𝐍𝐊𝐒 hiding inside of the corner. Can't quite land the shots. It's all up to 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐴, and he's been fully discovered by now. Swaps over to the Important kill. Nice. Still has some options. Nice रे. Aziz. भाई मेरे को उम्मीद दिख रही है 3 जन बैठे थे पीक करने के लिए उसके पीक के लिए। हाँ ऐसा नहीं कि एक डिफ्यूज कर रहा है, तीनों बैठे माँ के लाडले आजा। Oh wait, okay, that's not that part of the highlight, but he got 2 kills. And Raulzin, what's up, my you mod? talked about how Australia was about to get the flag. ये क्या कर रहा है भाई, अभी 2 हिला रहा है बैठ के। Meant that there was just less players fighting on the B side. The players को दे रहे हैं क्या शायद ये? Difficult for D+ to really get नहीं out. ऐसा लग तो नहीं रहा है। From OG, it was a very, very difficult endeavor to get over. Triple K watch Kuroko basket. I think Kuroko basket and 𝐼𝐽𝐿𝐴 the only 2 sports anime that I've seen. अरे but then what slam dunk हाजी ने को मैं ऐसा जो स्पोर्ट मेरे को पसंद आता है वो देखता हूँ। बास्केटबॉल? हाँ बास्केटबॉल पसंद हाँ तो स्लैम डंक देखो। D+Kia's unfortunately, he's gonna have to back off. Slam dunk. देखो कैसे recommendation आ रहा है ले लो। Weapons given away. 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐴 managing to pick up. Slam dunk is equal to basketball. They tap the pause button. They cut noise again. This turret doesn't spot anything coming through mid, if I'm not mistaken. You can see the LOS, the line of sight. If we see Tesseract pushing in, he might be able to actually gain access somewhat on tiles. ठीक है, slam dunk देखेंगे next. Netflix पे क्या? Coming in through B main. If they can't break that nano swarm, that's a short-lived life for Australia. Oh, they actually do. Esperanza has a chance. अच्छा ये है, but मारना ही पड़ेगा ऐसे. लॉलीपॉप हो जाएगा ना. दो को मारना है, 1-1 नहीं कर but he's not allowing them to drop in to the site, and the punish follows up. Nice. मार दिया दोनों को. Nice. बहुत अच्छा टाइमिंग निकाला उसने. Repositioning भी good है चलो. पहला राउंड कौन जीता? वो जी. OG पिस्टल जीते. नहीं कप्पा शेरिफ लोग 2 गन देखे हैं। Watching the angle outside of B main, they're expecting him to come from this Ascent, spot. Ascent वो भी थर्ड मैप डिफेंडिंग चालू किया है भाई, बहुत अच्छा है। All the way back to Banner spot. अरे भाई टेस्ट खाई सब चिपक रहे पे मजा आ रहा है, मारता जा। Somehow kill 2 players with a single shot, single burst. Yes, by only headshot. Only headshots. Check this replay real quick. How did Estrella get that double? Oh, he was very prepared for the swings. Okay, I like that. Oh, Ruffalo did get 2, so it's still fine. But RVK, this was the big hitter for this round. Get cool, calm, collected. They were thinking maybe he's on this side. They don't really have that many options, and RVK taking advantage of that. Just basically gets himself a 2K. So that means that if you look at the side of OGS here, some good charges on their ultimate is being had already. मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ गाइस, नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों। और कल प्रैक्टिस भी है। अभी तो 5-man खेलना, क्या कर रहा है तू? 5-man खेलना है? नहीं मैं नहीं हूँ, तुम लोग खेलो। क्यों भाविन भाई? क्यों जा रहा है भाविन? अरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ डिनर पे। दोस्त तो हम दोस्त नहीं हैं। अरे कॉलेज के दोस्त मिल रहे हैं बहुत टाइम बाद भाई। किधर मिल रहे हैं भाई? अगर मेरा कॉलेज फ्रेंड्स और आपके वजह आपका बीच में होता पता नहीं, तो ग्रुप मैं में बात चालू है, देखूंगा। तो अगर मेरा कॉलेज फ्रेंड्स और आपके बारे में बीच में आता तो मैं आपको चूज करता। जैसे प्रोसेस तेरे वजह से नहीं खेल रहा है भाविन। प्रायोरिटीज देखो भाई। It's allowing them to also see portions of the spot कैसे नहीं हुआ? उसने बुलेट चलाया। नहीं चलाया। किधर चलाया भाई? भाई उसने चलाया क्या? Could be really difficult to आवाज में believe, SMG especially when Lakia has saved up. बुलडॉग में 24 तरह था भाविन भाई। Rafael takes advantage, नहीं कोई takes नहीं। the initiative to get these picks. अरे And 𝐋𝐈𝐍𝐿𝐴 have already got the access. Maybe Tesseract, maybe, but Antigos just gonna back ड्रोन के भाई अल्ट यूज कर लिया उसने। I think he was detected as well. Yes, मार देगा भाई पागल है। Find some shots from heaven though, Asser, right? He's looking for a W hit. दबाएगा भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया। And now RVK with a sheriff. Door in his face. Guys, chat एनर्जी तो यार मेरे को भी तो एनर्जेटिक रहना है। अगर उधर एंटी ड्रोन तोड़ने स्मोक में जाने की जगह पे बाहर कैन ओजी स्टिल क्वालीफाई या ब्रो दे कैन? हाँ वो टीपीवीपी नहीं करता उसे। हाँ तो वो रॉफिल के साथ क्रॉस लगा के और 2 मार देते थे वो लोग मिलके, एक और फ्री में तो उठा ही लेते थे।
And we're really hearing, like खुद को सेव I have करके heard it फ्रैग देने in के the लिए देखा broadcast in South Asia how very passionate and very much heard the fans are, and they brought that here in Bangkok, Thailand. क्योंकि उनके पास फ्लैशेस भी नहीं थे ना वो लोग ने ईमेल पे इतने aggressive smokes डाल दिए थे कि वो फ्लैशेस ही marry नहीं me Because it looked like he was able to do so, ओ मैंने but फ्लैश ही यूज करना somehow पड़ता था उसको वो एंटी को ब्रेक करने के लिए able to still get the site and the round in the end. With that win now, it's going to be another buy up. You got 𝘍𝐿𝐼𝐽𝐿 with an Odin. And you know how this thing shoots Purposely through suppress हुआ है walls. हाँ मैं पर देख लिया उन लोग ने जेट और ये लोग भी तो बी जा रहे that will be used to halt DPLUSKIA's advances. Instead, DPLUSKIA makes their way through B main and they find contact onto RVK. This guy is going to have to fall back and Rafael no shield. He is gone. So will the site. आपके साथ अच्छी Tesla shield. comes in from market and just जरूरत तो नहीं है Nanoswarm. Let's go test by W Gaming. भाई टेस्ट भाई थोड़े पागल हो गए क्या कर रहे हैं ये ओ भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये सब औरे लग गए बोलते सिर्फ टेस्ट भाई नहीं है भाविन भाई आज हाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया भाई ये There was a trick I think that Bro, unfortunate था कि ये लोग ये राउंड ऐसा राउंड पे किया बीएंड करने को जिसके पास जो राउंड ऋषि के पास डबल मल्टी लेन्स नहीं है और उसके पास एक मार्केट डोर पे है तो उनके पास स्टॉपिंग पावर कम हो गया एक और मल्टी रहता तो टेस्ट एक और घुमा देता था उधर से क्योंकि टेस्ट घुमा देता कि नहीं वो पता नहीं बट मालूम है तेरे को पूरा वर्ड चलो पूरा वर्ड क्या घुमा दूंगा रसी भाई आप तो कोरिया भी नहीं लेके गए अभी हम फ्रेंड्स से मिलो तू जा मेरा अभी भी तो ट्विटर प्रोफाइल खोलेगा ना मेरा खबर तो वही है हां मैं चेंज नहीं किया मैंने चेंज ही नहीं किया मेरा क्या Yo, I know it's far but रसी ने अपने जी डॉक्यूमेंट्री में बोला हां तू जा वही रखा है मैंने paradox that you were talking about, Asarai, always got to be thinking about that. Yeah. But it's a smart push from DPLUSKIA. They knew to kind of delay it and then have a couple more people holding out by B main. And that's the main thing because if चलो राफेल भाई ब्लेड से चपाचप एक दो घुमा दो एक दो अजीज ऑफ क्यों सेव किया राफेल क्योंकि राफेल ब्लेड्स पे ना नहीं सेव किया ना अच्छा समझा a bit of a 0-point tag though and RVK tries मार ऋषि का राउंड है ऋषि ऋषि राउंड ये तो ऋषि में थोड़ा ज्यादा वाइड चलेगा तो ऋषि अरे भाई प्लस अप ही हो गया नाइस अरे यार with the angles on the shock dart fight रसी ऑरेंज में भी राइट क्लिक पॉसिबल नहीं है क्या कि मार सकते थे मर जाता था राइट क्लिक Nanoswarm holds them off. Spike's been planted and now off angle held. You also have the Odin just waiting for the best time. A bit of a dark cover gives him an extension, but not quite. अरे फ्लैश है ना फ्लैश करना अपने टीममेट के लिए जाने को अंदर Aziz looks for a bit of an angle and he knows that Odin's there. भाविन भाई आप इकोनॉमी मैनेजमेंट नहीं समझ रहे थोड़ा इधर And how do you play off of this with this bolt? दो है उतने में मार he turns it around. This is suddenly very जो दिया है उतना ठीक है इतने में इतना ही मिलेगा नो स्कोप और DPLUSKIA इतना पैसे के लिए इतना ही मिलेगा आइस कर लेते हैं DPLUS had to deal with that situation. नहीं वो यूटिलिटी नहीं यूज करता है ओनली शिपिंग Players knocking down the door on market. I know it was a weaker buy for OGS here, especially ज़्यादा फ्लैश डालना है तो ज़्यादा time to break that down. For all legal reasons, DPLUS did a fantastic job clearing one thing up and then dealing with the other right after. So quick, so stressful, yet they still were able to execute perfectly and win the round. Yes, it was a weaker buy, but Rafael had the blades, Aziz has the ultimate, or the operator, but now this is the push on Anti-re baba, chalo. Oh my gosh. Somehow short left unchecked. Aziz got hit in the back, and it's going to be now the site cracked open. Antidote not quite able to defend. एंकर स्मोक डाल के एंकर क्या रैंडी क्या कर रहा
है देखो स्मोक था ना उसके पास हाँ सब स्मोक करके खेल रहा था अरे कमल गुस्सा हो गया तो टिल्ट हो गया भाई ठीक है ना भाई ट्विटर क्यों नहीं चल रहा मेरे पीसी पे भाई मैं अगर एलन मस्क होता आपका सवाल के लिए जवाब देता बट नहीं एलन मस्क जिस दिन मैं ट्विटर खरीदूंगा आपका सवाल के लिए आंसर मिलेगा If I get hits in the next round, it's going to be good. But anyways, guys, there's also one thing that कौन आया टीएस पे देखा think like why wasn't anyone spotting out allowed? इसलिए हम हार रहे कौन आया बता नाम दे give his name कोलेसन slowly pushing up Kole hey do me a favor let's play Kole no charging through a short all of that noise in main कोलेसन फुल चिकना है मेरे को ऐसा पता नहीं था कि हमारा टीम का कोई भी वाइप मैच करेगा मैं सुना कोलेसन आपने 20,000 25,000 खर्चा किया है शॉपिंग में मालोफ के साथ कोलेसन was dropping money like it was flies Bhavin आई VCL ऐसे money boy top 3 VCL split 2 that price pool उस दिन ही क्रेडिट हुआ था Bhavin उसके बैंक अकाउंट में जैसे हम मैच कर रहे 2 सेकंड बाद आ गया कितना मिला था $40,000 भाई थोड़ा फास्ट नहीं हो गए $500,000 भाई हम लोग तो अभी वेट ही कर रहे हैं हां भाई हम तो वेट ही कर रहे हैं the pressure once again अभी भी वेट ही कर रहे हैं एक्चुअली बहुत अच्छी चीज we've been talking about over and over again that they haven't मेरे को तो कभी लेके नहीं गए मतलब याद रख their graves deeper and चल तू आजा they need नहीं भाई something to let themselves कोरिया में से अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे स्काइस तो मस्त चिल कर रहे होता है बैकग्राउंड में देखा किसी ने मेरे को क्या मैं तो एनालिस्ट हूं वो बंदा 2 हैंड ऑमर लेके खेल रहा है भाई ट्विटर नहीं चल रहा क्या हेलो But wait, Skies doesn't have headphones? No, he cannot have headphones. So, no, but इसमें तो assistant coach can listen in, right? Specific में बोल नहीं सकता सुन सकता है हाँ but ये तो सुन भी नहीं पा रहा है ना all those ifs start coming. Eraser has always had spin next to him and talking to him. That's not a fun thing to have. अरे but spin is assistant coach. हाँ Kai is listed as an analyst. अरे तो सेम है ना नहीं सुशांत can also not because he's listed as an analyst. तो I can be listed as तो एनालिस्ट का काम करके असिस्टेंट कोच कर सकते हैं हाँ but वहाँ पे उनको असिस्टेंट कोच के अंदर लिखवाना पड़ेगा वो रजिस्टर करना पड़ेगा तभी होगा I don't think they registered them. इतना फाइन लाइन है मेरे को नहीं मालूम तो I'll tell you something off. हाँ ये देखिए इसका आवाज चालू है इसको चालू है they're aware भाई ये सब कैमरा एंगल्स मस्त लगते हैं लेकिन नहीं and they're literally talent है भाई ऑब्जर्व line of sight look at that बहुत fast short if you try to make a maybe but the flash was just क्या हम लोग ऑटो पायलट पे छोड़ देते अरे caught Rafuel off guard. They might have heard also the dash. रखना बड़ा वो खाते रहते हैं बाद में. Leeway, a little bit, maybe an opening here on the side, but thankfully RVK got his that's why he's not listening. नहीं I will. अरे भाई स्मोक वोक दोनों का घर पे लेके जाने का कर दो भाई. अरे It's perfectly countered. Now the question is, will Rafuel be भाई कैसे एक पिक आने दिया Can't let the shot. Antidote gone too. And we're back to the 3 players left. It's a save. Aziz has Rafuel's running. Rafuel's like तुम लोग मरो इधर मैं जा रहा हूँ. DPLUSKIA भाई निकाल सकते हैं. Never mind. ला अभी ज्यादा हो गया भोसड़ी के. Delayed, not well timed. The shot from heaven, taking out Estrella. Now they have to push in. Tesseract is too darn low. XC, he holds it out from Garden. Blackia is still alive. Just don't have that much time left. It's another save for Orangutan. But being 2-5 down on defense is a little scary. Hit those shots, but he's not confident pushing in because he has the operator. If he makes a mistake with the shot again, he's just dead in the water. Yes, he's getting these exit frags, but ultimately, it's the round still taken by DPLUSKIA.
Correct me if I'm wrong. I'm pretty sure Orangutan were already looking to save. Game sound and then Aziz just hits like a 2K, and then they start coming back into the side. It's like Aziz के पास flash थे क्या अभी भी? And then again, position for some of the players not well enough that they could really especially. उसने मॉली यूज किया तो एक फ्लैश बाकी रहेगा. There was no one that could really follow up on that. अरे ऑपर एमएन देख रहा था. हम लोग शॉट पे क्यों नहीं स्मोक कर रहे आरवी के लिए? पापा मैं बोलता हूँ आप स्मोकर खेल लो. शायद आपका करियर भाविन ने बर्बाद कर दिया B-Long में. Oh nice. But RVK has ऋषि बोला भाई. रॉसी बोलता ना. रॉसी तू होता है हेवन पे ऑपर तो तू बोलता ना कि एमएन स्मोक मत कर. हाँ मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई. Now they're just trying to peek in. बहुत मुश्किल है शॉट. You can't do it against Rafael. You've got the nanostorm right underneath and allows tries to. पहली बार भगवान के डर से उसने फ्लैश यूज किया अजीज ने. Look at the anchor. Look at RVK from Guardian. वो लोग भी क्या स्मोक सर क्या है भाई? वो डबल स्मोक के लिए हाँ वो ठीक है अल्ट के हिसाब से किया पर रुका भी नहीं स्मोक के लिए वो चोमो. Right. Stop drinking coke and replace it water bottle already become skinny as jet. अब बोले तो हम आज कोक से नहा लेंगे. Maybe afraid. अरे अगर ये bottle खोलूंगा तो ऐसा where an operator can still तू उसे शेक किया क्या smoke cover it and it did not. And a raw fuel not shying away from a couple of picks. Again, giving chance as well for Aziz to get that god anchor on the Ascent. I think it was like a little bit of overconfidence from. क्या गीला होने का? Just like. Hello. 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 Question mark. So now they're back to slow pacing. भाई ध्यान wetness Looking to आती है ना. बारिश इतना हो रहा है मुंबई पे उसमें ही ध्यान है मेरा. कनाडा. अच्छा. पूरा गीला गीला हो जाता हूँ मैं बारिश में. For real stop. ठीक है भाई. राउंड कर आज दिया से ना. मेरा डेस्क में कोक नहीं. हाँ. टेबल के नीचे दिखेगा है ना? टेबल के नीचे तो मैं हूँ. भाई ये क्या चालू है भाई? पापा मैंने पापा मतलब नेक्स्ट लेवल लेके. ये वॉच पार्टी चालू है या कौन सा और पार्टी चालू है? हाँ ये पार्टी चालू है भाई. ये स्ट्रीम सीधा किधर और जाने वाला है मैप के. भाई मतलब तू ही बोला. This could actually be bad for. मैं टेबल इससे मुड़ रहा हूँ. Oh, yeah, exactly. He's making so much noise up It's entertainment there. value. ध्यान भटक गया. Positioning. नहीं एस्परांजा भी चूते हैं ना भाग भाग के जा रहे हैं. भाग क्यों दिया भाई ये? Great start off. फील आ रही थी. बाग मिल का फील आ रहा है. Right underneath their noses. सोलो तो इनकी गांडी ले लेगा भाई. Spray on. And he eliminates Rockville as well. जा रहे कहीं. And then the fragment. Estrella. ये लोग भी भाग रहे. भागम भाग भागम भाग भागम भाग. RVK from Market. Antidote coming in. They're trying to find great position. ये सस्ते सस्ते नशे वाला गेम चालू है ये. Is inside the dark cover. He takes out Antidote, and that leaves RVK alone. बैठ जाओ. ये गत्ता भी नहीं है ये विक्स और ब्रेड खा रहे हैं सब बैठ के. भाई इतना गाली क्यों दे रहे हो भाई? सब लोग गाली क्यों दे रहे हो? गाली थोड़ी दिया एक भी नहीं दिया. मैंने भी नहीं दिया. बिना गाली दे के इमोशनल डैमेज है भाई. The mid भरा है ना into sight for the तभी से भरी रहो भरी रहो. DPLUSKIA is outmaneuvering. क्यों भरता है रे रॉसी? Outpacing Orangutan. We're going to be looking at the replay. रॉसी बहुत टॉक्सिक हो गया आजकल का. हाँ मैं टॉक्सिक. रॉसी अपना सॉल्ट पे कोई भी कुछ भी बोले ऊपर से आके नमक डालेगा. Retakes the B side. भाई. Round 2 DPLUSKIA. गणेश सॉल्ट पे गंगाधर. Only watch. गणेश इसके रॉसी गंगाधर. Just feel that, like you're sitting. Bangalore to Korea. They need to get next to the proactive. wall. They need to take the destiny into their own hands. And I love this play from Antidote. Bhavin, He has to be हाँ very बोलना राजा. careful. तेरे को याद है यही राउंड है एंडी तू मारेगा 3 को. उस रात को अपन ने जब भी अपन वॉक के साथ थे तभी अपन ने ये फ्लैश ढूंढा था एमएन का. उसके बाद लाइक याद है तेरे को रात? भाई तो आगे बोलना फ्लैश ढूंढना था. उसके बाद सब लोग यूज करने लगे. ऐसा लगता है कि अपन ने कॉपी किया किसी का. नहीं अपन ने तो कॉपी थोड़ी की है.
अपन ने बनाया था ना हाँ हर टाइम दिखता है ये मैप वो फ्लैश ऑलमोस्ट एवरी टीम यूज करती है वो लोग ने भी ऊपर वाला नाइफ और वो फ्लैश हाँ तेरे को मैंने पहले ही बोला था मालक पेटेंट कर ले ट्राई किया था बट ऐसे राइट ऐसे नहीं दिया मेरे ईमेल भाई तुम लोग क्या बातें कर रहे हो याद है क्या हो रहा है अरे भाई तो बैठ के क्यों फ्लैशेस ढूंढ रहे थे तो ऐसा बोला ना याद है क्या पहले मैंने वो बोला क्या बात कर रहे हो भाई हेलो अभी देख देखिए फ्लैश नहीं यूज करेगा कितने की शर्त लगाते हो अजीज भाई फ्लैश नहीं यूज करेंगे यूज करेगा 500 रुपीस शर्त ये फ्लैश यूज करेगा 500 रुपीस पापा ऑन स्ट्रीम हाँ देता हूँ बस नेक्स्ट टाइम मिलेगा तभी देता हूँ वो शॉट है ऋषि नाइस अरे 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 सामान खाली लोग भी खाली सब एक-एक करके जा रहे हैं I can do that. Again and again, it happens. Standing of DPLUSKIA here. Actually, last round, Estrella this one. Look at that. And another. He heard the drop too, so he was already setting up his crosshair right there. And Estrella, or rather Lakia, he's already moved his jacket there. He's heated it up with his teammate. चिपका है but Phantom This is not looking too good. Back 7-3. और ये सब ओनली फैंटम ही चलाते हैं सब कोरियन टीम्स They're starting to make it look like buying once again. They've got that lead, right? They've got that momentum. But here oh it my comes. god. My god, भाई ये क्या है एम लैब चालू है इसका तो just comes in and rips their faces clean off. Antidote tries to push up from well, no, he's not even pushing up. He's holding off the angle. कर ले बराबर कर रहा है RVK that's actually coming up from Styles, but कपा उड़ा भी दिया what was that? Yeah, he went for the wide jump swing peak. I don't know how to call it, but it looked like it, and he just that's the way the dodge the sheriff shot, I guess. But yeah. बेचारा ऋषि तो इतना अच्छा है उसको क्यों भर दिया हाँ भाई कप्पा सबको भरता है भाई मैं किधर भरा नहीं लाकिया क्या बोल रहा हूँ भाई कप्पा है भाई कप्पा हेटर है भाई हेटर कप्पा जब बोलता है ना जो कप्पा ऐसा हेटर ऐसा बोला हेटर तेरी माँ का देता दिखाता हूँ मैं तेरे को ऐसा ऐसा फील हुआ वापस बोल मेरे को हेटर बोल के बता रे कल के छोकरे ऐसा बोल रहा था कप्पा रॉसी को बोविन को जो बोलना था ना वो इसमें मैं कन्वे कर अरे तूने मेरे को कुछ बोला भी नहीं तो मैं क्या कन्वे करूं पता नहीं वो होता है फ्रस्ट्रेशन अंदर का सबके पास अभी जितने भी अच्छे रहो फ्रस्ट्रेशन तो रहता ही है क्या कप्पा क्या अच्छा रहने से कुछ नहीं प्रॉब्लम ये मेरे मुंह में फिल्टर नहीं रहता मैं तेरे को ऐसे ही बोल देता हूँ जो है बोल दिया ना अभी हाँ बस बोल दिया बस मेरे मन की बात पता है सब हल्का हो गया भाविन अभी मन की बात मोदी जी के साथ आपकी बार मोदी सरकार हर घर में एक कंप्यूटर फ्री मिलेगा सबको वो मार्क कर रहा था भाई क्या कर सकते हैं ये मैप होना झटपट मैं डिफेंड करूंगा रॉफ्यूल को वो होल्ड कर रहा था भाई अरे हाँ ना लेकिन कोई तो चाहिए ना वो रिकॉन तोड़ दे वो एंगल ही नहीं छोड़ता रिकॉन तो कौन तोड़ रहा है पूरा मैच में मैं और कप्पा ही थे हाँ भाई अपनी जान देने के लिए बम में आती की थे मेरा टीम बहुत अच्छा है भाई सब तोड़ते हैं and he thought that he could have maybe gotten back into cover, reloaded the weapon, but not gonna happen. नहीं भाई मैंने आपको छोड़ दिया अरे shit Caught them sleeping, he caught them lacking. They thought that they were safe, but no, technology says otherwise. एंटी ने लाकिया का पेटेंटेड प्ले इसके सामने ही खींचा उसके सामने ही खींचा मेरे को भी दिमाग में फटाफट से कूद के मेरे को भी दिमाग में वही है अरे 2% बैटरी there is still hope पिस्टल जीत गए तो there is hope कोहली भाई आप अभी भी हो एक शब्द नहीं आया तो हमें लगा खत्म हो गए तब से बोल ही रहा हूँ ट्राई कर रहे हैं कोहली भाई बोलने की
popping off as well. वही sad हूँ, OG हार गया। और का reason से sad नहीं है ना तू? एस्टर हार गई तब sad नहीं हुआ? तब तो वो खुश था बेंच। अगर कोहली टॉप पे रहेगा तो खुश हुआ रहेगा, बॉटम पे रहेगा तो बहुत दुखी। स्कोरबोर्ड भाई, स्कोरबोर्ड। भाई मतलब गलत हो गया कनाडा जाने के बाद से। कोहली चालू किया भाई, मैं तो फॉलो कर रहा था कोहली का लीड। The utility setup of DPLUSKIA have been. They were so aware of where their position. DPLUS just wanted them to be there with again the utility setup. नया लाइनअप बन रहा है कि नहीं कुछ? Like what we saw बन रहा है ना, मैं बताता हूँ। अरे पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। झूठ मत बोल। Shouldn't be happening on Ascent. 5 भाई कोडी बोले कौवा काटे। It's not तेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या? मतलब तेरे को ही पकड़ूंगा। मेरे को थोड़ा ही मालूम है। फिर गॉड स्पीड को पकड़ो सब लोग। काले भाई मार्क को बन जा एंटी, तुम जादू करो बन जाएगा। भाई उसको बनने का जरूरत है क्या? मतलब सक्षम बोल रहा है कनाडा में कुछ गलत हुआ है तेरे I don't think it's a super problem, but I mean, imagine if they lost the pistol, they force bought, they lost the force buy. That's going to be a 4-10 in the blink of an eye. So, as you mentioned, it is pivotal. भाई ये कोरियंस भी क्यूट कैसे हैं? तुम लोग कौन सब चिल्ला रहे हैं? कौन चिल्ला रहे हैं पीछे से? ये वो लोग ये नामबियर लोग चिल्ला रहे हैं, प्रणव नामबियर। ये ओजी का हाइप स्क्वाड। Team hyping them up. Rafiel goes in with the execute and he just dashes straight in. W बोलते? लेफ्ट नहीं देखना, राइट नहीं देखना। चलो। Thankfully, Spike will go down and you can see Lockett trying to set up for some lineups. ये तो ऐसा कहेंगे जैसे पता है इनको किधर दिख रहे, किधर बैठे हो लोग। Trying to spam through. Doesn't find anything, so he hops off instead. They will need to hold from hell. Nice try, shot. They're setting up these retakes. पापा as a shock dart main समझ सकते हो आप। Sorry, swarming. Shock dart. Go in a lot. Allow. They're looking all over the place. This dark cover covers them inside though, and he hops through. Estrella gets the shot instead. This classic does everything. 2 players left from outside of 8-8, and RVK is the only one left. They're stepped up, they're body blocking. Come on, RVK. It's down to 14 HP. RVK, you can't land. ए भाई वो गांडू तो छुप गया था। भाई वो छुप गया। मदरचोद। अरे अरे। DPLUSKIA. एस्ट्रिया बोला भाई तू ही संभाल, मैं जा रहा हूँ। Reload. हाँ सर। And they placed the smokes on the perfect positions. You saw that was their own smoke. भाई अच्छा स्मोक तो किया था इन लोग ने। अच्छा ये इन लोग का स्मोक था? No, actually, sorry, it was OG. नहीं OG का स्मोक था ना, हाँ वही। I thought that was actually a really good smoke from DK because it separates them. But the thing is, because OG did it from themselves, they separated themselves from their own teammates. But in any case, the utility usage from DPLUSKIA here was so well timed and बोलने वाला था बस। 4 सप्रेस हो गए OG के। That OG force buy that you talked about from before, Aster. Desperate अभी का रुकना ही पड़ेगा ना अभी। हाँ। रिकॉन आ गया। झुकेगा नहीं पुष्पा। रिकॉन चले गए। राफेल वाला मैं नहीं जा रहा भाई, मैं नहीं जा रहा। It's so oppressive, it's so difficult. They've been smoked off. वो तो डेथ सेंटेंस है, मैं नहीं जा रहा। Ascent is just too आ जाओ तुम wide, लोग आ too जाओ, long. शॉट जाते हैं मेरे That बात। if you can't come in close enough, you might not be able to find favorable duels. उधर से ड्रोन करो, हम शॉट से घुस जाएंगे। DPLUS are aware that the force buy was actually coming. Look at ड्रोन the चालू position करो अभी, वरना इधर ही देखते रहेंगे। Estrella can always back up. Payment पे distract करो। No. एक चीज में तो होमवर्क किया He है actually looked away for a second, and Rafiel doesn't miss a beat. Actually gets the pick, and this could ignite. फास्ट टेम्पो नहीं, मतलब वो हैंडल नहीं कर पाते। As it seems like Orangutan will have to push through the smoke here, through this site, but there's still 2 players of DPLUS holding, angling, and hitting all of the shots. This is not looking too good. At the end of the day, as the dust settles, 2 versus 2 still, not yet done. Spike will get planted, and नहीं सेम चल रहा है, 2v2 चल रहा है। आप ट्विच में देखो। Just saw the beanie. अरे इधर तो HD नहीं है। Look at RVK dodging all of this. He now knows that they are mostly up by heaven. टप्पो तो चल शॉर्टी में घुस जाता ऑलरेडी। Antidote hides inside his own dark cover. They need to work together on this though. अरे यार। One from up top, one from below, and DPLUSKIA work in sync. That was smart too.
no need to really feel the pressure to push into the site because they had all of the time that they needed. And aside from winning the recon dart, they were also burning the duration of that dark cover. So they were just waiting to hopefully expose कपा दुखी हो गया ना? process as well, which it did, which they did, and it worked so well for them. महंगा भी कर दिया, नर्फ भी कर दिया. But the hold 300 कर दिया ना? 200 कर दिया और second shot slow निकलता है. हाँ, second shot slow. Damage कम. Damage कम. ammo कम, reserve ammo. पर अभी भी short ही recommend करूँगा. Reserve ammo कौन वैसे भी उतना shorty का ammo use करता था गोली. मैं करता था ना. क्या करता था? इतना मौका कब मिला तेरे को जीवन में भोसड़ी के मारने का shorty 12 बुलेट? दिया भाई दिया बहुत. उतने तो लोग भी नहीं है हमारे टीम में. ऐसा बारात में लोग ऐसा गोली चलाते हैं ना भाविन. हमारे आवाज कर देने. पूरे टीम के बिहाफ पे मैं ही शॉट ही चला रहा था. फिर भी भोसड़ी के सामने वाले टीम में तो 5 ही रहेंगे. मेरी एक्यूरेसी 100% नहीं है. इससे तो हार गए. There's going to be better weapons now for D+2, so that's going to make it even more difficult. Maybe they can get a catch off, but as I mentioned, D+2 देखो अभी भी एक तरीका है जिससे ओजी क्वालिफाई कर सकता है अगर हार भी गया तो. बॉन्कर्स का हेड टू हेड अगेंस्ट D+ will be better ना? नहीं बॉन्कर्स को उन लोग में अगर एवरीथिंग इज पॉसिबल सुनेगा तो ना पहले ही बॉक्स करने आता है. सॉरी भाविन भाई प्लीज सुनाइए आप. अगर अभी स्कार्स loses both remaining games. नहीं रे. कंप्लीट है. जाने दे रे सब ज्ञान चो दे दे. अरे D+किया और बॉन्कर्स दोनों अगर हार जाते हैं ना ये दोनों टीम से ब्लीड और स्कार्स से ठीक है तो उन लोग सबका 1-2 सबका मतलब 1-3 हो जाएगा अगर ओजी ने बॉन्कर्स को हरा दिया तो. फिर वो तीनों का राउंड डिफरेंस काउंट होएगा. मैप डिफरेंस राउंड डिफरेंस ये लोग का खराब ही रहेगा. नहीं ना अगर इन लोग ने 2-0 हरा दिया बॉन्कर्स को. हां 2-0 हरा दिया. नहीं स्टार के सामने किधर भाई हां स्टार के सामने so there one man two map wins right now. ये बट अगर D+ जीत गए तो उनके पास 2 मैप्स तो इक्वलाइज हो जाएगा. D+ or what? And Antidote actually uses a sliver to peek on through, but XC instantly OG have to beat Bonkers 2-0 basically. हाँ. और उसके बाद भी बहुत डिफिकल्ट था. ये टेसरेक का चिपक रहा है भाई. रॉसी जो शब्द यूज किया मस्त. मैग्नेट लगा है उसने. मैग्नेट हाँ आज मैग्नेट लगा क्या है वो. Just surviving. He's also somewhat thriving. Solo stats at least is looking good for Tesseract, but very sad. It's not really going to be enough, is it? 4-11. At least Orangutan, they have a surplus of creds to be able to buy, but we're just looking at some replays and just making sure that our guesses were correct. And, it was a wall bang. And, जीता क्या round अभी? हाँ DK जीता. Turret kill. Okay, I was like thinking. guess we saw a couple of birds. क्यों रे? पता नहीं. That's the main thing, right? Still, I think ऐसा बात कर ही रहा हो ना ऐसा. भाई कॉफी मशीन है क्या उधर? बना ले कॉफी. And we knew what happened आज down कॉफी में. It's 3 rounds in a row now for D+Kia, and you're talking about coffee crash हो गया. Coffee crash. Orangutan has gone up as well, but if they lose this, चला गया. I don't know how much they can scrounge together to force for that match point play. They need to win and they need to round one मारने जाते कि नहीं उधर किधर. Absolutely. किसके साथ round? Such a precious क्या बात कर रहा? For Orangutan. गोलू के साथ जा सकता है. Well, you know that they feel the pressure here. क्यों? No way! Irizar को बोला ना. RBK turned his अरे back. RBK. Still has a dash. He can deal some damage here, but thankfully Aziz too quick on the trigger. No more volleys here for Estrella, excuse me. Push out on, but XC. Come on, you can't do the one-way smoke against them. अरे इसका भी टकला फोड़ दिया भाई रॉफ्यूल का. And this is getting out of hand. Oh! Orangutan, they got the sight, but there's no real chance for Aziz to actually plant the spike because now if they know about this, if they hear about this, they're gonna start pushing in. Nice. Rockyul, thankfully, he's the man with the plan, the action dude. Oh, Rockyul. Oh, nice. Akram bhai. Rockyul 15 HP, Aziz 61, not even nearing 100, so maybe this Bulldog got his bite. And he's trying to creep up in the right direction. Ay, Akram bhai, nice round, Akram. The magic man, he makes it happen. हाँ दे दिया. Now you see me. 15 HP पे 3 मार. But long way to go, bro. Long way to go. Just
you know, I've given the round to my long. teammates. I don't know where I was going with that, but you know what? लाके शॉटगन लेके बैठा था हाथ में. अरे मेरे को कोई अरे मैं पीसी के मेरे को बैंगलोर से दिल्ली पीसी भेजना है, ठीक है, मतलब सेंड करना है, कौन सा यूज करना है भाई, कुछ डिलीवरी सर्विस जॉब भाई अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स. सच में? हाँ मैं उसी से सेंड करता हूँ. तो पीसी मेरा घर में आके लेके जाएंगे वो लोग. हाँ हाँ. क्या कोरिया की मुंबई? दिल्ली भेजना है मेरे को. ब्लेस का पीसी देना है, निकाल के रख देना. रखा हुआ ऑलरेडी, बट ऐसा ये नहीं मिल रहा. वो डीएचएल ट्राई किया कुछ, तो केवाईसी वो ये बहुत कुछ. अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स बेस्ट है. सच में अग्रवाल पैकेज है क्या? अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स बैंगलोर में सर्विस है सब जगह है. ठीक है, मैं उसी से भेजता हूँ. थोड़ा कॉस्टली रहता है बट सेफ. हाँ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स. चलो भाई trying to make some heat here as he does get that assistance on the hunter spear. इसके बाद वो सॉर्ट करना है. ओह लाकिया अरे अरे चला दिया उसने. Runs through. No real need to fear the hunter. मैं टेस्ट निकालता है ये राउंड. अग्रवाल फुल फेमस है क्या गाइस? चलो निकाल दिया TDCQ नहीं दिया बहुत डॉक्यूमेंट्स है दिखा दिया. कोरिया में होना. Hey, thank you for the 200 Dakshraj. Waiting for the day when an Indian team wins straight and don't need to use this silly permutation. बात तो this is devastating. I mean, you have the Odin, and yes, it's a little bit hilarious, but the way that he actually dominates because of this one position. Orangutan, they tried to pull off a bit of a beast split. They tried to surprise DPLUSKIA, but they got completely read. They got completely countered. Straight into the open arms of DPLUSKIA, and this weapon is still in the game. You've got 4 ultimates against you. It is now or never. Now or never indeed. Raw Fuel does have the blades already. Does use the updraft for a little bit of contact, maybe hoping that he can find an opponent here. Allow, on the other hand, also anticipating attack बहुत weird नहीं खेलते. The tailwind already. Yeah, they don't do the stuff that. They don't do the stuff that is. लोग स्टार्ट से स्प्लिट करते हैं. ओ भाई. Does the same thing, and the push comes together. Esperanza they don't do the stuff like shot, mid control, shot that, shot pressure. दोनों सो ट्रेड होंगे. Back to the side, and this is working for They don't do the ये वाला चीज़ जो loud वाला flash है ना, ये shot का. They don't use that either. They do very different stuff, which is I think a reason. Big factor. Not different. It's just less efficient. मतलब. It just doesn't make sense. It just doesn't make sense. तो भाविन भाई ने बोला ना, they do the step 1 with step 4 already in mind कि हमको यही करना है. हाँ. To create a little bit of an opening. He peeks out through. He I gets feel the shot OG onto individual तो Estrella. बहुत खेला है. Oh no! वो तो भाई है ही. वो तो He was undetected. और जितना भी maps निकल रहे हैं उसकी वजह से ही निकल रहे And हैं. it's all up to Rondo. Very sad. Allow. Cuts his head off tactical with the depth नहीं है भाई. It is 13 Very sad. to 5 for DPLUSKIA. Orangutan, unfortunately, has suffered और कोहली the कैसा third रहा? loss. ये Man, from that second game, it looks like अच्छा चल रहा है. Orangutan was पूरा journey कैसा रहा? It seems Good night, guys. tangled. Thank you guys for tuning in. Hit the like, subscribe. देर सारा प्यार. Bye bye. मिलते हैं कल या परसों. See ya.